वेस्टइंडीज बनाम भारत पहला T20 मैच। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। रोवमैन पॉवेल ने कहा, हम बल्लेबाजी करेंगे। सूखी सतह जैसा दिखता है। भारत कई स्पिनरों के साथ खेल रहा है। देखते हैं कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। लोग आश्वस्त हैं। ये रणनीति में पूर्ण परिवर्तन नहीं है। हम अभी भी बाउंड्री हिटर हैं। हम कड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी शक्तियों के साथ चले हैं। हार्दिक पांड्या ने कहा कि इस दौरे का भी यही पूरा प्लान था। हम शायद विश्व कप खेलने के लिए यहां आ रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों को यहां खेलने का मौका मिल सकता है। अगली बार जब हम यहां आएंगे, तब तक हम तैयार हो जाएंगे। मैं चीजों को सरल रखने की कोशिश करता हूं। मेरे लिए ये सुधार के बारे में है। मैं प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता हूं। आपको कुछ नुकसान और असफलताएं हो सकती हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब खुद को चुनौती देने के बारे में है। उमरान बिश्नोई चूके, हम 3 स्पिनर खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज बनाम भारत पहला T20 मैच। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। रोवमैन पॉवेल ने कहा, हम बल्लेबाजी करेंगे। सूखी सतह जैसा दिखता है। भारत कई स्पिनरों के साथ खेल रहा है। देखते हैं कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। लोग आश्वस्त हैं। ये रणनीति में पूर्ण परिवर्तन नहीं है। हम अभी भी बाउंड्री हिटर हैं। हम कड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी शक्तियों के साथ चले हैं। हार्दिक पांड्या ने कहा कि इस दौरे का भी यही पूरा प्लान था। हम शायद विश्व कप खेलने के लिए यहां आ रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों को यहां खेलने का मौका मिल सकता है। अगली बार जब हम यहां आएंगे, तब तक हम तैयार हो जाएंगे। मैं चीजों को सरल रखने की कोशिश करता हूं। मेरे लिए ये सुधार के बारे में है। मैं प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता हूं। आपको कुछ नुकसान और असफलताएं हो सकती हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब खुद को चुनौती देने के बारे में है। उमरान बिश्नोई चूके, हम 3 स्पिनर खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज बनाम भारत पहला T20 मैच। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। रोवमैन पॉवेल ने कहा, हम बल्लेबाजी करेंगे। सूखी सतह जैसा दिखता है। भारत कई स्पिनरों के साथ खेल रहा है। देखते हैं कि हम उनका सामना कैसे करते हैं। लोग आश्वस्त हैं। ये रणनीति में पूर्ण परिवर्तन नहीं है। हम अभी भी बाउंड्री हिटर हैं। हम कड़ी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं। हम अपनी शक्तियों के साथ चले हैं। हार्दिक पांड्या ने कहा कि इस दौरे का भी यही पूरा प्लान था। हम शायद विश्व कप खेलने के लिए यहां आ रहे हैं। कुछ खिलाड़ियों को यहां खेलने का मौका मिल सकता है। अगली बार जब हम यहां आएंगे, तब तक हम तैयार हो जाएंगे। मैं चीजों को सरल रखने की कोशिश करता हूं। मेरे लिए ये सुधार के बारे में है। मैं प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता हूं। आपको कुछ नुकसान और असफलताएं हो सकती हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सब खुद को चुनौती देने के बारे में है। उमरान बिश्नोई चूके, हम 3 स्पिनर खेल रहे हैं। वेस्टइंडीज बनाम भारत पहला
Down the track goes Brandon King and lofts him over the fielder at mid-on down to the boundary for four. Very well constructed and controlled shot there by Brandon King. Not the quickest, as I said. Coming straight into the bat. Down the track goes King and lofts it. The lofted on drive down to the long on boundary for 4 runs. So really the Windies beginning to show their colours. 11 then without loss in the second over, and Mukesh Kumar getting a taste of what it means to play international T20 cricket. मुकेश ओवर की तीसरी गेंद के साथ राइट हम ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. फिर गुड लाइन डिलीवरी थी, इस बार ऑफ साइड में खेल दिया. 30 यार्ड के घेरे को भेद के गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन के पार. किंग के लिए लगातार चौके, सिर्फ चौकों में बात कर रहे हैं इस समय. 15 के निजी स्कोर पे पहुंच चुके हैं. 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. मुकेश जो कि T20 में अपना डेब्यू करते हुए नजर आ रहे हैं. 2 बैक टू बैक चौके खाना उनके लिए इतने आसान दृश्य ये रहे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनको ये T20 फॉर्मेट को समझना पड़ेगा. हम मानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट से शुरुआत की इस सीरीज में, उसके बाद वनडे में अच्छा कंट्रोल दिखाया, लेकिन T20 फॉर्मेट जो सबसे बड़ी ताकत है वेस्ट इंडीज की, उनके सामने पार पाना इतना आसान रहता नहीं है. Yes, well, the batsmen take many more risks, of course, as they step out the ball, and that's exactly what King did and lofted him over extra cover for 4. So 2 very good shots there from King, and this one tries to play the ball down to third man, tries to guide it down to third man, misses it completely. No slip in place now, and the ball goes through to Ishan Kishan. So Mukesh Kumar now contemplative as he walks to the top of his bowling run, and as Manoj Kumar tells us, lucky Thursday for Mukesh Kumar. His test debut on the 20th of July was a Thursday. His ODI debut on the 27th of July was a Thursday, and the T20 debut on the 3rd of August was also a Thursday. So as he has done quite well. Thank you, Manoj. Interesting stat there. As here goes Mukesh. None for 8 in his 4 deliveries so far. Bowling to King. King slightly open stance, and this one is guided into the offside just to the right of extra cover. He comes in and they go through for a quick single, and that's also the other name of the game. If you're not getting boundaries, you have to pick up those quick singles. So the tip and run, as we've seen Australia do so well in the Test series. What do you think of the Ashes? We'll come to that in a moment, because we're still playing the first T20 between India and the West Indies at the Brian Lara Stadium in Trinidad. रोमन पॉवेल को हमने ये कहते भी सुना है टॉस के साइन. उन्होंने ये कहा था कि आज हमारी टीम की जो रणनीति है उसमें एक और जो सबसे बड़ा फैक्टर रहने वाला है वो है रनिंग बिटवीन द विकेट, क्योंकि चौके छक्के लगाने के लिए खिलाड़ी जाने जाते हैं. Yes, running between the wickets, one of the key elements of any cricket game. This one right pitched up right on the leg stump and tries to play it way into the onside, but gets a thick inside edge. The ball trickles way back to Mukesh Kumar. End of the second over. Off to a bright start are the West Indies, 16 without loss. खालमा अभी भी अपने खाते खुलने का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि सिर्फ 2 गेंदों का सामना किया, लेकिन रन उनके बल्ले से अभी तक आए नहीं है. तो दूसरी तरफ ब्रेंडन किंग 9 गेंदों में 16 रन बनाए, जिसमें 3 चौके भी उन्होंने जड़े हैं. और युवा खिलाड़ियों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आज 2 डेब्यूटेंट्स के बारे में हमने कहा है, 2 ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अपना डेब्यू किया है. एक तिलक वर्मा जो बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे. मुकेश कुमार का पहला ओवर अभी हमने देखा है. तो दोनों ही, तिलक वर्मा 103 नंबर के वो खिलाड़ी है जिन्होंने T20 भारत की तरफ से खेला है. तो वहीं 104 नंबर के खिलाड़ी बनते हुए मुकेश कुमार नजर आएंगे, जो कि हमारे स्टैटिस्टिशियन मनोज कुमार ने बताया है. और ये आंकड़े, खूबसूरती इन आंकड़ों की यही तो रहती है ना सुनील, कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं अलग अलग खिलाड़ी हम देखते जाते हैं और फिर वो बदलते आंकड़े सब कुछ बयां करते हैं. तीसरा ओवर अर्शदीप एक बार फिर ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे. गुडलैंड डिलीवरी थी, कवर्स की दिशा में उसे खेला था. पॉइंट और कवर के बीच में एक अच्छी फील्ड सेट के साथ में भारतीय टीम ने फिलहाल वो 30 यार्ड के घेरे को विशेषकर ऑफ साइड में पैक करके रखा है किंग के लिए, क्योंकि उनके पसंदीदा शॉट या तो वो डाउन द ग्राउंड जाते हैं या फिर अपने बल्ले को खोल के ऑफ साइड में प्लेस करने की कोशिश करते हैं. ये फिर वो गेंद चौथे 5वें स्टंप के आसपास की गई थी, बाहर का कोण ले रही थी, लेकिन रन कोई मिलेगा नहीं. शांत रखना किंग को आसान चुनौती किसी भी गेंदबाज के लिए रहती नहीं है, क्योंकि शुरुआत में वेस्ट इंडीज ऐसी पावरफुल हिटिंग के लिए जानी जाती है. दूसरी गेंद पटकी हुई गेंद थी, फाइन लेग की दिशा में उसे पुल कर दिया और मिलेगा चौका. किंग को लगातार वो चौकों का सपोर्ट मिल रहा है, उसी के चलते वेस्ट इंडीज का जो स्कोर कार्ड है वो उस रफ्तार से बढ़ रहा है जो शायद उनकी टीम चाहती होगी. किंग पहुंच चुके हैं 20 पे, महज 11 गेंदों का सामना किया सुनील. Yes, and that was a slow delivery, a slow bouncer that he tried to do, and this one was played away, nicely pulled down to deep fine leg for 4 runs. So Arshdeep Singh leaking runs, as we said that he might, because his economy rate is 8.
but I think he's a much better bowler at the end of the innings, at the death, as they say. None for 11 in 1.2 overs as the Windies have cantered on to 20 without loss. And here goes Arshdeep, and this one brings the ball back in slightly from outside the off stump, plays it way down to point, and tries to pick up a single, does King, but sent back by Myers, who's still mired on naught after 3 deliveries. But of course, the bulk of the scoring and deliveries have been by Brandon King, who's actually played a very good hand so far. 20 of the runs that have been scored by the Windies have been scored by Brandon King. So, and remember that they have a very long batting lineup. They've got Shimron Hetmyer, they've got Nicholas Puran. Here goes Arshdeep, left arm over, comes in and brings the ball back into King, and King scuttles through for a single as he plays it quietly down to mid-on, seeing that there's an opportunity before Sanju Samson can run in from a slightly deeper position and picks up that single. As you said, that they were talking about at the start of the innings. That's what Paul was saying. They're going to concentrate on the running between the wickets as well as a key element. So here is now Myers still seeking his first run. 2 और गेंदें इस ओवर में शेष है. अपने कोण में परिवर्तन करना चाहेंगे या नहीं, ये तब पता चलेगा जब अर्शदीप अपने रनअप पे अग्रसर होंगे. नहीं, अभी भी ओवर द विकेट गेंदबाजी करना चाहेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज मेयर है. हो सकता था कि कोण में परिवर्तन किया जा सके, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद, तीसरे ओवर की 5वीं गेंद एम्पायर को क्रॉस किया, फिर पटकी हुई गेंद डाली और इस बार एक अच्छे उछाल के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी. एक और डॉट डिलीवरी और फर्स्ट अप का, यानी कि पहले बाउंस का इशारा आ चुका है एम्पायर की तरफ से. अर्शदीप के इस ओवर में दूसरी गेंद पे जब चौका पड़ा, उसके बाद उन्होंने शांत रखने की कोशिश में काफी हद तक सफलता हासिल की है. ग्रेगरी ब्रैथवेट जो कि इस मुकाबले की एम्पायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ लेग एम्पायर फिलहाल जो खड़े हैं वो है पैट्रिक गस्टर्ड. वेस्ट इंडीज के लिए अपने 17वें T20 मुकाबले में एम्पायरिंग करते हुए नजर आएंगे. लेकिन क्या माहौल रहता है वहाँ. स्पेक्टेटर्स जो दर्शक मुकाबला देखने के लिए आते हैं, रंग बिरंगे कलर के वो कपड़े पहनकर. ओवर की आखिरी 6ठी गेंद स्लोवर डिलीवरी थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बल्ले पे सही से मिडल नहीं की और आसानी से विकेट कीपर के दस्तानों में एक टप्पे के साथ गई. इसी के साथ ओवर की समाप्ति, और 3 की समाप्ति के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर 21 बिना किसी नुकसान पे. Yes, funny scoring pattern, Ayush. 21 of 13 deliveries, Brandon King. None of 5 deliveries, Kyle Myers. And he's known for his explosive batting as well. We've seen 3 overs from the Indian seamers. Arshdeep Singh making a return into the Indian team. He hasn't played either the Tests or the ODIs. And, of course, Mukesh Kumar making his debut in the T20 format for India. Debut in this entire series, in this entire tour, both Test matches and ODIs before this and now T20s. And he must be thinking that he's in some sort of heaven, that he's finally reached the top level. As you know, there's such competition for spots in the Indian team. There are so many players. I keep saying that India has more cricket players than the whole population of New Zealand. And yet we don't win any ICC tournament. और आपने जैसा कहा कि भारत के पास कई सारे क्रिकेटर्स हैं, तो उनमें से एक और की बारी आ चुकी है गेंदबाजी करने की. अक्षर पटेल स्पिनर को लाया गया है. 3 गेंदबाजों के साथ, 3 स्पिनर्स के साथ भारतीय टीम आज दाव पेश करने की कोशिश करेगी. अक्षर पटेल उनमें से पहले जो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे. आंकड़े इनके 37 विकेट है, यदि मैं गलत नहीं हूं, जो कि हमारे स्टैटिस्टिशियन ने हमें बताया, मनोज कुमार ने, T20 क्रिकेट के अंदर. और एक अच्छी लाइन लेंथ को पकड़ने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं. सुनील, हमने जब भी देखा है कि इनसे चाहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट में गेंदबाजी कराई हो, चाहे भारत के लिए एक अच्छा टप्पा, सटीक टप्पा पकड़ के रखते हैं. लेफ्ट आर्म ओवर की पहली गेंद, टप्पा खाने के बाद हल्का सा स्पिन मिला जरूर था, अंदर की तरफ आई, लेकिन एक अच्छा सिंगल किंग के लिए. और पहली गेंद के ऊपर सिंगल के साथ में ये ऐसा चौथे ओवर में पहली बार होने वाला है कि मेयर जब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे तो आखिरी की 2 गेंदें नहीं रहेगी. वो शुरुआती क्षणों में उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिलेगा. अक्षर सामने है. Yes, that's right. He brings the ball back into the right-handed batsman rather than making it spin away. That's his stock delivery, really. But now he's bowling to the left-handed Kyle Myers, who's on note of 5 deliveries, and he's going to change his line of attack. It's left arm over the wicket to Myers. Comes in bowls, no slip in place, and this one just going straight through with the arm and is punted away up to long on for a single. Picks up his first run, does Kyle Myers. Every time you pick up your first run in any innings, whether it's school or it's college or wherever it is, you feel much better, don't you? बिल्कुल, आपके ऊपर से वो दबाव कम हो जाता है. 2 गेंदें अभी तक हुई है किंग बल्लेबाजी के ऊपर, और फिर तीसरी गेंद थोड़ा सा फुल जरूर रखा, टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर आई है. प्लेट करने की कोशिश थी, इतने ज्यादा आसान था नहीं वो गेंद को रोक पाना, वो खेल पाना, या कहिए कि उस स्पिन को समझ पाना जो कि अक्षर पटेल ने जनरेट की थी. ओवर की चौथी गेंद,
किंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, इनसाइड आउट शॉट खेला है, हवा में गेंद लहराती हुई नजर आ रही है और इस समय सीधे जो दृश्य हम देख पा रहे हैं वो ये है कि गेंद बाउंड्री रोप्स को बिना टप्पे के पार करेगी। तो पहला छक्का वेस्ट इंडीज की इनिंग का किंग के बल्ले से, वो पहुंच चुके हैं अब 28 पे, 16 गेंदों का सामना किया है। अक्षर पटेल के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश अब की जाएगी इस बल्लेबाज के द्वारा। पिछली 2 गेंदों में अक्षर पटेल ने इनको पूरी तरीके से छकाया, तो इस बार इनसाइड आउट खेल के उन्होंने वो बदला सा ले लिया है, हिसाब बराबर सा कर दिया है। Yes, gets predictable, doesn't he? And he was actually waiting for this one. He made to spin away from the right-handed batsman. Otherwise, he was bringing the ball in. That's why he stepped outside the leg stump, gave himself room in the previous delivery, and lofted it over extra cover. Lovely shot inside out, as you said. This one actually was pitched on the stumps and then spinning slightly away. And he had to be slightly careful. This one coming in very quickly with the arm and hitting him on his pads, but outside the line of the leg stump as he tried to turn it away. So the first 6 of the game, exactly right, Ayush, hit by Brandon King, who's 28 of 17 deliveries, and Kyle Myers is just 1 of 7. 1 of 6 deliveries, that's right. And the Windies now are 29 without loss after 4. लेकिन एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण रही है वेस्ट इंडीज के लिहाज से वो ये है कि हर ओवर में उन्हें बाउंड्री मिली है, चाहे चौका मिला हो या छक्का मिला हो। तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए ये रहता है T20 फॉर्म में विशेषकर कि जितने ज़्यादा रन आपके बल्ले से वो बाउंड्रीज के तौर पे आए वो ज़्यादा बेहतर। लेकिन अब दारोमदार काइल मायर्स के ऊपर भी रहने वाला है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तजुर्बेदार खिलाड़ी है, 6 गेंदों का सामना किया, फिलहाल उनके बल्ले से सिर्फ 1 रन और एक स्पिनर के बाद दूसरा, 1 बिंग्स ट्रू जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं। युजवेंद्र चहल गेंदबाजी करने के लिए आए, 76 मैचेस उन्होंने खेले हैं, 91 विकेट उनके नाम, औसत इनका लमसम 25 का और इकोनॉमी 8 से थोड़ी से ऊपर। लेकिन जिन बल्लेबाजों को इन्होंने आउट किया है उस लिस्ट में बहुत बड़े बड़े नाम हैं सुनील। Yes, the Kulcha partnership now coming back into the Indian Test, the Indian ODI side. They haven't been playing together for a very, very long time. Very interesting stat coming up. Here goes Chahal for his first delivery of and this one is hitting him straight in front, Kyle Myers, and he's being given out, absolutely hitting the middle stump, I would say there, Ayush, as the ball did not turn either way, and Kyle Myers went for the slog sweep, but the ball was dead straight. I don't think he's going to review, as he's in fact been advised by Brandon King that ball was going to go straight through. What a dream comeback into the team there by Yuzvendra Chahal. As we know, to my mind, certainly both the left-arm Chinaman spinner as well as the right-hand orthodox leg spinner bring a dimension to the game that very few teams have. So, India strike then, Kyle Myers, LBW Chahal, very first delivery on his return to the Indian team, and the Windies are now 29 for 1. पहला झटका मायर के रूप में लगा है, लेकिन अच्छी चीज वेस्ट इंडीज के लिहाज से ये है कि जो खिलाड़ी उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं वो अभी भी क्रीज के ऊपर मौजूद है। ब्रैंडन किंग 28 रन उन्होंने बनाए। नए बल्लेबाज जो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, जॉनसन चार्ल्स तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन क्या गेंद थी वो, युजवेंद्र चहल मुकाबले में खुद की पहली गेंद और उसी गेंद के ऊपर विकेट चटक लेना, वो भी LBW के तौर पे। और इसीलिए शायद ये भी कहा जा सकता है सुनील, और ये माना भी जा सकता है कि मोमेंटम का खेल है, निरंतरता का खेल है। यदि आप ज्यादा गेंदें एक मुकाबले में फेस नहीं करते तो कई बार, अंग्रेजी का वो शब्द है आउट ऑफ द टच, उसी तरीके से मुश्किल होती है हर अगली गेंद का सामना करना। Yes, I think there's a little pressure when you're 1 of 6 deliveries and you want to actually up the scoring rate. But he was expecting the ball to turn, because at the end of the day, he's a leg spinner. The ball was expected to turn into him. The left-handed batsman, Kyle Myers, who was bowling over the wicket. The ball went straight through and hit him in front of the off stump. So the first wicket then for Chahal, first wicket for India, Kyle Myers out LBW. And after T. Natarajan in the 2021 season in Australia, where he made his debut in all 3 formats, and then after that didn't play too much cricket for India, unfortunately, Mukesh Kumar is the second Indian to make his debut in all 3 formats on an international tour. Thank you very much. I hope, certainly he'll be hoping that he plays more than Natarajan, but Natarajan really did play excellently well in Australia, and that ball actually was missing the stumps. I think we were both lyrical about the wrong thing, because it was googly actually to the left-handed batsman and hit him perhaps in line, but the ball was spinning away. Did not review, which is this one hitting him right in front. Over there is Brandon King, and this one, once again, this one looked much closer to me, didn't it, Ayush? Hitting him in front once again, the googly, not the leg spinner.
डीआरएस का जो समय है आधारित समय 15 सेकंड का रहता है, जिसमें से 12-13 तो निकल चुके हैं। किंग, क्या वो डीआरएस लेना चाहेंगे? अभी तक कोई ऐसा दृश्य नजर यहां से नहीं आ रहा हमें जिससे ऐसा लगे कि वो लेना चाह रहे हैं। नहीं, चलिए, गलत साबित किया है और अब मांग कर ली है वेस्टइंडीज की टीम ने, किंग ने, उस डीआरएस के लिए, क्योंकि पिछला निर्णय जो शायद मिडिल स्टंप पे गेंद जाके लगे ऐसा हमें लग रहा था, लेकिन वो गेंद टप्पा खाने के बाद विकेट को मिस कर रही थी। युजवेंद्र चहल की वो गेंद, गूगली गेंद उन्होंने करी, हवा में कुछ समय तक लहराई, बार बार रिव्यू से मुआयना करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड एम्पायर। पैड पे जाके गेंद लगी है, बैट का कोई किनारा मुझे यहां से नजर नहीं आ रहा सुनील। Yes, in fact, again, he was playing for the turn when there was no turn at all. And I think you're absolutely right, because he must have seen the replays of the earlier one, said, oh, that was missing, he should have reviewed. Now he's reviewed to something I believe is going to be hitting the stumps dead on. In fact, it was the top spinner, not the googly, really, because it just went straight through. Where he was playing for the turn was Brandon King, and 2 quick wickets then, to my mind, certainly for Chahal, both LBW, but still remains to be seen what DRS shows. Remember, even if it's clipping the stumps, because it's been given out, he will remain out. पिच तो लाइन में करिए गेंद, इम्पैक्ट भी लाइन में नजर आ रहा है और विकेट हिटिंग है। इसका मतलब यह है कि भारत को अपनी दूसरी सफलता मिल चुकी है। किंग की पारी यहां समाप्त होगी, समाप्त होगा उनका ये डीआरएस भी। डिसीजन जो अंपायर ने लिया था वो बचा रहेगा, वो बरकरार रहेगा, उसी के ऊपर वो निर्णय सुनाएंगे। 4 चौके लगाने के बाद, 1 छक्का लगाने के बाद 19 गेंदों का सामना करके 28 के निजी स्कोर पे ब्रैंडन किंग की ये आतिशी, ये तूफानदार पारी समाप्त हुई। Yes, well, there you are. That's what a spinner does. And I heard at the toss and before that as well, a pitch report that it was a very dry pitch. India playing 3 spinners, Akshar Patel, Kuldeep Yadav and Yuzvendra Chahal, and Chahal striking twice. As they say, lightning never strikes twice, but Chahal did strike twice, and both LBWs, one lucky, which should have been reviewed, the second not lucky, and should not have been reviewed, but I guess that is poetic justice. And now the Windies subsiding very quickly to 30 for the loss of 2 wickets in the middle of the 5th over. पिछला विकेट जब वेस्टइंडीज की टीम का गिरा था तो उनका स्कोर 29 था, सिर्फ 1 रन बनाया और एक और विकेट उसके बाद में खो देना अच्छे संकेत ये है नहीं। लेकिन T20 फॉर्मेट की यही कहानी रहती है, कब तख्ता पलट हो जाए किसी को पता नहीं चलता। और तारीफ करनी पड़ेगी युजवेंद्र चहल की, जिस तरीके से उन्होंने विकेट को रीड किया है और शुरुआत में आते ही दबाव बनाने की कोशिश अपने विरोधी टीम वेस्टइंडीज पे कर दी। निकोलस पुरन एक और आतिशी बल्लेबाज, एक और धुआंधार बल्लेबाज, कद काठी के बहुत ज्यादा लंबे चौड़े हैं नहीं, लेकिन फिर भी जब बल्ले से गेंद को स्ट्राइक करते हैं उनमें क्षमताएं हैं कि गेंद को बहुत आगे पहुंचाए। ओवर की तीसरी गेंद, 5वें ओवर की तीसरी गेंद आते ही उठा के खेला है पुरन ने, और इस बार उन्हें ऑफ साइड में, क्योंकि लॉन्ग ऑफ पे कोई फील्डर नहीं है, 30 यार्ड का घेरा पार करते ही वो चौका मिलेगा। बाउंड्री के साथ शुरुआत की है पुरन ने उस गेंदबाज के सामने जिन्होंने ओवर की शुरुआत की थी विकेट के साथ। Yes, once again, this ball not really turning, just going straight through. And this time, Puran just able to loft it over the man, or just to the right, left of the man at mid-off, straight down to the boundary for 4. So he's fighting fire with fire. Still Chahal, 2 wickets in this over already. And Puran getting off the mark with that lofted off drive for 4. 34 for 2 then are the Windies in the middle of the 6th over. The next ball is played away quietly into the covers, if not for any runs. At the end, I beg your pardon, 5th over, not 6th over, 5th over. And at the end of the 5th over, then the Windies are 34 for the loss of 2 wickets. एक गेंद अभी आनी है। युजवेंद्र चहल ने 2 विकेट इस ओवर में इस ओवर में लिए। ओवर की आखिरी गेंद इस बार फिर उठा के खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में, कोई फील्डर वहां मौजूद रहेगा नहीं और आवश्यकता पड़ती भी नहीं है पुरन को। एक और छक्का, पिछली बार चौका था, इस बार वो छक्का है। और जिन दर्शकों की हम बात लगातार किए जा रहे हैं कमेंट्री बॉक्स से, वो यही दृश्य हमें दर्शाते हैं कि जिस तरीके का माहौल रहता है वेस्टइंडीज में, क्रिकेट को जैसे एंजॉय किया जाता है, जैसे लुफ्त उठाया जाता है, वो दृश्य देखते ही बनते हैं। ओवर की समाप्ति, 5 की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 40, 2 विकेट के नुकसान पे। युजवेंद्र चहल जिन्होंने शुरुआत बहुत अच्छी की थी, 2 विकेट इस ओवर में लिए थे, आखिरी की 3 गेंदें उनके लिहाज से उतनी अच्छी नहीं गई है जिनकी उन्हें उम्मीद होगी। Well, I think, of course, I forgot that there was another delivery to come because we got 2 different screens here that show 2 different scenes. But nevertheless, there was a lovely 6. It was a slog sweep over deep at wicket for 6 by Nicholas Puran. Because he has played him so much in the IPL, I think that's one of the reasons why that he's able to read
Yashasvi Jaiswal much better than perhaps Brandon King or Cal Myers, who haven't paid him so much, and was able to get rid of both the openers was Jaiswal. But then reality check with that lofted off drive for 4 and then that slog sweep for 6 over deep mid wicket, which means that Puran is on 10 in just 3 deliveries, and Johnson Charles at the other end, the right-hander, is on 1. The next ball is by Akshar Patel, who's played away towards extra cover, driven to extra cover, but straight to extra cover, and there is no run. 40 for the loss of 2 wickets at the top of the 6th over. As here goes Akshar Patel in his 2nd over. Comes in and bowls, and once again gets the ball to come back in to the right-hand batsman, who tucks it away towards square leg, and they scramble through for a single. And the Windies move on then after that to 41 for the loss of 2 wickets. Akshar Patel in his 2nd over was introduced early on during the power play, as indeed was Yashasvi Jaiswal. But as we know, the power play can be both dangerous as well as advantageous for the batting side, because if you're suddenly playing slower bowlers when you're expecting the quicker ones to come up, you completely have to change your mindset, and that's what perhaps the openers were not able to do, and were both out LBW. ओवर की तीसरी गेंद, इस बार फिर घुटने टेक के वो स्वीप शॉट जिसके लिए जाने जाते हैं पुरन, उसी तरीके का वो शॉट खेला था, लेकिन इस बार फील्डर युजवेंद्र चहल दौड़ पूरी लगा पाएंगे। तब तक 2 रन आसानी से कंप्लीट किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। पुरन इस बार फिर स्ट्राइक के ऊपर आ चुके हैं। अपनी चौथी गेंद के ऊपर उन्होंने जो शॉट निकाला था उससे उनको सिर्फ 2 रन मिले हैं। 12 के इंडिविजुअल स्कोर पे पहुंच चुके हैं और कोण में परिवर्तन किया है अक्षर पटेल ने। राइट हैंड लेफ्ट हैंड कोऑर्डिनेशन के बीच में आपको कई सारे चेंजेस, कई सारे बदलाव करने पड़ते हैं, वही करते हुए अक्षर भी हमें नजर आए, क्योंकि ये पावर प्ले का आखिरी ओवर है। इसके अंदर ऐसी बल्लेबाजी की जाएगी। अगली गेंद, चौथी गेंद मिड विकेट के ऊपर से उठा के खेल दिया। एक और छक्का पुरन के बल्ले से। आतिशी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी गाड़ी शुरुआती क्षणों में ही ऑटोमेटिक मोड में डाल के आए और वहां से रिवर्स गियर उनको देखने को नहीं मिलेगा। Well, that really was a drag down. It was a long hop, and Puran said, well, 92 meters is what I'll take. That's where the 6 went over deep mid wicket. And Akshar Patel now really having to, I think a little bit more about his bowling, because that was really a long hop. 17 runs already in 10 deliveries he's leaked, has Akshar Patel, and he has to really get back into his line and length that we were commending him about. That was what he's known for, this time changing his line of attack and going down the left arm around the wicket to Nicholas Puran, who says, listen, it doesn't matter which way you come, whether you come over the wicket or around the wicket, I'm still going to talk you over mid-wicket, and picks up another boundary. That was a boundary, I think, was it? Yes, that's right, another boundary. So we've seen a 6 and we've seen a 4 in the same general area by Nicholas Puran. अब वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज इतने ज्यादा ऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेलते भी नहीं है। कहीं ना कहीं वो पुल को भी बीच में रखते हैं, वो स्लॉग स्वीप भी लगाते हैं, वो भी इतनी ज्यादा ऑर्थोडॉक्स रहती नहीं है। ओवर की आखिरी गेंद इस बार पैड्स के ऊपर पटका था और वहां पर फील्डर जो मौजूद थे युजवेंद्र चहल, उनसे थोड़ा सा फंबल हुआ, उसी के चलते एक और आसान सा सिंगल चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। पुरन के खाते में 23। ओवर की समाप्ति, 6 की समाप्ति के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर 54, 2 विकेट के नुकसान पे। Well, as they say, T20 cricket is exciting cricket. Yes, we've seen wickets, we've seen runs, we've seen sixes, we've seen all sorts of things happening, and that's what the spectators come for, because I think that you'll know there are more spectators for this game than there have been for the earlier ones, because the test matches, of course, these days don't draw too many crowds unless you're watching the Ashes in England, where there's packed stadiums everywhere, as the run rate then, thank you, is 9 per over in the first power play, or the only power play of the T20. So 9 per over, good start there for the Windies, even though they lost 2 wickets. But remember, it's only 120 deliveries, just 20 overs to be played. So I think the Windies will take that. So will India, because to get rid of 2 top batsmen, always good in the power play. Perhaps the economy rate could have been slightly lower, but then Akshar Patel also, I think, coming and playing for the first time in this particular tour. और गेंदबाजी में परिवर्तन, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के कप्तान अब खुद गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। हमने कुछ ओवर स्पिनर्स के साथ भी देखे। शुरुआती 3 ओवर मीडियम पेसर्स ने किए थे, उसके बाद के 3 ओवर स्पिनर्स ने, अब वापस मीडियम पेस अटैक में। लेकिन गेंद का सामना करने वाले पुरन ने अपने रनअप लेते हुए हार्दिक पांड्या को कहा, जाइए जनाब, दूसरी बार दोबारा गेंदबाजी करने के लिए आइए, क्योंकि सामने शायद स्क्रीन पे कुछ उनको परेशानी हुई है। और उसी के चलते उन्होंने गेंदबाज हार्दिक पांड्या को दोबारा जाके गेंद करने को कहा है। वेस्ट इंडीज जो फिलहाल टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लेकर बल्लेबाजी करने के लिए आई है, 2 विकेट गंवा चुकी है। उनका हाली स्कोर 54 रन है। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7वें ओवर की पहली गेंद, हार्दिक पांड्या दाएं हाथ ओवर द विकेट,
गुडलैंड डिलीवरी थी, थर्ड मैन की तरफ हल्के हाथों से धकेला था जहां अर्शदीप मौजूद थे, कोई भी रन नहीं मिलेगा। डॉट बॉल के साथ में हार्दिक पांड्या ने शुरुआत की है। गेंद की रफ्तार 122 किलोमीटर की थी, बहुत ज्यादा तेज तर्रार रफ्तार से गेंदबाजी कर नहीं रहे। हमने हार्दिक पांड्या को देखा है जब से वो चोटिल हुए हैं, उनकी पीठ में वो चोट आई है, गेंदबाजी भी उन्होंने बहुत लेट शुरू की और गेंदबाजी करते हुए विशेषकर वो ध्यान रखते हैं लाइन और लेंथ का, रफ्तार को कम कर दिया गया है। हालांकि ओवर की सिर्फ पहली गेंद हुई है, बहुत ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। किस तरह के फॉर्म में अब वो गेंदबाजी करते नजर आएंगे, वनडे में हमने उन्हें देखा है। एक और गुडलैंड डिलीवरी थी, थोड़ी सी जो टप्पा खाने के बाद में गेंद का उछाल था वो जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है अनप्रेडिक्टेबल था और विकेट कीपर के दस्तानों में थोड़ी सी लो गेंद उन्होंने पकड़ी थी। वेस्ट इंडीज पावर प्ले 54 रन बनाए, 2 विकेट उन्होंने गंवाए, स्क्वायर लेग की तरफ शॉट्स खेले थे, मिड विकेट तरफ शॉट खेले, इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए हमने देखा है। तो वो जो वैगन व्हील क्रिकेट का है वो वेस्ट इंडीज की टीम का T20 फॉर्मेट में विशेषकर सुनील बहुत अच्छा माना जाता है। हर तरफ मैदान के कोनों पे वो रन लगाते हैं, उस मैदान के कोने पे जो गोल है। Yes, that's right. Absolutely. That's what the Windies are known for, as we've said in the T20 format. I was interested in Hardik Patel actually bringing himself on at the end of the power play because he saw that actually Nicholas Purden was very comfortable against the spinners. And he said, okay, now let me try change of pace. That's actually very good captaincy from Hardik Pandya. And he's been bowling slow, absolutely right. But I think somewhere on this pitch, the slower you bowl, even if you're a seaman, you can get the ball to wobble just a bit. We haven't seen the scramble seam, but I'm sure we'll see that a little bit. That's when you get the uncertain bounce, and that's when the batsman is put into some difficulties. We're going to see Johnson Charles now, the right-handed batsman, 2 of 3 deliveries, and at the middle of the 7th over, the Windies are 55 for 2. Hardik Pandya in his very first over. Just the 1 run so far. Here he comes, jogs it, not a very quick run up, and this one getting slight bounce and very good fielding there. Man with the short third, diving away to his right. It was guided down to third man, but there was nobody there, just the man at short third who dived away to his right. But once again, when the ball is slower, the ball is not going to go so quickly off the bat. And that's really what helped the fielder at that point of time. 56 for 2. ब्रेडली, शॉन टेट, शोएब अख्तर ये जब गेंदबाजी किया करते थे और मैं कमेंटेटर्स को सुनता था तो वो आमतौर पे विशेषकर अंग्रेजी के कमेंटेटर कहा करते थे क्विक इट कम्स क्विकर इट गोज। तो वो जो दृश्य है वो यहाँ तो नहीं दर्शाए जाएंगे हार्दिक पांड्या के द्वारा, क्योंकि बहुत तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते नहीं है। ओवर की 5वीं गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद, ऑन साइड में उसे खेल दिया, मिड विकेट की दिशा में फील्डर मौजूद है तिलक जो कि आज अपना डेब्यू कर रहे हैं, वो गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे विकेट कीपर के दस्तानों में। तब तक एक आसान सा सिंगल दोनों बल्लेबाजों ने चुरा लिया है। तो एक गेंद इस ओवर की बची है। चार्ल्स 3 के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक सुनील यही हमने देखा है कि वेस्ट इंडीज का एक छोर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करता है, दूसरे छोर से इतनी ज्यादा हिटिंग देखने को नहीं मिली है। I don't think they've been allowed to do it. They would like to do it, I can assure you. And both of them would like to go hammer and tongs. But yes, that's really been the pattern. We saw Kyle Myers not really being able to get into his stride, while Brandon King was very well into his stride and hitting all the fireworks or creating all the fireworks at the Brian Lara Stadium in Trinidad. Right now, the current run rate, 8.5 or just under, pretty decent. And of course, as you know, at the end of the power play, you can have, you only need to have 4 fielders within the 30-yard circle. Here goes Pandya. This one is, again, you can see over there that it was the off cutter. You could see him rolling his hands or his fingers over the seam, the ball coming back in from outside the off stump. Played away between backward point and short third for a single. And at the end of the over, 7 overs, it is 57 for 2. 7 की समाप्ति के बाद 57 वेस्ट इंडीज का स्कोर। शुरुआती 2 झटके जो कि युजवेंद्र चहर के उस ओवर में आए थे उसकी भरपाई निकोलस पुरन ने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से कर दी है। 11 गेंदों में 25 रन उनके बल्ले से निकले, 2 चौके 2 छक्के उन्होंने जड़े और जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, लगभग 225 के स्ट्राइक रेट के साथ में बल्लेबाजी करना, T20 फॉर्मेट में उस बल्लेबाज के बल्ले से वो रन निकलना जिन्होंने विश्व भर में अलग अलग प्रतियोगिताओं में जैसा खेल दिखाया, जिस तरीके से उन्होंने अपने ओपोनेंट को ही नहीं बल्कि स्पेक्टेटर्स को भी छकाया और मजबूर किया उस सोच पे। गेंदबाजी में परिवर्तन, कुलदीप यादव 8वां ओवर लेकर आएंगे। 29 मैचेस खेले, 46 विकेट चटके हैं, एवरेज बहुत अच्छा, 15 से अंदर का उनका एवरेज है और जितने सारे गेंदबाजी में विकल्प है भारतीय टीम के लिहाज से वो एक अच्छी चीज। 3 स्पिनर्स को आज खिलाया गया। युजवेंद्र चहल ने गेंदबाजी कर ली है, अक्षर पटेल ने गेंदबाजी कर ली। अब तीसरे स्पिनर कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, पैड के ऊपर गेंद थी जरूर जिसे स्वीप करके खेल दिया।
स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर वहां पर मौजूद, कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट के साथ कुलदीप की ओवर की शुरुआत। I'm a fan of Kuldeep Yadav, I must confess. And if you look at his statistics, not just under 15, his average, but also under 7, his economy rate, which is excellent. And this one is the one that goes straight through the top spinner, played away down towards mid-wicket and picks up a run. Does Puran moves on to 26. And the Windies 58 for 2. And the funny thing about Kuldeep Yadav, I'm sure you know, in Bangladesh, when in the first test he was player of the match and then dropped in the second test. He's quite used to it now. And he was saying in an interview, just wait for his next delivery, as he's going to be bowling to the right-handed Johnson Charles. So slip comes into place, and I think that's a very good move. He says, I'm quite used to it. I bowl very well and then I'm dropped. He said, I don't think twice about it now, which is really good. I think as a young man, he lost his way slightly after the World Cup in England 2019, but a very good comeback now, certainly in the international format. Here he goes and comes in bowls, and this one is being slogged high into the air. Has it gone over? Is it going to be caught long on? Wait and see. Yes, a fantastic catch. Is that a fantastic catch? It is a fantastic catch by the debutant Tilak Varma. Absolutely stunning catch, and Kuldeep Yadav also strikes in his first over. As I said, I'm a big fan of Kuldeep Yadav. Once again beaten in the air and off the track there was Johnson Charles, but a very good catch, running in about 10 yards to his left and diving from Tilak Varma. And what sort of confidence that will give him is tremendous. पिछली दो गेंदों में कोई रन नहीं आए थे, इस बार थोड़ा सा फ्लाइट डिलीवरी करके कोशिश जरूर की थी कि बल्लेबाज को मजबूर किया जाए, और उसी के चलते तिलक को वो मौका मिला। बहुत लंबा खासा फैसला तय करके, कम से कम 20 से 22 यार्ड तय करके उन्होंने जॉनसन चार्ल्स का ये वो कैच पकड़ा। Yes, an excellent running catch there from Tilak Varma. Absolutely fantastic. Diving at the end, take a ball that had looped up in the air, beaten, as I said, in the air and off the pitch by Kuldeep Yadav, and picks up his first wicket. 58 for 3 then, the Windies. Johnson Charles called Tilak, bowled Kuldeep Yadav for just 3. And 3 of 6 deliveries. So you're absolutely right. At one hand, they're going pretty quick. So third wicket partnership, 28 of 18 deliveries, Puran 26, Charles just 2. And as you were saying very rightly, Ayush, that's been the pattern of the West Indies innings so far. One side, there's been a batsman scoring very, very quickly. The other side, unfortunately, dawdling, not being able to get the ball away. And but that's sometimes what happens, and that's when you say, as you said, that you get desperate to say, listen, I was going to pick up the scoring, I'm not here. Remember, just 120 deliveries, and I keep thinking why people strategize so much, but really, it was an excellent running catch. It was certainly more than 15 yards to his left, but very good anticipation, running in from deep at wicket almost to the long on area and getting that catch right at the end. So, last wicket then, Johnson Charles, and 58 for 3 as Rohit Pal, the captain, comes to the crease. कुलदीप यादव, एक स्लिप लगा रखी है, एक लेग स्लिप भी लगा रखी है, अपील की गई है एलबीडब्ल्यू की, लेकिन नकारा अंपायर ने। जैसे ही वो एलबीडब्ल्यू की अपील आती है, वेस्ट इंडीज के जो बल्लेबाज है उनके जहन में कुछ अलग ही चलने लगता होगा, क्योंकि पिछले जो 2 निर्णय जिस तरीके से गए हैं, एक उन्होंने जो रिव्यू मांगा वो गलत गया, उनके खिलाफ गया, एक जब रिव्यू मांगा जा सकता था तब उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, लेकिन उस लेग बाई के चलते 1 रन जरूर मिलेगा। क्या रिव्यू की मांग की है? क्या भारतीय टीम ने रिव्यू की मांग की है? बिल्कुल की है। कुलदीप यादव रिव्यू की मांग करते हुए नजर आएंगे। I don't know what you thought of that particular delivery. I thought it was actually the conventional, or rather the Chinaman, it was spinning away the googly from the left-arm Chinaman bowler, and just perhaps coming back in, was straightening just a shade, not really spinning. As he went down for the slog sweep, it was hit somewhere around his thigh, on his right thigh. Remember, right-handed batsman. So was he hit in line, not hit in line? Was it going to hit? Remember, it's been given not out. So even if it tickles the stumps, he's going to be not out. So interesting. I didn't think it was worth a review. What do you think, Ayush? मुझे भी वही लगता है, रिव्यू की मांग नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन भारतीय टीम चाह रही है जितना ज्यादा टॉप ऑर्डर के ऊपर दबाव बना दिया जाए वेस्ट इंडीज के, वो शुरुआती क्षणों में ज्यादा बेहतर है। पिच आउटसाइड ऑफ की थी, इंपैक्ट भी आउटसाइड ऑफ था, और उसी के चलते वो रिव्यू गंवा दिया भारतीय टीम ने, मिसिंग स्टंप। तो एम्पायर का जो फैसला है उसके साथ यदि जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन कुलदीप यादव, उनको ये निर्णय
अंपायर का गवारा नहीं था, उसी के चलते उन्होंने उस रिव्यू की मांग की, तो भारतीय टीम ने अपना जो पहला रिव्यू है वो गंवा दिया है। वेस्टइंडीज के पास भी एक रिव्यू बचा है, भारत के पास भी एक रिव्यू बचा है। 8वें ओवर की 5वीं गेंद, पुरन मोड। ये इस समय जो दृश्य है हम देख पा रहे हैं, स्पेक्टेटर्स जो निकोलस पुरन के निश्चित तौर पे फैन है, वो उनके सपोर्ट में वो स्वर्णिम शब्द कह लीजिए लिख कर लाए हैं। अब लेग स्लिप को हटा दिया गया है। 8वें ओवर की 5वीं गेंद, लेग स्टंप के पास में उसको रखा था तो धकेल दिया ऑन साइड में, मिड विकेट की दिशा में। फील्डर जब तक दौड़ के आएंगे उसे थ्रो करेंगे विकेट कीपर के छोर पे, तब तक 1 रन दोनों ही बल्लेबाज दौड़ लेंगे और उसी के साथ पोवल अब स्ट्राइक पे। पुरन 27-14 गेंदों का सामना करके वेस्टइंडीज का स्कोर 60 पे पहुंच चुका है। 3 विकेट गंवाने पड़े। लंबे कद काटी के पोवल, आज तो कप्तानी की भी जिम्मेदारी है। Yes, that's right. And that delivery that had been appealed by the decision reviewed by the Indian team, they'd actually gone through for a leg bye, which is why he's back now on strike. And Puran on 27 of 14 deliveries, very bright innings, couple of sixes. Pal yet to get off the mark, and the run rate, which was at 9 at the end of the power play, has come down to 7.5. This one gets the edge and the ball flies away just to the right of Slip, who gets a hand on it and bunts it away down to backward point. So picks up a single off the edge. There does Roman Powell. At the end of an eventful over, the West Indies are 61 for the loss of 3 wickets. मैं हार्दिक पांड्या की उस कलाकारी को देख रहा था। कुलदीप यादव की जो आखिरी गेंद थी उसमें एक स्लिप लगा रखी थी, एक लेग स्लिप लगा रखी थी, एक शॉर्ट लेग पे फील्डर लगा रखा था, और उससे पिछली जो गेंद कुलदीप यादव ने, इससे पिछली गेंद जो की गई थी उसके वहां लेग स्लिप को हटा दिया गया था। तो किस तरीके का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पे। बहरहाल 8 की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 61, 3 विकेट के नुकसान पे, और पिछले 2 ओवर से जो रनों की गति है उसके ऊपर भारतीय गेंदबाजों ने थोड़ा सा लगाम लगाया है, अंकुश लगाया है, और उसी के चलते जो करंट रन रेट 7.63, थोड़ा सा समय जरूर लगा। मैं वो टेस्ट फॉर्मेट से अभी तक बाहर नहीं आ पाया शायद, लेकिन ये T20 फॉर्मेट है, यहाँ रफ्तार दिखानी पड़ती है। गेंदबाजी के लिए हार्दिक पांड्या, एक छोर से कुलदीप यादव, दूसरी तरफ से हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करेंगे। अपने पहले ओवर में महज 3 रन खर्च किए थे, और शायद वही वो रन थे जहां से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों में थोड़ी सी कमी आई है उस रन बनाने की रफ्तार में। पोवेल गेंद का सामना करने वाले हैं। स्लिप कोई भी मौजूद नहीं है। मिड विकेट की दिशा में एक फील्डर है, स्क्वायर लेग की दिशा में एक फील्डर है जो कि डीप स्क्वायर लेग। 9वें ओवर की पहली गेंद, हार्दिक पांड्या दाएं हाथ से ओवर द विकेट, गुडलैंड डिलीवरी थी जिसे हल्के हाथों से खेला गया पोवेल के द्वारा। क्रीज से, पिच से बहुत ज्यादा दूर वो गेंद गई नहीं। हार्दिक पांड्या ने अपना फुटवर्क दिखाया, थोड़ी सी फुटबॉल स्किल्स भी दिखाई थी, लेकिन रन कोई मिलेगा नहीं। इस समय हम देख रहे हैं पिछला रिव्यू जिसको हम बयां करते हैं आपके लिए। कुलदीप यादव की वो गेंद थी जिसे हवा में उठा के मारा जरूर था, लेकिन तिलक अपने डेब्यू पे क्या अद्भुत कैच पकड़ा है। 15 से 20 यार्ड दौड़ लगाई, उसके बाद में लगाई वो डाइव, लेकिन दबाव की परिस्थिति में भी वो कैच पकड़ लेना तारीफ करनी पड़ेगी। हार्दिक पांड्या, ओवर की दूसरी गेंद, डॉट डिलीवरी, शॉर्ट पिच गेंद थी, अच्छे बाउंस के साथ, अच्छे उछाल के साथ विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में गई, और पोवेल के ऊपर अब वही दबाव पड़ता है जो मायर के ऊपर पड़ा था। और हमने देखा है सुनील, दबाव में वेस्टइंडीज के खिलाड़ी आमतौर पे अपने आप को रखने के आदी है नहीं। Well, that was a slower bouncer. It actually went on the bounce to the keeper. But that's how you actually befuddle the batsman who's expecting something to come much quicker. It was short, but it was the slower bouncer, and that's why it completely defeated him. Just 122 Ks. The current run rate now crashing down to just over 7.32, 61 for 3. Here goes Hardik Pandya, and this one once again slightly slow outside the off stump. Tries to cut, gets the bottom edge of the bat, and the ball trickles away down to the keeper. So you can see Pal now, he's one of 5 deliveries. He's the captain, and obviously now he's getting slightly agitated over there, slightly anxious. What am I doing here as the captain if I'm scoring 1 of 5? But remember, this game can change so very quickly. We've seen it in the IPL. That young man Rinku Singh, those 5 sixes that he hit in that over to win the game for his team. So anything can happen. This is the excitement of this particular format. Though we were talking about run rates, I mean, look at Bazball. England going at 5 runs and over in the last test match of the Oval. That was fantastic. That was wide outside the off stump. Once again, the slow delivery, so not getting his timing. There was Pal, and was able to just pick up a single as the ball trickled away just to the right of point. And at the after 8.4 overs, beg your pardon,
The West Indies score is 62 for 3. Just ask Sharma to tell us that in the last few overs after the power play, what has been the run rate of the Windies? Because it was 9-54 for 2 at the end of the power play. And after that, we've had already 2.5 overs after that. What's been the run rate in these 2.5 overs? Because the overall run rate now is just over 7. It was 9 then. Here goes Hardik Pandya, and this one down the leg side. He tries to turn around the corner. An appeal there from Ishan Kishan, negated by umpire Gregory Brathwaite. Obviously, it got, I think, the thigh pad went through. Otherwise, it would have been called wide. You'll see on the replay what exactly happened. There, the scramble seam. Yes, it was the thigh pad going through to Ishan Kishan. That's why no wide was called. So we've seen everything. We've seen the slow bouncer. We've seen the scramble seam. We've seen the conventional seam delivery that goes seam up and straight through. So Hardik Pandya mixing it up, and that's what you've got to do actually in this format. Not allow the batsman to settle into any line or length, or allow you to settle into any line or length. There goes Hardik, last ball of his over, and this one again, the slow bouncer. Had to wait and wait and wait there, Nicholas Pooran, for that ball. Finally found it in front of his face and pulled it away down towards square leg. So an excellent over there by Hardik Pandya. How many runs in that over? I think just 2 runs in that over, or just 1? 2, I think. 2 runs in that over. So 3 runs in his 2 overs there from Hardik Pandya. And at the end of 9 overs, the Windies are 63 for 3. हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के कप्तान जब गेंदबाजी करने के लिए आए तो रन रेट के ऊपर वेस्ट इंडीज के थोड़ा सा दबाव लगाया गया. जो प्रोजेक्ट का स्कोर यहां से अनुमानित स्कोर बनाया जा सकता है वो 140 रन है यदि आप 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाएं. यदि 8 रन के हिसाब से बनाया जाए तो 151 का आंकड़ा पार किया जा सकता है. लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मानी जाती है, जानी जाती है. तो अगर 12 रन प्रति ओवर के तौर पे माना जाए तो लगभग 195-190 के आसपास का आंकड़ा पार किया जा सकता है. कुलदीप यादव गेंदबाजी करेंगे. मनोज कुमार ने एक आंकड़ा साझा किया है, वो ये है कि भुवनेश्वर कुमार और कुलदीप यादव ये 2 ऐसे भारतीय गेंदबाज हैं जिन्होंने 5-5 विकेट की हॉल तीनों ही फॉर्मेट में ले रखी है, T20 में, वनडे में, टेस्ट में. तो ये अद्भुत आंकड़ा साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज. कुलदीप 10वें ओवर की पहली गेंद फुल लेंथ गेंद थी. टप्पा खाने के बाद अच्छी स्पिन मिली है कुलदीप यादव को. बाहर की तरफ गेंद को घुमाया और पुरन को थोड़ा सा चकाया. पुरन जो कि शुरुआत में ताबड़तोड़ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, इस बार रनों की गति में थोड़ा सा इजाफा करने के लिए देखेंगे जरूर. लेकिन स्पिनर्स को, विशेषकर भारतीय स्पिनर्स को सोच समझ के खेलना पड़ता है. एक स्लिप भी मौजूद है. इस बार डाउन द लेग साइड खेली थी जिसे हल्के हाथों से धकेल जरूर दिया है, लेकिन 2 रन की मांग की जाएगी और दोनों ही बल्लेबाज क्विक डबल लेंगे. 2 और रन पुरन के बल्लेबाजी के कार्ड में आ जाएंगे और वो पहुंचेंगे 30 पे. संजू सैमसन भारतीय टीम के लिए विकेट कीपिंग भी करते हुए हमने इन्हें देखा है और आज फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. सुनील, कितनी बड़ी लग्जरी है ये. उसे कहते हैं ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटीज. भारतीय टीम के पास चाहे आप गेंदबाजी में देख लीजिए, चाहे विकेट कीपर्स में देख लीजिए, चाहे बल्लेबाजों में देख लीजिए. इसी बीच कुलदीप 10वें ओवर की दूसरी गेंद रिवर्स स्वीप कर दिया. फील्डर वहां पे मौजूद है नहीं और उस दिशा में, जिसे कि पॉइंट की दिशा कहा जाता है, दौड़ लगा के एक फील्डर पहुंच गए और गेंद को रोक भी लिया है. तो सरप्राइजेस के पैकेज लेकर आई है भारतीय टीम आज फील्डिंग यूनिट के तौर पे, लेकिन रन लेने से रोक नहीं पाएंगे. उसी बीच 2 रन आए हैं और पुरन का स्कोर 32-19 गेंदों का महज सामना किया है. कुलदीप की वो पिछली गेंद जो कि थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी थी, रिवर्स स्वीप के तौर पे उसे अच्छी तरीके से भांप लिया और फील्डर ने. Excellent fielding there by Mukesh Kumar. Really, really excellent fielding. Diving to his right and this time trying to not being able to read the line or the length of that ball, going back to a full length delivery. There was Nicholas Pooran. And befuddled both by the flight and the turn off the wicket. Lucky that the ball didn't spin back onto his stumps off the edge, but good fielding there. The previous still be running about 20 yards to his right and then diving full length as Ishan Kishan kicked that ball onto the stumps. It trickled past the stumps so easily, could have gone back on. A slip in place and this time flicked off his front pad down towards square leg and backward of square really, and picks up a single. That's Pooran. That brings Pal on strike. The last ball of the 10th over, halfway through this first innings, the innings of the Windies. Remember, they won the toss and elected to bat. So I'm sure that they were thinking that there would be slightly more than 6.92 at the end of 10 overs. But still remains to be seen. Of course, we know what can happen in the back end. Here goes Kuldeep with a slip in place.
slip and a forward short leg comes in bowls, and this one is wide outside the off stump, driven away towards sweeper cover. Backward point really more than anything else, picks up a single at the end of 10 overs, then 69 for 3 and 6.9. And remember, we were talking about after 6, it was 9 per over. So both Kuldeep Yadav and Hardik Patel have done a very, very good job of controlling the scoring. बिल्कुल हार्दिक पांड्या अपने मीडियम पेस के साथ में और उसमें भी गेंद को स्लो कर देते हैं, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत है। आमतौर पे हम देखते हैं तेज तर्रार गेंदबाजों को कि स्लोअर वन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या जिनके आमतौर पे गेंद की रफ्तार 125 से 130 किलोमीटर रहती है, वो स्लोअर वंस लगाते हैं 120 से 122 किलोमीटर की। वो स्लोअर शॉट पे डिलीवरीज के साथ में अपने ओपोनेंट के सामने जाने के लिए हमेशा तैयार तत्पर रहते हैं। फिलहाल वहाँ मैदान पे ड्रिंक्स ब्रेक चल रहे हैं। 33 के स्कोर पे पुरन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 21 गेंदों का सामना किया पोवेल, जिनके बल्ले से महज 3 रन आए। 7 गेंदों का सामना किया है, तो शायद यही कारण हो सकता है कि क्योंकि सिर्फ एक ही छोर से बल्लेबाज प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे छोर से रन नहीं मिल रहे। सुनील, एक और बड़ी चीज ये भी है कि स्ट्राइक भी रोटेट करना मुश्किल हो रहा है दूसरे छोर के बल्लेबाजों के लिए। Well, they're trying actually to pick up those singles, but I think the very fact that you're having a medium pacer at one end who actually is mixing up his deliveries very well. And he might be bowling at 122, but it could be the off cutter, it could be the scrambled seam, it could be the slow bouncer, it could be anything. So it's not just the pace, but what you're doing with the line, the trajectory of that particular delivery that is making Hardik Pandya a handful really on this wicket, which is a slowish wicket, not too much pace in it. That's why they've not been able to get the timing. You're absolutely right. 28 for King, 1 for Myers, 3 for Charles, 33 for Pooran of just 21 deliveries, and then 3 of 7 for Rohit Pal. So it's been really a mixed bag for the Windies at Trinidad. And yes, and that's right. So the last 4 overs after the power play, just 15 runs and the 1 wicket. So that just shows the way that the Indians have put the clamp down on the Windies batsmen. The drinks then on the table. Pooran, excellent innings so far. 33 of just 21 deliveries, 2 fours, 2 sixes, and that's really what he's known for. Had a little bit of trouble against Kuldeep Yadav in the last over, but otherwise he's really been the one who's been carrying the flag for the Windies in this particular first half of the innings. Of course, there are a lot of batting to come, as we've said. There's Shimron Hetmeyer. You know what he can do if he comes in. There's Jason Holder, who can hit the ball long and hard. So they've got a long batting lineup, have the Windies, but I think they're relying really more on Pooran and Rohit Pal, the captain, to be able to take them to a score. I would say at this rate, if they get 100 runs or thereabout in the last 10 overs, 160, 170, competitive score on this wicket. भारत ने अब तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। वेस्ट इंडीज का प्रोजेक्टेड स्कोर यदि इस रफ्तार से रन बने तो 138 तक पहुंचेगा। यदि 12 रन प्रति ओवर बनाएंगे तो भी 190 का आंकड़ा यहां से तो पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या क्या गेंदबाजी की है, 2 ओवर किए हैं, अभी तक 2.5 के आसपास के रन रेट से गेंदबाजी की है। कुलदीप यादव ने भी अच्छा मिश्रण दिखाया, मगर 10 की समाप्ति के बाद अब बारी है 11वें ओवर की। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम, नया स्टेडियम में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी कंटिन्यू करेंगे। अपना 3रा ओवर लगातार लेकर आएंगे। शायद सबसे बड़ा कारण उसका यही रहा होगा कि क्योंकि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है उनका सामना करना। 10 ओवर की समाप्ति के बाद जो आंकड़े हैं वो कुछ ये बयां करते हैं कि 29 डॉट्स के लिए वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने 6 चौके लगाए हैं, 3 छक्के लगाए हैं। शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया ये आंकड़े साझा करने के लिए। हार्दिक पांड्या 2 ओवर 5 रन महज खर्च किए हैं इस गेंदबाज ने। पोवेल बल्लेबाजी कर रहे हैं जिन्होंने सिर्फ 7 गेंदों में महज 3, मुझे कहना चाहिए ये वो आंकड़े नहीं है जिसके लिए वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज विशेषकर T20 फॉर्मेट में जाने जाते हैं। थर्ड मैन पे एक खिलाड़ी मौजूद है, बैकवर्ड पॉइंट पे एक खिलाड़ी लगा रखा है, फाइन लेग की दिशा में एक खिलाड़ी, मिड विकेट की दिशा में एक खिलाड़ी मौजूद जो बाउंड्री के लिए क्षेत्र रक्षण करने की भूमिका निभाएंगे। तो 11वें ओवर की पहली गेंद दाएं हाथ ओवर द विकेट। हार्दिक पांड्या, गुड लेंथ डिलीवरी, फुल लेंथ डिलीवरी थी, उसे ड्राइव कर दिया ऑफ साइड में। लॉन्ग ऑफ के फील्डर आके उसके फील्ड जरूर करेंगे लेकिन 2 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। पोवेल के खाते में बहुत लंबे समय के बाद में हमने एक ही गेंद पे 1 से अधिक रन आते हुए देखा है। सुनील, Yes, it was a slow up delivery, but a half volley that was driven nicely towards long off. But a good run there from Suryakumar Yadav at long off, preventing that ball from going over the boundary. As Pal then moves on to 5, as you said, the first time that he's scored more than a single of any delivery.
and the Windies cross the 70 mark. 71 then for 3. As here goes Hardik Pandya, right arm over, bowling to Rohit Pandya, slightly short of length outside the off stump, played away quietly to backward point, tries to hit it hard, but once again just 121 Ks, not being able to get the timing, especially off the wicket over here. And I think that the Windies also, their bowlers will be thinking about how to bowl on this wicket slightly slow. The last boundary was a hit, in fact, in over number 6, the last over of the power play, and that is 25 minutes ago. So that just shows, as I said, that the way that the Indian bowlers have controlled proceedings at the Brian Lara Cricket Academy, actually, that's the full name, the Brian Lara Cricket Academy in Trinidad. The next ball has been cut away viciously. That was wide outside the off stump and over the man at backward point, down to the boundary for four runs. We were just talking about it. So it's not just what's happening on the field, but it is the scorer's curse that said that was the first boundary. That last boundary had been scored 25 minutes ago. So he said, oh, is that what you're saying? Fine, I'm going to hit a boundary right now. Cut away over the man and purposely over the man at backward point, down to the backward point boundary for 4. कमेंटेटर कर्स तो कई बार सुना है, आज स्कोरर्स का कर्स होता है, ये भी पता चल गया शर्मा. हार्दिक पांड्या, ओवर की चौथी गेंद, शॉट पे डिलीवरी थी, एक बार फिर कट कर दिया, थर्ड मैन की दिशा में फील्डर आके उसको रोकेंगे, लेकिन 2 रन तब तक दोनों बल्लेबाज कंप्लीट कर देंगे. तो पावल अब अपने शो में नजर आ रहे हैं. जिस तरह की बल्लेबाजी करने के लिए पावल जाने जाते हैं, अब धीरे धीरे वो अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं. कुलदीप यादव जो कि फील्डर थे, उस दिशा में दौड़ आज काफी ज्यादा फील्डर्स को लगानी पड़ी है. जिस जगह पे फील्डर्स तैनात किए गए हैं, वहां से गैप ढूंढने की कोशिश वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने की है. वो अलग कहानी है कि हर बार चौको छक्कों में तब्दील कर नहीं पाए. But it's been some excellent fielding by the Indian outfielders especially. They've been really good in the outfield. They've been diving. They've been stopping the boundaries. They've been picking up very good catches, especially that one of Tilak Varma took. And he's the one who got, I think it was Johnson Charles. That's right. Here goes Hardik Pandya. This one is full toss on the leg stump, but not able to put it away. And down to Arshdeep Singh at backward square for a single. Moves on to 12, and even 12 deliveries. Coming up to the end of the 11th over, the Windies are 78 for 3. But very good fielding today by India. I haven't seen really a fumble in the field, but very good fielding, especially in the outfield. All the fielders putting their bodies on the line, diving away, including Kuldeep Yadav, who's actually one of the slow fielders. But really, I think the Indian team has picked up their fielding, at least what one has seen in this particular game. The last ball then of the 11th over coming up, 78 for 3. Puran facing, and this one is down the leg side, and certainly is going to be called the first wide, am I right, of the innings? The first wide of the innings. Hardik Pandya, and this over has been slightly awry in his both line and his length. He's been wide outside the off stump and was taken away for runs by Powell. And now what would have been a good length delivery outside the off stump for the right-handed batsman is actually a wide for the left-handed batsman. So you have to re-bowl that. 79 for 3 then, as we wait for the last delivery of the 11th over. हार्दिक पांड्या, सबसे महंगा ओवर अभी तक इनका गया है. पिछले 5 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं. इस ओवर की पहली वाइड भी इन्होंने की है. ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर गुडलैंड डिलीवरी थी, जो कि पैड के ऊपर लगी और शायद लेग बाई का इशारा आ सकता है. इंतजार करना होगा क्या वो इशारा लेग बाई का आएगा. नहीं, लेग बाई का कोई इशारा नहीं है. इसका मतलब यह है कि बल्ले से उसका संपर्क हुआ है और उसी के साथ ओवर की समाप्ति भी हुई है. 11 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज की टीम का स्कोर 80, 3 विकेट के नुकसान पे. मिश्रण कर सकते हैं, भारतीय गेंदबाज मिश्रण कर सकते हैं, क्योंकि 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल शुरुआती 10 ओवर में भी कर लिया गया था. लेकिन पिछले 4 ओवर के अंदर जिस तरीके से गेंदबाजों ने बल्लेबाजों के रन बनाने की गति को रोक के रखा था, पिछला ओवर जो कि हार्दिक पांड्या का 11 रन देके गया, उसके चलते सुनील हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव से अब वेस्टइंडीज की टीम बाहर आ गई हो. हालांकि मुझे लगता नहीं है, ना सिर्फ क्रिकेट में बल्कि वेस्टइंडीज में कोई भी इंसान वो मनोवैज्ञानिक दबाव इतनी आसानी से अपने ऊपर लेता होगा. Yeah, but again, you've got to look at the context of the game. There are only 54 deliveries to go. I mean, they have to score now. When are they going to score? And they've got a whole batting lineup to come. As I said, I'm waiting for Hetmeyer to come in, because to my mind, he's one of the most exciting Windies batsmen, or exciting batsmen across the globe, frankly, if you ask me. And to see him and Puran go hammer and tongs with the Indian bowling, well, that'll be some event. Here goes Kuldeep in his third over, 1 for 9. This one is slightly short of length outside the off stump, spinning away from the left-handed batsman, which is why, as he went for the pull, didn't get his timing. The ball goes away very, very slowly down to deep mid wicket, and they pick up just a single. So 1 for 10
the beginning of the third over. Once again, you can see, though it was short, it came very slowly off the pitch and completely defeated the timing of Nicholas Puran. Pal then on 12 of 12 facing Kuldeep Yadav. एक अच्छी चीज कुलदीप यादव के लिहाज से ये है कि उनके ऊपर विश्वास जताया कप्तान हार्दिक पांड्या। मैंने लगातार स्लिप के अंदर फील्डर उनको दिए हैं। 12वें ओवर की दूसरी गेंद, इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है बल्लेबाज पवल ने, खेल दिया है उसे ऑफ साइड में, फील्डर मौजूद नहीं है और चौका मिलेगा। तो पवल जो कि बहुत लंबे खासे समय से थोड़े से शांत थे, इस बार उन्होंने अपने कदमों का इस्तेमाल किया, बाउंड्री भी लगाई, 16 के स्कोर पे पहुंच गए 13 गेंदों का सामना कर। कुलदीप यादव जिनके लिए एक स्लिप का फील्डर मौजूद भी था, हालांकि बल्ले पे उतनी अच्छी तरीके से वो पिछली गेंद आई नहीं थी, लेकिन जिस ताकत के लिए वेस्टइंडीज के खिलाड़ी जाने जाते हैं उसके चलते वो बाउंड्रीज लगाना उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है नहीं। एक आसान सा चौका। वेस्टइंडीज के सपोर्टर्स, उनकी संख्या थोड़े से नाखुश होंगे जरूर, क्योंकि ओडीआई के अंदर क्वालिफाई कर नहीं पाई है वेस्टइंडीज की टीम। कुलदीप के उसी बीच ओवर की तीसरी गेंद जो कि सीधे बल्लेबाज कंफर्टेबली उसे खेल नहीं पाए, एक और डॉट डिलीवरी के तौर पे जाके खत्म होगी। अभी तक that boundary, he went actually about a yard and a half down the wicket to reach the pitch of the ball, and that's what you've got to do to Kuldeep Yadav, because the ball dips on you. He gets a lot of flight, and this one once again just forward very quietly to that one, almost like a test match defensive shot, and play the ball quietly down the wicket for Kuldeep to pick up in his follow-through, because on the stumps. And one thing about Kuldeep Yadav is that you don't know which way the ball is going to spin, as indeed any leg spinner. It should be that you should not know whether it's the googly or the top spinner or the flipper or the conventional leg spin delivery. Next ball is played away, this time to long on, just for the single, and moves on to 17. Then does Pal Puran then for the last ball of the 12th over. Kuldeep 1 for 15 coming up to the end of his third over. Excellent figures really by Kuldeep. I think just the one boundary scored of him, if I recall correctly, just the one boundary scored of him. Here goes Kuldeep Yadav for his last delivery of the third over. This one slightly short of length and played away once again with a flick of the wrist down towards deep mid wicket. Are they going to pick up one or two? Just the one. At the end of 12 then, the West Indies are 87 for 3, having elected to bat, having won the toss, and the current run rate then 7.25, which is not really what they're really looking forward to, because 150 on a wicket like this, I think, should not pose too many problems for the Indian batsman. लगभग 90% जो गेंदबाजी भारतीय स्पिनर्स ने की है वो फुल लेंथ या फिर गुड लेंथ का मिक्सचर रही है, और उससे उस लेंथ से गेंद के उछाल को, उसके पेस को भाप पाना इतना आसान रहता नहीं है। चहल को दोबारा गेंदबाजी में लगाया गया है 13वां ओवर करने के लिए। युजवेंद्र चहल, जिन्होंने अभी तक अपने एक ओवर में 2 विकेट चटकाए हैं, 11 रन दिए हैं, और कई सारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। वो युवा खिलाड़ी, वो युवा फैंस जो क्रिकेट को देखने के लिए आते हैं, तो वो एक अलग तरीके का नज़ारा होता है और वो जोश सा भी भर देता है। जितनी युवा उम्र से आप किसी भी खेल के प्रति वो लगाव, वो झुकाव निकाल के लाते हैं, भविष्य में हो सकता है कि आप भी प्रोफेशनल लेवल पे उस चीज़ को लेके जाएं। युजवेंद्र चहल 1 ओवर किया, 3 डॉट लगाई थी, 11 रन उन्होंने खर्च किए, 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए थे। शुरुआती झटके जो वेस्टइंडीज़ को उन्होंने दिए, उससे वेस्टइंडीज़ की टीम को उभरने में थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर आई थी, लेकिन ये जोड़ी अच्छा काम कर रही है। 29 रन हुए जब पिछला विकेट वेस्टइंडीज़ की टीम का गंवाया गया था, भारतीय टीम को कोई विकेट मिला था। चहल पहली गेंद स्ट्रेट अवे खुद फील्ड करेंगे, एक आसान सा ट्रैप वो बिछाते हैं। आमतौर पे सीधी गेंदें करते हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं, वेरिएशंस दिखाते हैं, तो वो भी तीसरे या चौथे स्टंप पे। 13वें ओवर की दूसरी गेंद, युजवेंद्र चहल हल्के हाथों से धकेला है, पुरन ने सिंगल तो कंप्लीट किया, 2 की मांग कर जरूर सकते हैं, लेकिन तब तक फील्डर पहुंचे और ईशान किशन के दस्तानों में भी गेंद पहुंच चुकी है, तो एक के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा पवल और पुरन की इस जोड़ी को। वेस्टइंडीज का स्कोर बढ़ चुका है, बढ़कर जा पहुंचा 88, 3 विकेट के नुकसान पे। अभी इस ओवर में 4 गेंदें बची हैं और पोवल को हम देखेंगे बल्लेबाजी करते हुए, जो कि दृश्य पिछले 4 ओवर में बदल भी चुके हैं, क्योंकि आमतौर पे यही देख रहे थे कि एक ही छोर से बल्लेबाजी की जा रही थी, लेकिन अब स्ट्राइक रोटेट की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। Yes, they have picked up the pace slightly. They had dropped under 7 briefly, had the Windies, but of course they were at 9 after the power play, so certainly they have some quite a lot of slack to make up. 88 for 3 in 12.2 overs, as Pal now in 17 of 16 deliveries is facing up to Chahal. 2 for 12 is Chahal in 1.2 overs, comes in and bowls, and that's the conventional
leg spinner, which has been slog swept away down towards deep mid wicket. And Sanju Samson picks it up and one motion hurls the ball back down to the bowler. He was thinking about second, and then as a sheepish look thing, no, I was never ever going to get that second. Some really good outfielding, I think, by the Indian fielders today. And that's the advantage of a young team. और वो पिछली जो मांग थी पोवेल की, उसको देख के तो मुझे क्रिस गेल की याद आ गई। क्रिस्टोफर हेनरी गेल जहां 2 रन मौजूद रहते थे, वो फिर भी सिर्फ सिंगल से संतुष्ट रहते थे और चाहते थे कि उसको बाउंड्रीज के साथ में कंपनसेट कर दिया जाए। 13वें ओवर की चौथी गेंद, घुटनों के ऊपर बैठ के वो शॉट खेला था, स्वीप करने की कोशिश थी। फील्डर वहां मौजूद, कुलदीप के पास गेंद जाएगी, लेकिन तब तक एक आसान सा सिंगल चुराएंगे। और पॉवेल पुरन की जोड़ी ने यही करके दिखाया। जब जब उनको वो बाउंड्रीज लगाने के मौके भारतीय गेंदबाजों ने नहीं दिए हैं, तो सिंगल के ऊपर निर्भरता दिखाकर उन्होंने आसानी के साथ में वो छोर में परिवर्तन किया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्योंकि सिर्फ 90 रन बने, 3 विकेट गंवा दिए हैं, बचे हुए लमसम जो 7 ओवर और 2 गेंदें यहां से बची है, उसमें वेस्टइंडीज की टीम कितना बड़ा स्कोर लगा सकती है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाजी की डेप्थ पूरी दुनिया जानती है। चहल, ओवर की 5वीं गेंद, इस बार फिर क्रीज का इस्तेमाल किया, क्रीज से बाहर निकल के वो शॉट खेला और मिड विकेट की दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद संजू सैमसन, जो कि वापस गेंद को विकेट कीपर तक पहुंचाएंगे, लेकिन 1 रन निकालने से फिर नहीं रोक पाएंगे। करंट रन रेट 7 के आसपास की रन रेट है। रवि बिश्नोई फिलहाल आराम कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक युवा खिलाड़ी है। इनको भी हमने देखा है फ्रेंचाइजी क्रिकेट में जिस तरीके से ये पटकनी देते हैं अपने ओपोनेंट बल्लेबाजों को। क्या लगता है सुनील, कब मौका दिया जा सकता है T20 सीरीज में ही? Well, I think so. Certainly, I think all of them should be given an option, given an opportunity in this particular format. It's a 5-match series, so there's enough time for all of them to get a go. Here goes Chahal, and this one on the leg stump and pulled away down once again to deep backward square leg. Once again, Kuldeep Yadav fumbles just a shade as he picks up, but nevertheless no harm done. Just a single on offer. End of his second over, 2 for 16 is Winder Chahal. After 13, the West Indies are 92 for the loss of 3 wickets. अभी तक 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया। अर्शदीप ने 2 ओवर किए, 12 रन खर्च किए। मुकेश ने सिर्फ 1 ओवर किया है, जिसमें 3 डॉट भी थी। 9 रन उन्होंने खर्च किए थे। अक्षर पटेल से 2 ओवर करा लिए गए हैं, 22 रन उनके स्कोर कार्ड में नजर हमें आ रहे हैं। चहल जिन्होंने 2 ओवर किए, 16 रन दिए, 2 महत्वपूर्ण विकेट भी उन्होंने चटकाए, 8 की इकोनॉमी से गेंदबाजी की है। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर समाप्त कर लिए, 16 रन उन्होंने खर्च किए हैं। तो वहीं कुलदीप से भी लगातार 3 ओवर करवा लिए गए हैं, 16 रन उन्होंने भी समाप्त खर्च किए हैं और 1 विकेट उनके नाम रहा है। अब यहां से कहानी जिस तरीके की रची जाएगी, वेस्टइंडीज की टीम से पूरी कोशिश यही रहेगी कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी जाए। पहला विकेट जब वेस्टइंडीज का गिरा था तो उनका स्कोर 29 था, जो आखिरी विकेट गिरा उस वक्त स्कोर 58 था। तो एक अच्छी खासी साझेदारी पनप चुकी है। कुलदीप यादव 14वें ओवर की पहली गेंद, डाउन द ट्रैक आके पुरन ने उसे ऑन साइड में धकेल जरूर दिया, लेकिन तब तक फील्डर दौड़ कर आते एक आसान सा सिंगल दोनों बल्लेबाजों ने आपस में पूरा किया है और वेस्टइंडीज का स्कोर बढ़ा है, बढ़कर पहुंचा है 10 में रन, 3 विकेट के नुकसान पे। करंट रन रेट जो सबसे बड़ा मुश्किलात का सबब वेस्टइंडीज की टीम के लिए बनी है, क्योंकि हर बीतते ओवर के साथ लगातार वो जो रन रेट है, वो जो रन बनाने की दर है, वो वेस्टइंडीज की कम हुई है। Yes, once again just shows the value of bowling a wicket to wicket and then using the slowness of the pitch to your advantage. As 93 for 3, then as you get down to the pitch of the ball, also not being able to time it well enough. Here's Powell facing up to Kuldeep Yadav. No slip in pace, that's wide outside the off stump, losing control of that completely. Second wide of the West Indies innings. But as he, I think, tried to bowl the googly because got his fingers all mixed up. So 94 for 3. Windies will take that extra delivery and that extra run. Here goes Kuldeep. Comes in and bowls, and this one is much better. It goes for the big slog sweep. It's gone high in the air. Is it going to be caught? No, this time there's the fielder ran about 15 yards, but he was running back. And that is always the problem when you're running back. It was Shubman Gill tried to take that catch, but it's just behind him as he dived. Good attempt. The ball went high in the air, off the outside edge as he tried to hit the slog sweep there up and Pal. It was, in fact, the googly from Kuldeep Yadav in just out of reach of Shubman Gill. बहुत मुश्किल होता है जब आप पीछे की तरफ दौड़ लगा रहे हैं और उसके तुरंत बाद उन्होंने अपने शोल्डर पे, अपने कंधे पे हाथ रखा, तो भारतीय स्पेक्टेटर्स के लिए हो सकता है कि वो थोड़े से मुश्किलात के सबब होते, लेकिन नहीं। उसके बाद गिल ने ये तय किया कि उनको कुछ हुआ नहीं है और अच्छे संकेत भारतीय टीम के लिए। कुलदीप यादव 14वें ओवर की तीसरी गेंद स्ट्रेट रखने की कोशिश की, जिसे हल्के हाथों से पुरन ने धकेला और कुलदीप यादव भी उसे फील्ड करेंगे कुछ टप्पों के बाद।
चौथा ओवर कुलदीप यादव का अग्रसर है, 19 रन उन्होंने अभी तक खर्च किए हैं, 1 विकेट उन्होंने चटकाया और करंट रन रेट लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। 14वें ओवर की चौथी गेंद इस बार पैड्स में रखा था, लेकिन क्योंकि पहले ही भांप लिया था पुरन को कि उन्होंने क्रीज का इस्तेमाल करने की सोच ली है, लेग स्टंप से पीछे की तरफ चले गए, एक अलग कोण बनाने की कोशिश कर रही है, थोड़ा सा दूर चले गए, अपने आप के लिए रूम क्रिएट करना चाह रहे थे पुरन, तो उन्हीं का पीछा किया। Yes, that's right. So, 95 for 3, run rate under 7. Once again, there's lovely delivery over there. Beating him both in the air and off the wicket, had to push tentatively forward there, Nicholas Pooran. Remember, he was going hammer and tongs and now just 40 of 32. And the last 2-3 deliveries has been befuddled, a little bit foxed by the type of deliveries that Kuldeep Yadav is bowling, not being able to make up his mind to whether he should attack or defend, and finally falls back on his defence. As here goes Kuldeep, and this one is played away with a flick of the wrist down towards long on, picks up a single at the end of that over, and the Windies at the end of 14 are 96 for 3, and in fact pats him on the back, does Nicholas Pooran, saying you beat me in the air and off the wicket, you bowled really well, and that's nice to see. Nice to see an opposing batsman, that type of sportsman, so to actually go up and say you bowled really well. There were 3 really excellent deliveries there from Kuldeep Yadav. Finishes his spell, 4 overs and 20 runs and just the 1 wicket. So really keeping in mind what he's been able to do, and the most dot deliveries, thank you Sharma, of all the Indian bowlers so far, 10 dot deliveries in the 4 overs that he has bowled. So that it just shows, I mean, again, the IPL bringing, the players together. They play together so much. The IPL, of course, lasting 2 months, therefore you're seeing a lot of each other. This partnership is put on how many runs? Shall we just tell you in a second? Has put on 38 runs in 39 deliveries. So not really the type of impetus or acceleration that the Windies would be hoping for. And here goes Hardik Pandya, I think in his last over as well. Yes, his last over. 3 overs and none for 16. 16 रन खर्च किए, 3 ओवर हार्दिक पांड्या ने किए, लेकिन उस समय गेंदबाजी करने के लिए आए थे पावर प्ले के तुरंत बाद, जब लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी वेस्ट इंडीज की टीम, और उसके बाद आते ही रनों की रफ्तार के ऊपर अंकुश लगाया। अब पारी के 15वें ओवर की शुरुआत करेंगे। वेस्ट इंडीज की टीम यहां से मोमेंटम बनाने की कोशिश करेगी। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल कर दिया, स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद जा जरूर रही थी, हवा में गेंद, और क्या वहां फील्डर मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। भारतीय टीम को मिलेगी उनकी 4थी सफलता। वेस्ट इंडीज के लिए दृश्य अच्छे नहीं है। पूरन जो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, शुरुआत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, 41 के स्कोर पे भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या का शिकार बने। पुल शॉट खेल रहे थे, स्क्वायर लेग की दिशा में, काफी समय तक गेंद हवा में थी, फील्डर वहां मौजूद थे, और इस कोण से पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्या तिलक वहां मौजूद थे? बिल्कुल, तिलक। Yes, क्या दिन रहा है सुनील आज इस खिलाड़ी का। पहले एक वो डाइविंग कैच लगाया था, और उसके बाद यहाँ पे ये इनका दूसरा कैच आया, डेब्यू इनका मैच है। Well, he'll want to score some runs, I think, not just take the catches, but you're absolutely right. It's a very, very good start for him. But this one is much easier catch. I mean, he kept his head, held his ground, even though he took it very low down. But once again, the slowness of the wicket defeating Nicholas Pooran. Even though it was a good length delivery, but he was not able to get the elevation or to be able to get the placement. And after a very good innings of 41, Nicholas Pooran caught by Tilak Varma off the bowling of Hardik Pandya. 2 4s, 2 6s of 34 deliveries, out for 41. And the Windies losing their 4th wicket at the score of 96. अगले बल्लेबाज शिमरन हेटमायर, T20 का करियर 51वां मुकाबला खेलने के लिए आए हैं। 797 रन उन्होंने अपने बल्ले से निकाले, लेकिन स्ट्राइक रेट लगभग 118 का, जो कि बहुत ज़्यादा उम्दा, बहुत ज़्यादा आला दर्जे का माना नहीं जाता T20 फॉर्मेट के लिहाज से, लेकिन आपके फेवरेट है। आपने जैसे कि बताया कि आप चाहते हैं कि हेटमायर जब बल्लेबाजी करने के लिए आए और उस तरह की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाएं, जिसकी सख्त आवश्यकता विशेषकर है भी अभी। निकोलस पूरन जो कि पिछला विकेट गिरा था वेस्ट इंडीज़ का, अपने आप से नाखुश थे, 41 का योगदान दिया, 34 गेंदों का उन्होंने सामना किया। अब यहां से जिम्मेदारी बचने वाली है पॉवेल और हेटमायर की। होल्डर भी बल्लेबाजी करते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे वो जाने जाते हैं वेस्ट इंडीज की टीम के लिहाज से, लेकिन उसके बाद में रिकग्नाइज बल्लेबाज की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी नहीं। तो ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको इन 6 ओवर्स के अंदर जितना बड़ा स्कोर वेस्ट इंडीज को दिला सके उनके लिहाज से बेहतर। लेकिन हार्दिक पांड्या आज के दिन का पहला विकेट, एक बड़ा विकेट निकोलस पूरन को अपने नाम करके, एक बड़ा शिकार करके, निश्चित तौर पे वो जो कॉन्फिडेंस है वो बड़ा होगा।
I think the Indian batsmen should also take cognizance of the way that the Windies have been defeated by the slowness of the wicket, and when they're batting, they should understand that it's not an easy wicket to bat on. Next, the first ball of that he is facing by Sharma, hit by a lovely extra cover drive, beating the man at sweeper cover, beating the man within the circle at extra cover. Lovely. It was wide outside the off stump, but just waited on that delivery, leant into the shot and beat two fielders, one on his right, one on his left, down to the boundary for 4 runs. So that's exactly what you have to do on this wicket. You've got to wait for the delivery before you go hammer and tongs at it. 600 for 4 of 14.2 deliveries at 6.98. Thank you, Sharma. As here goes Hardik Pandya bowling to Hetmyer, comes in and bowls and gets a ball that's slightly short, coming right back into him and plays it away down towards backward of square for a single. 101 for 4 then. Hetmyer getting off the blocks very quickly. 5 of 2 deliveries. And that brings the captain, Rohit Pal, onto strike. 20 of 19 deliveries. He'll want to up that because the current run rate, still when in the West Indies have reached 100, is still under 7 runs and over. पुरन आउट हुए, हिटमायर बल्लेबाजी करने के लिए आए. पुरन ने अपने आज की इस इनिंग की शुरुआत चौके के साथ की थी. हिटमायर ने भी इस इनिंग के साथ पहली ही गेंद के ऊपर चौका जड़ा है, जबकि अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं पोवेल. 20 के निजी स्कोर पे 19 गेंदों का उन्होंने सामना किया है. हार्दिक पांड्या ओवर की चौथी गेंद के लिए इस बार फिर वो कटर गेंद जो लगातार हार्दिक पांड्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बीट किया बल्लेबाज को और दूसरे टप्पे में विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंची. ये साफ बता रहा है कि कितनी ज्यादा मदद स्पिनर्स को मिल सकती है इस ट्रैक के साथ. और अनइवन बाउंस जिसको पहचानना बहुत मुश्किल है हर एक बल्लेबाज के लिए. और आपने ये बिल्कुल सही मेंशन किया था सुनील कि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने के लिए आएगी तो उन्हें भी एक अंदाजा होगा कि ये ट्रैक किस तरीके से खेल दिखाता हुआ नजर आ रहा है. 2 और गेंदें शेष है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि वेस्ट इंडीज के लिहाज से उनका आंकड़ा जो है वो 100 को पार कर चुका है. 101 4 विकेट के नुकसान पे वेस्ट इंडीज का स्कोर है. हार्दिक पांड्या ओवर की 5वीं गेंद, शॉट पे डिलीवरी थी, क्या छूटा है. युजवेंद्र चहल नहीं, कुलदीप युजवेंद्र चहल, बैग योर पार्डन फॉर दैट. ऑल ऑफ ए सडन सीधे स्ट्रेट अवे उनके हाथों में गेंद थी, पुरसी हुई थाली जिसे आप कह सकते हैं. एक और कटर लगाई थी हार्दिक पांड्या ने, अच्छी पोजीशन पे थे, स्पेक्स भी ऑन थे. ऐसा भी नहीं है कि सूरज सीधे उनके आंखों में आ रहा था. एक आसान सा कैच छूटा है. This was the commentator's curse. I was just telling everyone, our listeners, what excellent feeling India had displayed. So the first drop catch, it was going away to his right, it was hit with some velocity, but that's the type of catch that you've got to take. He didn't have to dive, didn't have to move very far, just move his hands to the right, got his hands behind the ball, wasn't able to hang on. This time pulled away from outside the off stump and way down over the deep mid-wicket boundary for 6 runs. So that's really what you have to say, that when you're given a life, you make the most of it. And that's exactly what Rohit Pal did over there. But though the ball was wide outside the off stump, was able to use his muscle mass, I think, really, and use brute power to pull it over deep mid-wicket, down through the boundary, over the boundary, then for 6. और इतिहास गवाह रहा है जब जिस बल्लेबाज का कैच छूटा है आमतौर पे उन्होंने बड़े स्कोर किए हैं. युजवेंद्र चहल जब खुद गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तो पता चलेगा कि किस तरीके से वो इन बल्लेबाजों को डील करते हुए नजर आते हैं. लेकिन भारतीय लिहाज से एक बड़ा विकेट हो सकता था. एक आसान सा कैच आया था, युजवेंद्र चहल मौजूद भी थे उस जगह पे, स्ट्रेट अवे उनके हाथों में गेंद थी, लेकिन वो एक कैच चटका था. लेकिन गेंदबाजी पे उनको बुला लिया गया. तो अब युजवेंद्र चहल साहब, आपने जो गलती की है अब उसका खामियाजा आपको खुद को भुगतना पड़ेगा. 2 ओवर किए हैं, 16 रन खर्च किए अभी तक युजवेंद्र चहल ने. ओवर के पिछले ओवर की आखिरी गेंद में हार्दिक पांड्या को एक ताबड़तोड़ शॉट के साथ में वो छक्का पड़ा था जो 77 मीटर का था. बहुत ज्यादा बड़े ग्राउंड्स है नहीं और T20 फॉर्मेट को सूट करते हुए नजर आते हैं. वेस्ट इंडीज की पूरी टीम T20s को बहुत ज्यादा पसंद करती है. विश्व भर में, ना सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में बल्कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट में भी अलग अलग जगह पे वो क्रिकेट खेलते हुए, T20 फॉर्मेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं. इसी रफ्तार से यदि रन बनाते हुए नजर आई वेस्ट इंडीज तो उनके आंकड़े 143 तक पहुंचेंगे. 8 रन प्रति ओवर उनको 147 पे पहुंचा देंगे. 12 रन प्रति ओवर से 157 अभी भी पहुंचे जा सकते हैं. 16वें ओवर की शुरुआत युजवेंद्र चहल के साथ, पैड्स के ऊपर धकेला था गेंद को, हल्के हाथों से फ्लिक किया कलाइयों का इस्तेमाल करके, लेकिन क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स की कोशिश कर रहे थे. जब तक फील्डर मिड विकेट पे पहुंचते 1 रन आसानी से निकाल लिया. पोवेल अब स्ट्राइक पे, जो कि 26 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. 22 गेंदों का सामना किया. हिटमायर ने 6 बनाए हैं, 3 गेंदों का सामना किया है, लेकिन आते ही अपना विश्वास, मनोबल साफ साबित किया कि वो बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे. Well, they have no option really. The last quarter of their innings now started.
last 5 overs. Chahal then 2 for 17 in his third over. 108 for 4 then. Paul on 26. Hetmeyer on 6. As here goes Chahal. And this one has been lofted high in the air. Has it gone over the man at long on? Oh yes, way over the man. I think it's about 80 meters if not less. And that is another 6 there off, this time off the bowling of Chahal. And the Windies then canter on to 114 for 4, really getting a move on, but they need to now, as he was picked up off the middle stump and straight down the track, 86 meters. That was just absolutely over, somewhere in the vicinity. I would say about 80 or 90, and 114 for 4. So really getting a move on. At this rate, they can actually get to 175, go 13 runs and over. Then 175, to my mind, of this pitch would be a competitive score. This one down the leg side as he tries to flick it round the corner, gets top edge, tries to take that catch, does the keeper Ishan Kishan, but the ball eluded him. It went over his head and looped over his head and went down towards short fine. He was able to pick up his single. Shaking his head there's Chahal, not happy with his bowling, not happy with his fielding, but has to make amends now. In fact, it's a good move to bring him on after he dropped that catch, not allow him to think too much about it. I think that was a good move there by Pandya. This one is wide outside the off stump as he tries to cut that ball, with the ball going straight on and not turning back into Hetmeyer, and was collected cleanly by Chahal, by Ishan Kishan behind the stumps. सुनील, एक चीज जो मैं देखना चाह रहा था वो सिमरन हेटमायर जिस भी टीम के लिए खेलते हैं, जैसी उनकी जर्सी होती है वैसे वो अपने बाल करा के आते हैं, लेकिन यहाँ पे वेस्ट इंडीज के जर्सी के जैसे बाल नहीं है, वो काले बालों के साथ खेल रहे हैं। उसी बीच विजविंदर चहल ओवर की 5वीं गेंद स्ट्रेट अवे विकेट कीपर के दस्तानों में, एक डॉट गेंद, थोड़ा सा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अब वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के ऊपर। अर्शदीप थोड़ा सा वार्म अप कर रहे हैं कि अगला ओवर निकाल सकते हैं अपने तरकश से। 4 ओवर यहाँ से बचे हैं, एक और गेंद उसमें जोड़नी पड़ेगी। ओवर की आखिरी गेंद एक बार फिर वाइड रखने की कोशिश की, पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, एक टप्पे में जाके गेंद को कलेक्ट करेंगे। एक और डॉट डिलीवरी, हिटमायर 6 गेंदों में 6 पे है, 3 गेंदों पे भी 6 पे थे, बैक टू बैक 3 डॉट डिलीवरीज इस बल्लेबाज ने खेल ली है और ये वेस्ट इंडीज की टीम के ऊपर दबाव बनाएगा। वो हम कैच की बात कर रहे थे, आंकड़ों की बात कर रहे थे, तो मनोज कुमार हमारे स्टैटिस्टिशियन ने एक आंकड़ा हमसे साझा किया है। क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा जो कैच माना जाता है वो ग्राम वुड का माना जाता है, जो 1990 का एक मुकाबला था जहां किरण मोरे ने उनका एक कैच छोड़ा था जब वो 7 के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे थे, और उस मुकाबले में फिर उन्होंने 333 का एक बड़ा स्कोर बनाया। Yes, not Wood, Graham Gooch, yeah, that's right. And that was at Lord's. That was at Lord's, that's right. Yes, I remember that very clearly. It was a very easy catch. I was watching it on television. Actually, it really was a very, very simple catch, and then went on to score. In fact, in that test match, Manoj Kumar, he scored a triple century and a century. I think he became the first player to score for 400 plus in one test match, absolutely, and they absolutely thrashed India in that particular game. So an old game, but something that I think still stays. Here goes Arshdeep Singh bowling right arm round the wicket, left arm round the wicket, and this one is guided way down to deep backward point, 4 runs. So the runs beginning to flow now. Arshdeep Singh, it was 117 Ks, but nicely guided there by Paul, waited on the ball and then used whatever little pace there was on that delivery to guide it just to the right of the man at backward point down to the boundary for 4. अर्शदीप की ओवर की जो शुरुआत हुई है वो डेथ ओवर्स, जिसकी हम लगातार बात करते हैं कि स्लॉग ओवर्स के अंदर गेंदबाजी करते हैं, और उसी की वजह से शायद उनकी इकोनॉमी उतनी अच्छी मानी नहीं जाती है। गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी तेज हुई थी, शॉर्ट पिच गेंद रखी थी, हल्के हाथों से कट किया था, पॉइंट की दिशा में कोई फील्डर मौजूद था नहीं। कुलदीप यादव जब तक पहुंचते गेंद उनसे पहले बाउंड्री रोप्स को पहुंच गई, तो पहली गेंद के ऊपर चौका अर्शदीप के मनोबल को थोड़ा सा तोड़ेगा जरूर। अभी तक जो उन्होंने 13 गेंदें की है इस मुकाबले में, उसमें 16 रन खर्च किए हैं, जो कि शुरुआती लिहाज से अच्छे खासे माने जा सकते हैं, लेकिन अब जब आंकड़े बदलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बिजनेस एंड ऑफ द गेम जिसे कहा जाता है, फुल टॉस डिलीवरी थी, उसे खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, फील्डर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आंकड़े 6 दर्शाएंगे। एक और छक्का इस मुकाबले का 6 लग चुका है, जो कि आया पोवल के बल्ले से। देखते ही देखते 43 के स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं, अपनी रफ्तार को उन्होंने बदल लिया है अब।
Well, really, you must say that Rajdeep Singh has to pull up his socks and lots of other things as well. It was a full toss outside the off stump and pulled away down to deep mid wicket. So you can just imagine the power that Rohman Powell has. First ball guided very nicely down to backward point for 4, and this one just hoiked over deep mid wicket for 6. So 10 runs of 2 deliveries, not been the best start to any over that anybody would want, and suddenly the West Indies cantering on to 125 for 4. And what is the run rate now? Suddenly I think it would be well over 7, yes, that's 7.65, so still nothing to really worry about for the Indian. This one is wide outside the off stump and once again guided down to the backward point, but that is now protected by Kuldeep Yadav, who's moved about 20 yards to his left from backward point to deep to more like a wide third man. As Rajdeep Singh then 23 runs of 2.5 overs, not the return that he was looking forward to in the Indian team. So I still think perhaps finding his feet in international cricket once again, but still I think there are high hopes for him, and everybody says, okay, fine, you're making a comeback, maybe we will allow you one game to settle in to the international format. ओवर की चौथी गेंद, अर्शदीप, होल्ड में कोई परिवर्तन नहीं है, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। ब्लॉक होल्ड में गेंद को किया था, लेकिन हिटमायर ने जैसे तैसे करके उसको मिड विकेट की तरफ धकेल दिया। फील्डर उसे फील्ड करेंगे, लेकिन छोर बदलने में रोक नहीं पाएंगे। हिटमायर अब ऑफ स्ट्राइक हो चुके हैं, 7 रन उन्होंने बना लिए, 7 गेंदों का उन्होंने सामना किया है और स्ट्राइक पे लेकर आए हैं पॉवेल को, जो कि वेस्ट इंडीज के लिहाज से एक अच्छी चीज भी है, क्योंकि 44 के स्कोर पे वो खेल रहे हैं। वेस्ट इंडीज यहां से यदि इसी रन रेट के साथ 7.62 के साथ रन बनाएगी तो 152 पे पहुंच जाएगी। वहीं 13 रन प्रति ओवर चाहिए उनको अगर 170 का मार्क पार करना है, तो जो यहां से इतना ज्यादा आसान लग नहीं रहा। ये पार्टनरशिप ताबड़तोड़ रही है, 31 रन की पार्टनरशिप महज 15 गेंदों में। अर्शदीप ओवर की 5वीं गेंद इस बार फिर गाइड कर दिया थर्ड मैन की दिशा में, जहां पे कुलदीप यादव मौजूद है। गेंद को फील्ड करके थ्रो करेंगे जब तक ईशान किशन तक, तब तक एक और सिंगल दोनों ही बल्लेबाज निकाल लेंगे। तो 17वें ओवर में अब सिर्फ एक गेंद बची है। अर्शदीप ने गेंदबाजी में इस ओवर की शुरुआत अच्छी की नहीं थी। पहली गेंद पे चौका लगा था, दूसरे के ऊपर उनको छक्का जड़ा गया था, उसके बाद कमबैक की कहानी रची है। 3 ओवर कंप्लीट करने वाले हैं, 25 रन अभी तक खर्च कर चुके हैं। हिटमायर फिलहाल स्ट्राइक पे आ चुके हैं, 7 गेंदें 7 रन, लेकिन हम सभी जानते हैं किस तरीके से रुख बदलने की क्षमता रखते हैं शिमरन हिटमायर। 17वें ओवर की आखिरी गेंद, अर्शदीप अंपायर को उन्होंने क्रॉस किया है, शॉर्ट पिच गेंद है और पूरी तरीके से हिटमायर को छकाया। फर्स्ट अप का इशारा जरूर आ सकता है, लेकिन इसी के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 17 के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर 128, 4 के नुकसान पे। Well, one of the things that Rajdeep is known for is actually bowling those Yorkers. We've only seen one in the 3 overs that he's bowled so far, and that was bowling this over. Otherwise, he's been wide. He's been wayward with both his line and his length, and that's why Powell then has taken full toll. He's 45 of 28, and I remember right at the beginning, I think he was 3 of 7 or something like that, and so he's really taken the Indian bowlers to the cleaners. And the other side, Shimron Hetmeyer, well, steady. 7 of 8 deliveries. Not really what I was expecting, but then you've got to also hand it to the bowlers. Akshar Patel, the most expensive in the Indian ranks so far, 11 runs per over in the 2 overs that he's bowled, and Arshdeep then 8.33. Kuldeep, one of the pick of the bowlers, just 5 runs per over and has also picked up a wicket. 128 for 4 then in 17 overs, and Mukesh Kumar, who opened the attack for India, now coming back just for his second over. So really you have to think about the bowler bowling the first over and then bowling the 18th over. But a very, very good delivery. It was a Yorker right on the middle stump and had to dig it out there. Did Rohman Powell, and dug it out well he did. Picked up a single down to long on and brings Hetmeyer onto it. But this is what you've got to do right from the first delivery. You've got to hit your line and your length, and that's exactly what Mukesh Kumar has done at the beginning of this particular over. और इस मुकाबले में इस पारी का दूसरा ओवर लेकर आए थे मुकेश। अब उनको 18वें ओवर में बुलाया गया है। 10 रन अभी तक खर्च किए थे, वो जी पहले ओवर की कहानी थी। इस ओवर में पहली जो गेंद थी वो स्ट्रेट अवे ब्लॉक हॉल का एरिया, जो कि सबसे टफ माना जाता है बल्लेबाजों के लिए खेलने के लिए, उसमें उन्होंने वो गेंद करी है। और अब फील्ड को पूरी तरीके से स्प्रेड करके रखा है, पूरी तरीके से फैला के रखा है भारतीय कप्तान ने। और उसका कारण ये है कि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज अब कोशिश करेंगे, लेकिन ये राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन लगातार परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। फुल हैंड डिलीवरी थी, उसे खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहां पे मौजूद है, लेकिन 1 रन लेने से रोक नहीं पाएंगे। हर एक गेंद के साथ कम से कम वेस्ट इंडीज की टीम की कोशिश ये की जा रही है कि सिंगल के साथ में स्ट्राइक रोटेट करी जाए, ताकि दबाव उन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर ना आए।
पॉवेल अब स्ट्राइक पे आ जाएंगे, जो कि 46 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 29 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। हिटमायर ने पहले गेंद के ऊपर चौका लगाया जरूर था, लेकिन उसके बाद उनके तरकश से जो तीर निकले हैं वो एक भी बाउंड्री रोप्स को पार करके गया नहीं है। मुकेश, 4 गेंदें इस ओवर में बची है, 18वां ये ओवर चल रहा है। वेस्ट इंडीज 130, 4 विकेट के नुकसान पे। ओवर की तीसरी गेंद फुल टॉस डिलीवरी थी, नो बॉल का इशारा भी आ सकता था। हो सकता है कि पॉवेल ने उसी सोच को अपने मन में रखते हुए वो शॉट खेला, लेकिन नहीं, नो का इशारा आया नहीं है। 3 वैलिड गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, और ये अच्छा खासा कंट्रोल्ड ओवर रहा है मुकेश के लिहाज से। सुनी Well, I don't think I might agree with you on that one. He had one very wide full toss and now one full toss, so not really too much control. But yes, hasn't given away too many runs, so that I think is the important thing. 131 for 4. The first delivery was excellent. It was right in the block hole. After that, 2 full tosses. As here he goes, comes in and ball. That's wide outside the off. If he had left it, it would have been wide. This time is then chopped away down to deep backward point, picks up a single. So lucky, frankly, if you ask me, because he's been really at 6s and 7s in this particular over, Mukesh Kumar. But it's so difficult to come back. You bowl the first over and then you come back 17 overs later to bowl the 18th over, just to warm yourself up and to get into the rhythm of things. And that अपने रनअप के ऊपर बरकरार है फिलहाल मुकेश। 13 रन ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। एक और लो फुल टॉस दिए, इसे ऑन साइड में धकेला, मिड विकेट की दिशा में गेंद जा रही है। फील्डर सूर्य कुमार यादव जब तक उसको फील्ड करके वापस थ्रो करेंगे विकेट कीपर तक, तब तक एक आसान सा रन चुराया। और फिटनेस के अंदर भी परिवर्तन होने लगा है। मैंने सूर्य कुमार यादव को जब पहली दफे देखा था एकदम स्लिम ट्रिम थे, लेकिन अब हल्का सा वेट पुट ऑन करने लग गए वो। I think he must be bulking up in the gym. That's what I feel. That's what he's doing, really. As here goes Mukesh Kumar, last ball of his second over. And it is going to be Shimron Hetmeyer who's going to be taking strike. The left-handed batsman, not really set the field alight so far. 9 of 10 deliveries, 1-3-3 for 4. Last ball of the 18th over. Here goes Mukesh. Coming in, that's wide outside the off stump, and as he tries to play it away onto the offside, there's all sorts of confusion over there as the ball hits the non-striker as he dived away to his right. Shimron Hetmeyer was running, and Roman Pal couldn't run because the bowler was in the way. But finally, they do scramble through for that particular single at the end of 18 overs. Then 134 for 4. 18 की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज का स्कोर 134। यहाँ से 12 गेंदों का खेल बचा है। विकेट भले वेस्टइंडीज की टीम के पास में 6 बचे हों, लेकिन जिस तरीके की बल्लेबाजी कर रहे हैं उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो रनों की रफ्तार में इजाफा लाना पड़ेगा, रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा। वहीं भारतीय लिहाज से यदि देखा जाए तो 2 ओवर गेंदबाजी के बचे हैं। स्पिनर्स से गेंदबाजी कराना इस समय एक उचित फैसला हो या ना हो, लेकिन मीडियम पेसर्स उनको वो कार्य करके दिखाना होगा। ये पहला T20 मुकाबला है। 4 T20s इसके बाद आने हैं, एक 6 को, 8 को, 12 और 13 अगस्त। तो अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है इन युवा खिलाड़ियों को, विशेषकर T20 के लिहाज से। लेकिन याद रखिए ODI वर्ल्ड कप आना है। अर्शदीप 19वां ओवर, पहली गेंद के ऊपर कैच थमा बैठे। एक और विकेट भारतीय टीम को मिलेगा। हिटमायर बाहर। 10 के इंडिविजुअल स्कोर पे 11 गेंदों का सामना किया अक्षर पटेल। फील्डिंग चाहे फ्रेंचाइजी क्रिकेट हो या इंटरनेशनल क्रिकेट, आला दर्जे की करके दिखाता है ये फील्डर। पहली गेंद के ऊपर अर्शदीप को मिली है विकेट, और हिटमायर जिनसे उम्मीद की जा रही थी, वेस्ट इंडीज के फैन उम्मीद कर रहे होंगे कि अच्छे खासे स्कोर के साथ में जाएंगे, वो एक शॉर्ट पिच डिलीवरी को भांप नहीं पाए और सीधे अक्षर पटेल के हाथों में थमा दिया। भारतीय टीम को 5वीं सफलता। Yes, well, it was a lucky wicket. It really was. Again, he tried to hit the ball too hard, and you cannot do that on this slow wicket. So it was literally, it was a half tracker, but it came so slowly off the wicket. He hit the ball too early, and the ball then flew away down to the man who was fielding at sweeper cover. That was Akshar Patel. So a lucky wicket there, but he'll take it. Will Arshdeep Singh as 134 for 5. The run rate then just under 7.5, and in fact it is now 7.38. Which means that, you know, they're struggling to get to that 150 mark right now. The fifth partnership, 38 of 24 deliveries. Thank you, Sharma. And it brings Romario Shepherd, who's come in before Jason Holder, which is a bit of a surprise to me. I thought Jason Holder would come in at the next fall of that particular wicket. But here you are, the Windies struggling to get to that 150 mark.
which I think will pose some problems because of the slowness of the wicket. This one going right across the batsman, Shepherd, following that ball, trying to guide it down to third man. Lucky he didn't get a nick and go straight into the gloves of Ishan Kishan. So that was the slower ball that was wide outside the off stump and straight into the hands of Patel, who takes a good catch going away to his left down at sweeper. It's so slow off the wicket. You're waiting and waiting and waiting for the ball to come, and all you end up doing is trying to hit the ball too hard. Here goes Arshdeep Singh, and this ball outside the off stump as he goes for a almighty heave outside the off stump does Romario Shepherd. Is appealing for a catch behind, but they're not going for any review. Two interesting points about that itinerary. The two in Guyana, which, as you know, is on the South American continent, and then two in Florida. So out of this 5-match ODI series, there's one in Trinidad, two in Guyana, which is on a different continent, and two in Florida, which is on a different continent. So quite interesting, this ODI series. This one is wide outside the off stump and will be called a wide, I think, absolutely, as he saw that Shepherd was going after the bowling, kept bowling wider and wider, finally got past that indicative line for the umpire. And even Gregory Bathwaite had to say, well, listen, that's too wide. And now he's got to bring the ball back in, I think. That's what he's going to try to do to Romario Shepherd, because he's going to be expecting the wide ball, Ayush, and he should bring one back into him and try and see whether he can get him either LBW or bowled. देखते हैं 19वें ओवर की चौथी गेंद अर्शदीप एम्पायर को उन्होंने क्रॉस किया, ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार फिर वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप, फिर बाजुएं खोलनी पड़ेगी एम्पायर को, एक और वाइड का इशारा आएगा, दो बैक टू बैक वाइड कर चुके हैं अर्शदीप, दबाव महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। गेंद की रफ्तार हालांकि 145 से ऊपर है, 135 से ऊपर है, माफ कीजिए, लेकिन उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हार्दिक पांड्या लगातार बात भी करते हुए नजर आए, वो चाह रहे हैं कि अर्शदीप उस तरीके की गेंदबाजी करें जिस तरीके का फील्ड सेट दिया गया है। अब शेफर्ड के आंकड़े ये बता रहे हैं कि 150 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट है, तो हो सकता है कि जेसन होल्डर से पहले उनको चुनने का कारण यही हो, क्योंकि बचे हुए 1.5 ओवर के अंदर आप जितने ज्यादा रन बना सके आपके लिहाज से बेहतर। अर्शदीप ओवर की चौथी गेंद, शेफर्ड स्ट्राइक पे, 2 गेंदों का सामना किया, खाता अभी तक खोला नहीं है, एक और वाइड, हैट्रिक लगा चुके हैं यहां वाइड्स की, झड़ी बिछा चुके हैं यहां उन अतिरिक्त रन की जो कि भारतीय टीम इस समय पे देना नहीं चाहेगी। 3 बैक टू बैक वाइड, राइट हैंडेड बल्लेबाज के सामने उस कोण से गेंद को बाहर की तरफ ले जाना। सुनील, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बयां कर रहे हैं कितने नाखुश है आप इस गेंदबाजी से। Well, really, you have to have much more control than that. You cannot bowl 3 wides on the trot. I mean, it is just unacceptable. It is not the way that you would expect an international bowler. And India had been very good with the wides so far, just 2. Now suddenly they have wides, 3 in a row. And Arshdeep Singh now just taking a moment off to think about his line, think about his length, think about his bowling. Hardik Pandya trying to G him on, saying, listen, you can do better than this. What's he going to bring up now? Yes, it is going to be the straighter deliveries. I thought it was a full toss, a low full toss, but much better than giving a wide outside the off stump, which is what I was expecting actually much earlier in the over. He is bowling now at a fair clip at 135 Ks. Not bowling the slow one too much. So it's a slow ball that got Shimron Hetmeyer actually. So he's got to be thinking about it. Maybe change his line and bowl left arm round the wicket rather than over the wicket to the right-handed batsman. But nevertheless, at the end of the day, 3 wides and a single. And we're coming up to the end. No, it's still 2 deliveries to go in this particular over. So a long over here from Arshdeep Singh. 138 for 5. अनौपचारिक तौर पे देखें तो ओवर तभी समाप्त हो चुका था जब 18.3 हमारे स्क्रीन के ऊपर लिखा रहा था, लेकिन ये ओवर की 5वीं गेंद है, स्ट्रेट अवे फील्डर मौजूद है, सूर्य कुमार यादव के हाथों में गेंद जाएगी और सबसे सेफ हाथ माने जाते हैं पॉवेल की वापसी होगी। 48 के स्कोर पे उनका विकेट पतित हुआ है। तो अर्शदीप के लिए एक ऐसा ओवर जिसमें उन्होंने लगातार 3 वाइड डाली थी, ऑफ द ट्रैक होते हुए नजर आ रहे थे, एक अच्छे वापसी के संकेत दिखाए हैं। शॉर्ट पे डिलीवरी थी, ऑफ साइड की तरफ गेंद जा रही थी, उसे पुल करने की कोशिश करना चाह रहे थे, सही तरीके से प्लेस नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑफ की दिशा में सूर्य कुमार यादव मौजूद थे जो आमतौर पे ज्यादा गलतियां करते हैं नहीं। लॉन्ग ऑन की दिशा में सूर्य कुमार यादव थे जो आमतौर पे ज्यादा गलतियां करते नहीं है। रोमन पावल 32 गेंदों का सामना किया, 48 के स्कोर पे वापस जाएंगे। 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तो धीरे स्टार्ट किया था, बहुत ज्यादा रफ्तार में रन बना नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद थोड़ी सी गति पकड़ी जरूर थी। अब वेस्टइंडीज का स्कोर 138 है, 6 विकेट के नुकसान पे 18.5
ओवर का खेल खेला जा चुका है इस पहली इनिंग में। जेसन होल्डर सबसे लंबे कदकाठी के खिलाड़ियों में से एक, जो गेंदबाजी जब करते हैं तो अच्छा उछाल प्राप्त करते हैं, लेकिन अब बचे हुए 7 गेंदों में कितने रन अपने स्कोर कार्ड में उछाल पाएंगे ये देखना जरूरी। Well, frankly, it's Paul who threw away his wicket because the ball was wide outside the off stump. He should have actually gone with the line and tried to hit it over extra cover, but he tried to pull it away down to mid wicket, and therefore was caught at long on. Because remember, the ball is going away, and one of the things you learnt when you played cricket is that when it's over your right shoulder, you don't try and play the cross-batted shot, and there goes, oh my goodness, and yet another wide there from Arshdeep Singh. So we've seen everything in this over. We've seen 4 wides, we've seen, I think, 2 wickets in this over. I don't remember. How many deliveries has he bowled already? 4 and 4, 8 into 10 deliveries already, and still 1 delivery to go. As it's been quite amazing, quite an eventful over. Not the over that his captain would like to see. Certainly wickets, yes, but not the number of wides. It's almost like giving them an extra over. Actually, that's what's happened in this particular over. You're giving them an extra over. This one is actually the way that Paul should have played that shot which he got out. It was wide outside the off stump, but played away down to extra cover, picked up his single. Finally, the 19th over comes to an end, and the West Indies are 140 for 6. So we were talking about 150. I think that's the type of score that they should be getting now. हम सब 150 से 160 के आंकड़े की बात की जा रही थी। अनुमानित जो स्कोर था वो यही था, लेकिन यहाँ से हर एक बीतती गेंद के ऊपर वेस्ट इंडीज़ की टीम के ऊपर में वो दबाव ज़रूर रहेगा, क्योंकि दोनों ही खिलाड़ी अब नए हैं और नए खिलाड़ियों को वो शुरुआत निकालना, हालांकि 1 ओवर के खेल में हर खिलाड़ी की कोशिश ये होती है कि वो बल्ले से जितने ज़्यादा रन क्रिएट कर सकें वो करने की कोशिश की जाए। शेफर्ड 3 गेंदों का सामना किया, 1 रन उनके बल्ले से आया। जेसन होल्डर ने सिर्फ 1 गेंद खेली है और उसी पे खाता खोलने में उन्हें कामयाबी भी मिली है। वो ओवर में पिछला जो ओवर हमने देखा था अर्शदीप का, जिसमें उन्होंने 4 वाइड कराई थी, 2 और यदि करा देते तो अनौपचारिक तौर पे 21 ओवर का ये मुकाबला हो जाता। सुनील, और आखिरी ओवर करने के लिए मुकेश, जिन्होंने अभी तक 2 ओवर में 15 रन खर्च किए हैं। To be able to get your mixture in, you have to get your variety, you have to get your lines, your lengths, but most importantly, not give away the extra deliveries. That is perhaps the cardinal sin, especially when you're bowling at the death. 141 for 6 as the next delivery is played away down to long off. Picks up a single. Both right-handed batsmen now at the crease. So in terms of actually finding your line, the Indian bowlers should not have that kind of problem as when you're bowling to a left-right-handed batting combination. And 5 deliveries, 5 legitimate deliveries now await the West Indies. 141 for 6. Can they hoik it up over 150? I think they'll be quite relieved if they're actually able to do that. Just that psychological mark of 150. As here goes Mukesh, that's wide again outside the off stump, but the slow delivery, intelligently played. Once again, tried to hit the ball too hard. Wasn't able to get his timing. The ball trickles away down to cover, picked up there, but they pick up a single. So 2 singles of 2 deliveries, which is pretty good going if you're bowling the last over of any T20 game, whether it's an international or a franchise game or whatever you're playing. 19.2 overs, 142 for 6. मिश्रण अच्छा कर रहे हैं मुकेश, गेंद की रफ्तार के साथ में अच्छा वो खिलवाड़ कर रहे हैं, जिससे उनकी रफ्तार को भांपना बल्लेबाजों के लिए इतना आसान नहीं। पिछली गेंद 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की थी मुकेश। 20वें ओवर की तीसरी गेंद अंपायर को क्रॉस किया, इस बार सीधे ब्लॉक हॉल के अंदर गेंद कर दिया। पॉइंट की दिशा में उसे खेला जरूर गया था, फील्डर वहां पर मौजूद है, लेकिन 1 रन आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। दोनों बल्लेबाजों की सबसे अच्छी जो चीज रही है वो ये है कि बहुत ज्यादा डॉट गेंदें जाने नहीं देते, आपस में वो तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सिर्फ 5 रन दोनों ने मिलकर बनाया, लेकिन आज वेस्ट इंडीज की टीम ने जो आखिरी के 10 ओवर में खेल खेला वो इसी तरीके का रहा है कि कम से कम स्ट्राइक चेंज की जाए। शेफर्ड अब स्ट्राइक पे 4 गेंदों का सामना किया है, 2 रन उनके बल्ले से निकले हैं। वेस्ट इंडीज का स्कोर 143, 6 विकेट के नुकसान पे है। 20वां ओवर गतिमान, 3 गेंदों का खेल खेला जाना बाकी है। फिलहाल हमारे स्क्रीन के ऊपर तिलक नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 2 अद्भुत कैच आज के इस मुकाबले में पकड़े हैं, आज बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। ओवर की चौथी गेंद ब्लॉक होल में सामना किया था शेफर्ड का, स्ट्रेट अवे देख लिया था कि शेफर्ड जो है वो अपने लिए रूम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी दायरे में ब्लॉक होल में गेंद करी और उसी बीच एक आसान सा सिंगल उन्होंने चुरा लिया। तो होल्डर अब आएंगे स्ट्राइक पे। सिंगल्स आखिरी के ओवर में सुनील ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं भारतीय गेंदबाजों को। I think very intelligent over. He's been following the batsmen, not allowing them to free their arms, and that is really for a man who's playing his first T20 international. Has bowled reasonably well, 19 runs in his 2.4 overs so far.
opened the attack and then came back for the 18th and then the last over. Always difficult overs to bowl, as he's sending a fielder back now at sweeper cover. And the four fielders within the ring are at short third, backward point, cover, and a man at, I think it is a short fine leg or 45. The other five out of the outfield, three in the on, two in the off. As here goes Mukesh Kumar on the fifth delivery of the last over of this game, of the West Indies innings, and this time gets the ball through his legs. Very, very lucky, but once again a good run there from, I think that's Chahal. Stops the ball from going through to the boundary and they just pick up 2 runs. So it was the lemon cut through the legs that Chahal gave a good chase to the delivery, to that ball that was flying down towards the long leg boundary, what am I saying? Long leg boundary, and was able to prevent the ball from going over. Just the 2 runs then, and that, the last delivery then coming up of the Windies innings is going to be 4. Are they going to get over that 150 mark? I will allow you, Ayush, to tell the listeners whether they indeed will. In fact, that's no ball, is it? बिल्कुल, पिछली गेंद नो बॉल करार की गई है. इसका मतलब है कि यहाँ से 2 और गेंदें हमें देखने को मिलेगी. There you are, and a free hit. So there you are. Just as we were praising him, as we said, the commentator's curse came into play right over there. Nevertheless, I think it's the first no ball, the only no ball of the West Indies innings. Yes, the first, yeah. There you are. तो उसी के चलते इस पारी में, वेस्ट इंडीज की इस पारी में अब 2 और गेंदें बची है. मुकेश जो अपना डेब्यू करते हुए नजर आ रहे हैं इस T20 फॉर्मेट में, अच्छा खासा उनका डेब्यू गया. पहले ओवर के अंदर 10 रन जरूर खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद आखिरी के 2 ओवर जो कि विशेषकर वो स्लॉग ओवर्स के तौर पे माने जाते हैं, 22 रन कुल मिला के दिए हैं. गेंदें 2 और बची है इस ओवर में. 147 वेस्ट इंडीज की टीम ने बना लिए हैं, 6 विकेट उनको गंवाने पड़े हैं. अब यहां से इन 2 गेंदों में कितने ज्यादा रन बनाए जा सकते हैं. होल्डर बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक के ऊपर है, 4 गेंदों का सामना किया, 5 रन अभी तक उनके बल्ले से निकले. तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे शेफर्ड, जिन्होंने 5 गेंदें खेली, महज 3 रन बनाए, जो कि स्लॉग ओवर्स के अंदर बहुत कम माने जाते हैं. थोड़ा सा समय लिया जा रहा है, फील्ड्स में परिवर्तन करने की कोशिश कर रही है भारतीय टीम, क्योंकि वो फ्री हिट है तो आप फील्ड्स के अंदर वो चेंजेस कर नहीं सकते, लेकिन समय लेके भाप जरूर सकते हैं कि किस तरीके की गेंदबाजी की जाएगी. थर्ड मैन की दिशा पे, शॉर्ट थर्ड मैन पे एक फील्डर है, पॉइंट की दिशा में एक फील्डर है, कवर की दिशा में एक फील्डर है. मुकेश ओवर की 5वीं गेंद लेकर अंपायर को उन्होंने क्रॉस किया, स्लोअर डिलीवरी थी, ऑफ साइड में उसे हल्के हाथों से पुश किया, कवर्स की दिशा में फील्डर मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिलेगा. मुकेश इससे संतुष्ट होंगे. होल्डर स्ट्राइक बदलेंगे, शेफर्ड को स्ट्राइक पे लाएंगे और 3 रन पे बल्लेबाजी करने वाले शेफर्ड, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है, वो इस इनिंग की आखिरी गेंद का सामना करेंगे. अभी तक वेस्ट इंडीज की बारी में 47 डॉट बॉल्स रही है, 10 उन्होंने चौके जड़े, 6 छक्के लगाए हैं. ओवर की आखिरी इनिंग की आखिरी गेंद 148 वेस्ट इंडीज के बन चुके हैं. क्या 150 का आंकड़ा पार किया जा सकता है? मुकेश अपने आखिरी ओवर, आखिरी गेंद, आखिरी 0.46 की है. जब शुरुआत हुई थी पावर प्ले के ओवर में, तब 9 की रफ्तार से गेंद रन बनाते हुए नजर आई थी वेस्ट इंडीज की टीम. आखिरी गेंद ब्लॉक होल के अंदर उसे किया है, उसे मिड विकेट की तरफ धकेला, 1 रन आसानी के साथ मिलेगा. फील्डर जब तक उसे फील्ड करके वापस थ्रो करते, तो उसी के साथ वेस्ट इंडीज की पारी समाप्त हुई है. 20 की समाप्ति के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर 149, 6 विकेट के नुकसान पे. मुकेश जिन्होंने 3 ओवर किए, 24 रन खर्च किए, अच्छा खासा आखिरी ओवर था. भारतीय टीम पूरी तरीके से संतुष्ट होगी जिस तरीके का ये आखिरी ओवर गया है. और यदि बात की जाए बल्लेबाजों की, तो ब्रैंडम किंग 28 रन उनके बल्ले से आए, मायर के बल्ले से सिर्फ 1 आया, चार्ल्स ने 3 रन बनाए, पुरन ने 41 रन बनाए, रोमन पॉवेल ने 48 रन बनाए, हिटमन ने 10 रन बनाए, रोमारो शेफर्ड ने 4 रन बनाए, होल्डर ने 6 रन बनाए. टीम ने 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया था. अर्शदीप ने 4 ओवर में 31 रन देके 2 विकेट लिए. मुकेश कुमार ने 3 ओवर में 24 रन देके कोई विकेट नहीं लिया. अक्षर पटेल ने 2 ओवर में 22 रन देके कोई विकेट नहीं लिया. चहल ने 3 ओवर में 24 रन देके 2 विकेट लिया. कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवर में 20 रन खर्च करके 1 विकेट लिया. और अब समय हो चुका है आप सभी को जोड़ने से हमारे स्टूडियो शो में, जिसका नाम है फ्री हिट 2020, जिसको मॉडरेट करेंगे साक्षी मंडवाल और उनका साथ देंगे दीपांशु. एक्सपर्ट रहने वाले प्रवीण सोनी और उनके साथ रविंद्र सिंह. बने रहिए ऑल इंडिया रेडियो पे.
टीम ने बल्लेबाजी कर ली है। 149 वो है अब 150 के आंकड़े को पार करने की। शुभमन गिल, ईशान किशन दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। हुसैन गेंद की गेम की पहली गेंद, इनिंग की पहली गेंद, और उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर के पास में। तब तक के एक आसान सा सिंगल हो जाएगा स्ट्रेट अवे। जैसे ही हम आके यहाँ पे बैठे हैं, मुकाबला शुरू हो चुका है, पहली गेंद की जा चुकी है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूँ आयुष शर्मा, मेरा साथ देने के लिए सुनील गुप्ता। स्वागत है सुनील। Yes, that ball kept slightly low on his leg stump, Ishan Kishan, and he was wanting to actually pull it much finer. Lucky it just went on the bounce of the man at deep fine leg, and he opens his account. India chasing a target of 150, which is not really considered to be too onerous in the T20 game, but it's a very slow pitch, as the Windies found out to their disadvantage. 149 is what they were able to put up. As here goes Hussain, and this one gets some turn, very nicely flighted and turning off the middle stump, 84 kilometers an hour, dipping on Shubman Gill, and a slip in place. Really good delivery as he dipped and then bounced and spun away from Gill, who was drawn into the forward defensive but missed the ball completely. That's why the slip is in place, and that's why they've opened with Akil Hussain. He got a packed offside field, absolutely packed offside field, and he's going to be bowling, to my mind, on or around the off stump and turning the ball away from the right-handed batsman. बिल्कुल भी रूम नहीं देना चाहेंगे शुभमन गिल। चौथी गेंद का सामना करने को तैयार है। एक खिलाड़ी स्लिप में लगा रखा है। हुसैन ने गेंद को फिर थोड़ा सा शॉर्ट रखा था, लेकिन जैसे ही सुनील ने बताया कि ऑफसाइड में फील्ड बहुत अच्छे खासे नंबर्स में तैनात है, वो चाह रहे हैं कि ऑफसाइड में बिल्कुल भी रूम दिया नहीं जाए शुभमन गिल को। ईशान किशन, जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर सिंगल लेके स्ट्राइक बदल ली थी, छोर बदल लिया था, तो 3 खाली गेंदें खेल चुके हैं शुभमन गिल भी। इस बार डाउन द लेग साइड गेंद थी, हल्के हाथों से उसे पुश किया। कवर्स की दिशा में कोई फील्डर, माफ कीजिए स्क्वायर लेग की दिशा में कोई फील्डर वहां पे रहेगा नहीं। दौड़ लगा के जब तक वहां पे फील्डर पहुंचेंगे, एक आसानी के साथ में सिंगल के बाद एक और रन भी ले लिया। तो फील्डिंग के अंदर यदि आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे, ये वो भारतीय युवा जोड़ी है जो इतनी आसानी से रन लेना या ना लेना के अंदर फैसले में ज्यादा समय लगाएगी नहीं। 5 गेंदों की अभी हमने देखी, 5 गेंदों की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 3 है। Here goes Hussain. This one once again dipping on the batsman and playing it away quietly towards backward point with the turn, and at the end of the first over, 3 without loss. The first ball that he bowled offline, which is on the leg stump, was played away down deep at wicket for 2. And otherwise he's been bowling to his field, Akil Hussain. Interesting to see that the Windies have begun with the spinner, because they recognize it is a slow pitch. There is a little bit of turn. It's a dry wicket, as was said actually at the pitch report. And so India then have their task cut out. It's not going to be an easy chase. You're not going to get those boundaries easily, because there is really no pace coming onto the bat. So finding your timing is going to be very difficult. 150 to chase, 3 without loss in the first over. Batsman opening for India, Ishan Kishan and Shubman Gill, left and right-handed batting combination. और दूसरी चीज़ ये भी है कि हमने वनडे क्रिकेट के अंदर देखा है कि भारतीय टीम के वो बल्लेबाज किस तरीके से बिखरे हैं कुछ दबाव भरी परिस्थितियों में। युवा ये टीम है। ओबेड मैकॉय दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 28 मैचेस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे T20 के रूप में इन्होंने खेले हैं। तो एक तरफ स्पिन, दूसरी तरफ फास्ट गेंदबाज लगाना, मीडियम पेसर को लगाना। ईशान किशन उनका सामना करेंगे, जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर सिंगल निकाल के अपना खाता भी खोला था। दूसरे ओवर की पहली गेंद अच्छे बाउंस के साथ में आई है, लेकिन गेंद में रफ्तार उतनी ज़्यादा नहीं है, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी। निकोलस पुरन, आमतौर पर हम देखते हैं साधारण सी हैट, लेकिन इनकी वो जो गोल सी टोपी वो एक अलग ही आकर्षण का केंद्र बनती हुई नजर आती है। टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा वो टोपी पहनी जाती है, लेकिन मैकॉय की पहली गेंद डॉट के साथ में शुरुआत निश्चित तौर पे एक अच्छी शुरुआत के लिए उम्मीदें की भी गई थी, और वैसी शुरुआत अपनी टीम को देते हुए भी नजर आए। किशान ने 1 रन बनाया, 2 गेंदों का सामना किया। ओवर की दूसरी गेंद बट अपने रनअप पे बरकरार। 150 का आंकड़ा है, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है। नहीं, डॉट डिलीवरी जाएगी स्ट्रेट अवे। गुड लेंथ डिलीवरी करी थी, टप्पा खाने के बाद अच्छे उछाल के साथ में वो स्टिकर के आसपास में ईशान किशन के बल्ले पे लगी। 150 का आंकड़ा। ट्रैक बहुत ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है, क्योंकि कभी गेंद उछल रही है। स्पिन भी हमने देखा, जब भारतीय टीम गेंदबाजी कर रही थी स्पिन भी उनको मिलती हुई नजर आ रही थी। सुनील, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? They have to really pick up the singles. I think running between the wickets is going to be absolutely key to this chase, because they're not going to get, as I said, pace off the wicket to be able to time well. This one getting a lot of swing outside the off stump.
And Ishan Kishan once again missing the ball completely as it goes through to Nicholas Pooran, standing behind the stumps. Played a good hand with the bat, did Pooran. And McCoy then 3 analysis in ODI cricket against India. Here he is now. Once again, you can see waiting for him after just no runs in this over so far from Obed McCoy. And this one past the man at short extra cover down to mid-off, and they were able to pick up a single, getting it off the bottom with the bat. Once again, a little bit of swing, which we really haven't seen in the Indian bowlers, with the Indian bowlers. Swing because he's actually bowling it right up to the bat and allowing the ball to swing. Left arm swing bowler, Bet McCoy, but also changes his pace very well. You can see over there actually how he got the ball to swing, because he was able to give the ball a little bit more air than the other ones were doing. They were hitting the deck, trying to use the seam or use the lack of pace in the wicket. Here he's actually trying to use the conditions with the new ball and getting the ball to swing a little bit. Ball to the right-handed Gill now with a slip in place, slip in a gully, I think. Just wait to tell you what the field placement is and see whether he can take the ball across the right-handed batsman. This one played on his leg stump and tries to turn it around the corner, perhaps gets a bit of pad on the bat or vice versa and goes away down to 45, but not for runs. So just the 1 run in the 5 deliveries so far of the second over. LBW की मांग जरूर कर रहे थे मकॉय, लेकिन जिस एंगल से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस छोर से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, यहाँ से कोई तो उसका बनता नहीं है। लेग स्टंप की तरफ गेंद थी, जरूर पैड्स के ऊपर गई थी शुभमन गिल, जो कि इतने आसानी से उस गेंद को खेल नहीं पाए। 4 रन महज भारतीय टीम ने बनाए। एक तरफ ताबड़तोड़ शुरुआत की थी वेस्टइंडीज की टीम ने, तो दूसरी तरफ एक थमी हुई सी शुरुआत मिली है भारतीय टीम को। गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, 2 रन उन्होंने बनाए, 6 गेंदों का सामना किया। ओवर की आखिरी गेंद, एक और शॉट पिच डिलीवरी, उसे खेल दिया कवर्स की दिशा, रन दौड़ लिया जाएगा। शुभमन गिल, ईशान किशन, सबसे पहली जो प्राथमिकता इन दोनों खिलाड़ियों की रहती है, चाहे फॉर्मेट कोई भी क्यों ना हो, वो ये है कि छोर बदले जाए ताकि फील्डिंग यूनिट के ऊपर आमतौर पे वो दबाव बने जिसकी आवश्यकता सबसे ज्यादा। 2 की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 5 बिना किसी नुकसान पे। 5 गेंदों का सामना करने के बाद किशन के बल्ले से 2 रन आए, तो वहीं 3 रन शुभमन गिल ने बनाए हैं। Yes, well, not finding it too easy, the Indian batsmen. We haven't seen any boundaries. We haven't seen anything really that should trouble the West Indies team so far in terms of allowing India to get off to a cracking start. So the pressure will build because, as we've seen, it was so difficult for the Windies batsmen to pick up the pace, and every time they tried to pick up the pace, they lost a wicket. And so I think India will have to keep that in mind to say, okay, we've got to pick up those singles, but again, cannot afford to get too far behind the run rate. Once again, excellent delivery outside the off stump, spinning slightly away, and all Gill can do is pay it away down to cover point, not for runs. In the third over, just 5 without loss. Gill 3 of 8 and Kishan 2 of 5. The second delivery of his second over from Akil Hussain, the left arm spinner. Down the wicket goes Gill and is stumped by a mile, beaten by the turn, beaten by the flight, and that's exactly the type of start that the Windies wanted, Ayush, and that is what they were setting him up for, because they knew that he was going to get frustrated, go down the wicket, and a very, very good wicket picked up there by the left arm spinner Akil Hussain. लेफ्ट हैंड स्पिनर पूरी तरीके से अपने उस स्पिन के साथ में छकाया, और विकेट कीपर तो पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। यदि आप कदमों का इस्तेमाल करते हैं तो सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो यही है कि यदि एक बार आपने गेंद को भांपने में गलती कर दी तो फिर विकेट कीपर गलती नहीं करेंगे। सिर्फ 3 के निजी स्कोर पर शुभमन गिल का विकेट गिरा। भारतीय टीम का पहला विकेट पतित हुआ। सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए आएंगे, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है, ये ख्वाबों भरी शुरुआत रही है हुसैन के लिए। अपना दूसरा ओवर करने के लिए आए थे और विकेट लेकर गए हैं, एक बड़ा विकेट, शुभमन गिल का विकेट। हम सभी जानते हैं जिस तरह के, जिस स्तर के खिलाड़ी शुभमन गिल है, वो खेल की गति को बदल सकते हैं, कभी भी वो रफ्तार पकड़ सकते हैं, लेकिन अब वो खतरा टल चुका है। सूर्य कुमार यादव एक और ताबड़तोड़ आतिशी बल्लेबाज अब मैदान की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। 2.2 ओवर का खेल अभी तक खेला गया है, जिसमें एक भी चौका, एक भी छक्का भारतीय टीम के बल्लेबाजों से नहीं आया है। पूरी तरीके से दबाव बनाने में कामयाबी मिली है वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को। आंकड़े सूर्य कुमार यादव के ये बयां करते हैं कि 49वां अपना T20 मैच खेलने के लिए आए हैं। 1675 रन इन्होंने बनाए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है स्ट्राइक रेट। 175 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं सुनील।
Well, you'll need all of it now, I think, in this particular game. If India have to get the other time. You see over there, he was beaten in the air, all ends up as the ball dipped on him. Excellent delivery there from Hussain, who's been bowling really well. Even in the first over, beat him one that turned and bounced from just outside the off stump. And this time finally getting his man. So, Shubman Gill out then, stumped by Nicholas Puran off the bowling of Akil Hussain just for 3. And it is going to be Suryakumar Yadav. Oh, beg your pardon, it's Johnson Charles. We've been saying Nicholas Puran. Thank you, Sharma. It certainly looked like him, but everybody with those hats and all that and the specs on. So, sorry, listeners, it is Johnson Charles, but they do keep switching keepers in this format of the game. And we've seen, of course, Puran kept in the IPL as well. But nevertheless, here goes Akil Hussain with one scalp under the belt, slip in place, comes in once again just outside the off stump and turning further away and played away down to that clinching field in the offside. You've got a backward point, you've got a cover point, you've got a short cover, you've got an extra cover, and you've got a man at mid-off and a slip. So you've got a 6-3 field really that faces the batsman. As long as he doesn't lose his line, he is bowling very, very well, is Akil Hussain. 1 for 3 in 1.5 overs, and this time once again gets the ball to turn. Good fielding there as he ran away to his right from point and stopped the ball from going through to the boundary. Much better fielding from the Windies in this particular over. 2 गेंदें इस ओवर में बची है. अकील हुसैन की गेंदबाजी की जितने दाद दी जाए उतनी कम. महज 3 रन उन्होंने खर्च किए हैं. एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट शुभमन गिल के रूप में भी उन्होंने चटका है. अभी सूर्यकुमार यादव जिन्होंने 2 गेंदों का सामना किया और खाता नहीं खुला, वो बल्लेबाजी कर रहे हैं. ओवर की 5वीं गेंद डाउन द लाइन उसे खेल दिया मिड विकेट की दिशा में, कलाइयों का इस्तेमाल करके पहली बाउंड्री ना सिर्फ सूर्यकुमार यादव के लिए बल्कि भारतीय टीम के लिहाज से भी वो पहली बाउंड्री थी. और स्पेक्टेटर्स जो दर्शक दीर्घा में मौजूद थे उन्होंने झूम के इस बाउंड्री की सराहना की है. कलाइयों का इस्तेमाल करके डाउन द ट्रैक गए, क्रीज का इस्तेमाल किया. सूर्यकुमार यादव ने वो जो गैप था वो ढूंढा और उसी के चलते उनको अपना खाता खोलने में सफलता मिली है एक अद्भुत से चौके के साथ. अकील हुसैन जो अभी तक दबाव बनाने में कामयाब थे, पिछले चौके के साथ थोड़ा सा दबाव रिलीज हुआ होगा. ओवर की आखिरी गेंद एज जरूर लगी थी. पुरन जो कि विकेट कीपर है वो गेंद तक पहुंचेंगे जरूर, लेकिन तब तक एक आसान सा रन दोनों ही बल्लेबाज निकाल भी लेंगे. सूर्यकुमार यादव 5 के स्कोर के ऊपर हैं. किशन 2 रन उनके बल्ले से आए हैं. भारतीय टीम का स्कोर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पे. और जिस तरीके की ये यूनिट रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम, हम जानते हैं कि मैचेस में उलटफेर करने के लिए जानी जाती है. जैसा ओडीआई का रिजल्ट हमने देखा था सुनील, कि पूरी तरीके से ताश के पत्तों की तरह भारतीय ये जो युवा टीम है उसको बिखरते हुए भी देखा है. तो क्या वो पहला विकेट शुरुआती क्षणों में चले जाना अच्छे संकेत नहीं है भारत के? Losing early wickets is never good, but again, I must tell our listeners, it is Nicholas Puran who is keeping it, not Johnson Charles. And I gave a glare to our scorer, Sharma, who is giggling nervously. But we all make mistakes, and of course, when you're doing commentary in a studio off the television, you can always make mistakes like that. So it is Puran who did get the stumping, but India is nevertheless still 1 down, not 2. And that was Shubman Gill. But yes, absolutely. Now we're going to see Alzari Jose. So actual good pace after the slow left ham spin. But you have to hand it to Hussain. He was very, very good. Bowled by and large to his field. The only time that he went offline when he bowled on the leg stump was the one that was taken away down to log on for 4 by Suryakumar Yadav. Here goes Joseph. Bowling to Yadav, and that's wide out down the leg side. And as I was praising him, starts off with a wide. India will take that 11 for 1 after 3. Target not onerous, as I said, 157.5 runs and over. You should be able to get that in a T20. But again, early wickets on a slow deck, and it remains to be seen whether the Indian batting will implode. It is a young Indian batting lineup. We've got a debutant in Tilak Varma. We've got a debutant in the bowlers, Mukesh Kumar, as Joseph now turns around and is going to be taking up the bowling attack. First ball wide. What's the second going to be? He's bowling Suryakumar Yadav for 5. Comes in and bowls it once again down the leg side, not finding his line at all. And the second wide. So what Arshdeep Singh did for the Windies, Alzari Joseph is just giving us back the present in the 4th over of this particular game. 2 wides on the trot. लेकिन अर्शदीप के लिए कहानी थोड़ी अलग थी क्योंकि उन्होंने शुरुआत दे दी थी. उनके आंकड़े कुछ बयां कर रहे थे. यहाँ अलजारी जोसेफ जो शुरुआती 2 गेंदें की है उसमें 2 रन खर्च किए हैं, लेकिन गेंद औपचारिक तौर पे अभी तक एक भी हुई नहीं है.
औपचारिक तौर पे सिर्फ 3 ओवर समाप्त हुए हैं। चौथे ओवर की शुरुआत का अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं। 12 रन भारतीय टीम का स्कोर है। हजारी जोसेफ तीसरा ये प्रयास है, पहली ये सफल गेंद है, डाउन द ग्राउंड अच्छी तरीके से ड्राइव किया सूर्य कुमार यादव। 2 फील्डर दौड़ लगा जरूर रहे लेकिन चौका मिलेगा। दूसरा चौका सूर्य कुमार यादव के बल्ले से जो कि उन्हें पहुंचा देगा 9 रन के स्कोर पे। 5 गेंदों का सामना करके भारत का स्कोर 16, 1 विकेट के नुकसान पे। 2 लगातार वाइड की थी और उसके बाद जो पहली गेंद सटीक पड़ी उस पे पड़ा चौका। सुनील, Well, he was waiting for pace. That's exactly what the Indian batsmen are waiting for, and that is pretty good pace. It's 135 plus, and when you get that pace, and there's nothing on the ball at all, no movement in the air or off the seam, and you hit straight through the line. That's all you're going to get. You're going to get 4 runs. That's what he did. So 2 boundaries already in his 9 from Surya Kumar Yadav. Here goes Joseph, comes in and bowls and gets the ball to move. That is an excellent delivery, making up for whatever I said right now. That ball that was on the off stump and then moving off the seam at the very last moment and defeating that forward push there by Surya Kumar Yadav. Excellent delivery. So lucky that he didn't get the edge as it flew through to Nicholas Poole. And that's why there's a slip in place. That's why he's very highly rated, is Alzari Joseph. As Surya Kumar Yadav considers his option and says, well, I got a nice boundary. You know what happened to me in that last delivery? I was beaten, all ends up outside the off stump in that corridor of uncertainty. Here he goes, and this time waits for the ball and plays it away just to the right of point, but runs around, picks it up. Once again, bowling to this field because it is a predominantly offside field set by the captain. I think they've thought about this strategy. We're going to bowl on one side of the wicket and see whether the Indian batsman can pierce that field. I think that's what they're actually trying to do. 3 ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है। ओवर की चौथी गेंद करने के लिए जोसेफ तैयार जरूर होंगे और अभी हम जो देख सकते हैं वो दृश्य ये हमें बता रहे हैं कि कुलदीप जो कि अच्छी गेंदबाजी करने के बाद में अपने साथी से कुछ चर्चाएं करते हुए नजर आ रहे हैं। चौथे ओवर की चौथी गेंद टप्पा खाने के बाद फिर हल्का सा बाहर की तरफ वो कोण पकड़ा है। लगातार आउट स्विंग के ऊपर निर्भरता दिखाते हुए अभी जोसेफ नजर आ रहे हैं। हालांकि उस गेंद के ऊपर रन कोई भी नहीं मिलेगा भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को। 1 चौका जड़ने के बाद 3 अच्छी गेंदें, 3 डॉट डिलीवरी करके जोसेफ ने वापसी दिखाई जरूर है और पूरी तरीके से वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव पे। जो करंट रन रेट है वो 4.36 की नजर आ रही है और यहां से भारतीय टीम को जिस रन रेट से रन बनाने हैं वो 8.20 है। हर बढ़ती गेंद के साथ, हर बढ़ते ओवर के साथ भारतीय टीम के ऊपर दबाव पड़े। गेंद अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट पिच डिलीवरी ऑस्टम से बहुत ज्यादा बाहर थी, पॉइंट की दिशा में उसे खेल दिया। 1 टप्पे के साथ में फील्डर के सीधे हाथों में गेंद गई है। सूर्य कुमार यादव जिन्होंने लगातार 4 डॉट गेंद खेली अब 9 रन पे आ चुके हैं 9 गेंदों का सामना करने के बाद। तो नॉन स्ट्राइकर एंड पे ईशान किशन है जिन्होंने 2 रन बनाए 5 गेंदों का सामना किया। Yes, that's right. And it's the quickest spell actually in this game so far. 141 Ks, 144 Ks, but the ball not coming onto the bat. And that is the most important thing, that you're expecting the ball to come onto the bat at that particular pace and the ball sticks in the pitch and you lose your timing. Last ball of the 4th over, and that one has been hoiked over the cover boundary. It's gone all the way, I think, for 6 from certainly what we are looking at over here. Indeed it is. It is the first 6 of the Indian innings, and it was short, it was wide, and Surya Kumar Yadav needs no invitation better than that as he hit it over the cover boundary for 6 runs. The first time I saw that happening actually well, many years ago at the Firozshah Kotla, as it was known then here in Delhi, when Chris Cowdery, not Colin Cowdery but his son Chris Cowdery, hit Kapil Dev over that over the cover boundary for 6, and normally 6s were in the onside or over long off long on. That was the first time I saw it, and of course Surya Kumar Yadav is a great exponent of that particular shot. Waited for the ball, waited for it to bounce, and then played it away in that same direction rather than trying to hit it across the line. Therefore was able to get that 6. He moves on to 15 and India 22 for 1. मनोज कुमार जो कि हमारे स्ट्रैटेजियन हैं उन्होंने ये साझा किया है कि 1984-85 की वो सीरीज़ थी, लेकिन पिछला वो छक्का जो सूर्य कुमार यादव के बल्ले से निकला, बहुत सारा रूम था, हवा में खुद मौजूद थे और एक अच्छी खासी छलांग लगा के उन्होंने वो छक्का लगाया था। मकॉय कंटिन्यू करेंगे अपना अगला ओवर और पारी का 5वां। ईशान किशन के सामने पहली गेंद अच्छे उछाल के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में गई है। डॉट के साथ शुरुआत की, पहले ओवर में महज 1 रन खर्च किया था मकॉय ने। इस ओवर में डॉट के साथ शुरुआत 134 की रफ्तार के साथ। भारतीय टीम
और वेस्टइंडीज़ की टीम में जो सबसे बड़ा फासला है गेंदबाजों के बीच में वो रफ्तार कर रहा है। दोनों ही टीम के गेंदबाजों में रफ्तार रही है, वो फासला रहा है, लेकिन वो अच्छा खासा उछाल मिल रहा है वेस्टइंडीज़ के गेंदबाजों को। ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करता हुआ नजर जरूर आया, लेकिन अभी तो एक गेंद हुई है इस ओवर की, वो भी डॉट रही है। ईशान किशन सामना करने को तैयार है। ओवर की दूसरी गेंद अंपायर को क्रॉस किया, इस बार डाउन द लेग साइड है, पैड पे गेंद लग गई है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे फील्डर दौड़ के जब तक गेंद को फील्ड करेंगे तब तक दोनों खिलाड़ी छोर जरूर बदल लेंगे और भारतीय टीम का स्कोर बढ़ेगा। लेग बाई का इशारा भी आ चुका है, बढ़कर जा पहुंचेगा 23 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ईशान किशन जो कि 2 के स्कोर पे थे वो स्कोर कार्ड में ऐड जरूर होगा, लेकिन ईशान किशन के स्कोर कार्ड में नहीं, तो वो 2 पे ही रह जाएंगे। 7 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। अब स्ट्राइक पे आ जाएंगे सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने अपने बल्ले से 15 रन बनाए, 10 गेंदों का सामना किया। मैकॉय की अद्भुत गेंदबाजी अभी भी जारी। Yes, both bowling at well over 135 clicks, both Obed McCoy and Alzari Joseph, but not really finding, I think, their radar so far. Surya Kumar Yadav, and now a slip is out. There's no slip there because they recognize the danger that this man poses to them. 23 for 1, chasing a target of 150 in the middle of the 5th over. As here goes Obed McCoy, comes in, bowls that very nicely, very nicely bowled, slow Yorker on the off stump, defeated his intent of an attacking shot there. He acknowledges it. Surya Kumar Yadav, after 135, 140 clicks, suddenly to bring it down to 123. You can see that's what he's really known for, change of pace. Here's Obed McCoy. And but nevertheless was able to pick up a single as they scrambled between the wicket. Ball went off the bottom of the bat and trickled away down to where, let's say, silly mid-off or thereabouts would have been. This time it's short and hit. You try to hit it over long off and the ball has gone. Where has it gone? Has it gone to third man or has it gone to deep backward point? Remains to be seen. Whatever it's done as a boundary, but not in the direction that Ishan Kishan wanted. Where has it gone? Have you been able to make out? कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इतना तो मुझे समझ में आया। ईशान किशन ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, गेंद ने टॉप एज लिया और वो ताबड़तोड़ शॉट का जो टॉप एज था वो थर्ड मैन की दिशा में एक टप्पे के साथ में सीधे गया है। चौका भारतीय टीम को मिलेगा, चौका ईशान किशन को मिलेगा। भाई उससे नाखुश है और होंगे भी, क्योंकि ये भाग्य का चौका था। इतना ज़्यादा सटीकता के साथ में, कंट्रोल के साथ में खेला गया वो शॉट था नहीं, लेकिन ईशान किशन को सख्त दरकार थी, क्योंकि पिछले लंबे समय से वो 7 गेंदों का सामना करके महज 2 रन उनके बल्ले से निकले थे। अब 6 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं। 28 भारतीय टीम का स्कोर है। इस बार कंट्रोल शॉट था जरूर, लेकिन फील्डर मौजूद है। पहला विकेट मिल चुका है यहाँ पे मैकॉय को। भारतीय दूसरा विकेट पतित होगा 28 के स्कोर पे। किशन बाहर जाएंगे 6 रन के इंडिविजुअल स्कोर पे। मैकॉय जिन्होंने लगातार अपनी रफ्तार के साथ में धावा बोल रखा था, इस बार 128 की रफ्तार पे एक कंट्रोल लाइन और लेंथ के साथ में किशन को किया बाहर। Yes, well, down the track he went, but once again the ball did not come onto the bat. It was just 128 Ks, did not make room or how should I say, cater to the slower delivery both through the air and off the pitch, and straight down the throat of the man fielding at mid-on within the circle. Out for 9s, both the openers back in the hutch, and we're going to see, are we going to see the debutant who took a couple of excellent catches in the outfield? Indeed it is. Tilak Varma, for his first bat in India colours, has come to the crease as India totter just a shade at 28 for 2. Left-handed Tilak Varma made a mark in the IPL, that's why he's in the Indian team. Saw a couple of his innings and played really well, but coming in an international match, making your debut, very, very difficult. Always the butterflies in the stomach, the nervousness always there. Once he gets his first couple of runs, I think he'll settle down. T20 करियर 48 मैचेस इन्होंने खेले हैं डोमेस्टिक लेवल पे। 1418 रन इनके बल्ले से निकले हैं और 142 का स्ट्राइक रेट है, बेस्ट 84 का। इसका मतलब क्षमता है इस खिलाड़ी में, और वो लेफ्ट एंड राइट हैंड कोऑर्डिनेशन जिसकी आवश्यकता भारतीय टीम को लगातार थी, क्योंकि यदि 2 तरीके के बल्लेबाज क्रीज के ऊपर मौजूद रहते, अपनी अंगुलियों को फेरा था, वो कट्टर का इस्तेमाल किया था मैकॉय ने अपने पिछली गेंद में, जिसका ईशान किशन सही से जवाब नहीं दे पाए, और उन्होंने मिड विकेट की दिशा में फील्डर पोवेल को पाया, जो कि टीम के कप्तान भी है, और उसी के चलते वो विकेट भारतीय टीम के सामने नजर आया। 2 विकेट जा चुके हैं, 28 का स्कोर है। तिलक वर्मा पहली गेंद का सामना करेंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। गेंदबाज होंगे मैकॉय, जो कि ओवर की आखिरी गेंद लेकर आएंगे, 5वें ओवर की आखिरी गेंद। वर्मा तैयार है, तो तैयार है मैकॉय भी। रन अप पे अग्रसर, स्लिप मौजूद, शॉट पे डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद में अंदर आई, रन लेने में इंटरेस्टेड थे वर्मा, लेकिन ओपोनेंट तरफ से दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव ने मना किया, तो पहली गेंद डॉट रही है।
और साफ पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा उनके अंदर वो एक्साइटमेंट था कि पहली गेंद के ऊपर रन लेके कम से कम वो पहला आंकड़ा, वो पहला मार्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर प्राप्त। First international game, any game, but certainly international. Good delivery. Ball coming in from outside the off stump, left arm over the wicket to the left-handed batsman, and was able to get his bat down just in time and tuck it away towards cover. But cover was quickly off the blocks and prevented any single being taken. I think every team recognizes, especially when you have a debutant in, that to try and keep him off that single or getting off the mark increases his nervousness as it goes on, and always the chance of him playing a false shot. So I think every team understands that, the importance of the first run in international cricket for anybody, and will try their best not to allow him to get that. Here goes Alzari Joseph then in his second over, comes in bowls and beats Surya Kumar Yadav all heads up completely as he walked into a sort of walking push, and the ball then going outside the off stump and then moving away off the seam, and you could see a little puff of dust as well as it went through to Puran. And Surya Kumar Yadav, he acknowledges the good delivery there from Joseph, who's finally found his radar. Excellent delivery over there, and India, as I said, are not going to find it easy in this particular game. बिल्कुल मुश्किलात का सबब बनता हुआ ज़रूर नज़र आया है भारतीय बल्लेबाजों के लिए। जब जब वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाजों ने वो सवाल पूछे, ओवर की दूसरी गेंद, इस बार उसे ऑफ साइड में धकेला है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है, आसानी से उसे फील्ड करेंगे और कोई रन नहीं मिलेगा। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी में हमने यही चीज़ देखी, एक रन मिलेगा, माफ़ कीजिएगा, यही देखिए सूर्य कुमार की बल्लेबाजी में कि आमतौर पे चौके छक्के लगाते हैं और उसके बाद स्ट्राइक रोटेशन में थोड़ा सा कम से कम आज के इस मुकाबले में उन्होंने स्ट्राइक बहुत ज़्यादा रोटेट की नहीं है। लेकिन अब स्ट्राइक पे आ जाएंगे तिलक वर्मा, जिनको अभी भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में खाता खोलना बाकी है। हालांकि सिर्फ एक गेंद का सामना किया है और वो भी डॉट गेंद थी। छठे ओवर की तीसरी गेंद, जोसेफ गेंदबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम का स्कोर 29, 2 विकेट के नुकसान पे। एक स्लिप लगा रखी है लेफ्ट हैंडेड तिलक वर्मा के लिए, और फील्ड में भी कई सारे परिवर्तन किए जा रहे हैं। मिड विकेट की दिशा में एक फील्डर मौजूद है, स्क्वायर लेग की दिशा में एक फील्डर मौजूद है। तिलक अपने पहले रन की तलाश में, तो जोसेफ जो कि 13 रन खर्च कर चुके हैं अपनी करी हुई 8 गेंदों में। शॉट पे डिलीवरी थी, इसे खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा से, मिड विकेट की दिशा के ऊपर से 6 रन। क्रिकेट तिलक वर्मा ने जो 6 रन क्लेम किए हैं और जिस शॉट के साथ में वो कलाइयों का इस्तेमाल उन्होंने करके दिखाया है, 81 मीटर का वो छक्का ज़ारो जोसेफ की रफ्तार के सामने। Yes, the slog sweep virtue from outside the off stump. I'm going to ask Mukesh Kumar to tell us which other batsmen have scored their first runs with the 6 in international cricket. Rishabh Pant, there you are, another left-handed batsman. And? Salil Ankola, the fast bowler. Yes, well, there you are. Here goes Tilak Varma, once again pulled away magnificently from outside the off stump, swiveling as he did it down to the in fact another 6, so 2 sixes in a row. I mean, you've started your career with 2 sixes, young man. You should be the proudest man. 12 of 3 deliveries, and looked completely in control of those 2 shots, completely in control, picking up the line, picking up the length, and most importantly picking up the pace of the wicket. गेंद की रफ्तार को भांपा है और पिच के उछाल को भी उन्होंने भांपा है। पहली गेंद शुरुआत करना चाह रहे थे एक सिंगल के साथ, लेकिन उसके बाद किस्मत को जब मंजूर था कि उनके जो टैलेंट है उससे निकल के आए, वो तरकश से वो जो 6 रन के रूप में पहले रन आए, तो 3 गेंदों का सामना किया है। 12 रन तिलक वर्मा ने बना लिया। 41 भारतीय टीम का स्कोर है, 2 विकेट जा चुके हैं। लेकिन इस ओवर छठे ओवर में 2 गेंदें और बाकी है। जोसेफ, जिनके आंकड़े अच्छे खासे नजर आ रहे थे पिछली 2 गेंदों में, उन आंकड़ों में परिवर्तन हुआ है। अब 25 रन उन्होंने अब तक खर्च कर दिए हैं। ओवर की 5वीं गेंद, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते, ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए नजर जरूर आए और एंगल बना के गेंद बाहर की तरफ जा रही थी। गुड लेंथ डिलीवरी होती है, चाहे क्रिकेट का कोई भी फॉर्मेट हो, वो टेस्ट मैच हो, वो वनडे क्रिकेट हो, वो T20 क्रिकेट हो। आमतौर पे वो आशंकाओं के गलियारों में आप वो सवाल पूछ सकते हैं बल्लेबाजों के सामने। What was good about that from Tilak Varma is that he didn't get carried away and go after that ball that was outside the off stump. Very good thinking, presence of mind, controlling. When he's trying to get you out caught at slip or behind, you let that ball go. Very good thinking by the young man. छठे ओवर की आखिरी गेंद,
as he tried to pick up a single. After that, wow, what a comedy of errors. What a comedy of errors. He played it way down to backward point, tried to pick up a single, sent back by Surya Kumar Yadav. Was actually able then to finally pick up 4. I think that's what it went, because it went to the boundary the other side. Let's see this comedy of errors once again. There goes the throw, completely missed the stumps, completely missed the man who was backing up down to the boundary. 4 to Witters. What are his first 3 scoring strokes? 6, 6 and 4. Tremendous. And those 4 from overthrows, not from really off his bat. But nevertheless, he'll take it. 16 runs, am I right? 16 runs in 4 deliveries, is it? That's right. In India, 45 for 2 at the end of the power play. The West Indies were 54 for 2 at the end of their power play. Thank you, Sharma. अल्जोर जोसेफ जो कि वो पिछली फील्डिंग की जो गलती हुई थी उसके चलते बिल्कुल भी खुश नहीं थे, पूरी तरीके से निराश थे अपने साथी फील्डर्स के साथ, और वो गुहार लगाते हुए नजर आए थे कि जिस तरफ फील्डर मौजूद नहीं है, जहाँ बैकअप मौजूद नहीं है, वहाँ थ्रो लगाने की आवश्यकता थी क्या। लेकिन उसी के चलते अब भारतीय टीम को 105 रन यहां से चाहिए। 84 गेंदों का सामना उन्हें करना है। भारतीय टीम के पास में 8 विकेट अभी भी शेष है और गेंदबाजी में परिवर्तन, जेसन होल्डर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पावर प्ले के बाद होल्डर को गेंदबाजी पे बुलाया गया है, जब भारतीय टीम ने वैसे भी 45 रन बना लिए। लंबे कदकाठी के होल्डर अच्छे बाउंसर्स के लिए जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा तेज तर्रार गेंदबाजी करते नहीं है। 218 T20 मैचेस खेले, 205 विकेट चटके हैं, इकोनॉमी 9 का है जो कि थोड़ा सा महंगा माना जाता है। ओवर की पहली गेंद डाउन द लेग साइड, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने फ्लिक करने की कोशिश की थी, ग्लांस करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद से कोई संपर्क नहीं। और एक डॉट के साथ, एक वाइड के साथ जेसन होल्डर ने अभी अपने ये जो पहला ओवर करने के लिए आए हैं उसकी शुरुआत की है। लेकिन तो हमने एल्जारो जोसेफ को वाइड के साथ शुरुआत करते देखा, जेसन होल्डर को वाइड के साथ शुरुआत करके देखा है। और भारतीय टीम की करंट रन रेट अब बढ़ चुकी है, 7.67 की हो चुकी है। यहाँ से जिस रफ्तार से रन बनाने वो 7.43 है। 7वें ओवर की पहली गेंद शॉर्ट गेंद थी, उसे कट करना चाह रहे थे, बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्डर मौजूद थे और तब तक 1 रन आसानी से मिलेगा सूर्य कुमार यादव को। 18 पे पहुंच जाएंगे वो, 14 गेंदों का उन्होंने सामना किया और अब स्ट्राइक पे आ जाएंगे। भाग्य के धनी कह लीजिए या फिर कलाकात्मक खिलाड़ी तिलक वर्मा, जिन्होंने आज इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआत की है। और जो पहले रन इनके बल्ले से आए थे वो 6 रन के तौर पे थे। दूसरी गेंद पे भी इन्होंने 6 रन बटोरे और फिर वो जो पिछले ओवर की आखिरी गेंद थी, भाग्य का साथ जरूर मिला हो, लेकिन 4 रन इनके स्कोर कार्ड में वहां भी दिख नजर आएंगे। 16 पे पहुंच चुके हैं, 5 गेंदों का सामना किया है। भारतीय टीम के सामने चुनौती 150 रन की है, जिसमें से 47। Yes, well, cricket's a cruel game. Alzari Joseph bowled a very good delivery, wasn't going to give away any runs, and then the overthrows go against his name in the book. As that ball is played very well by Tilak Varma. It was slightly slow outside the off stump, played it just to the right of the man at cover, and they scrambled through for a single. So the running between the wickets has been very, very good between these two. And Surya Kumar Yadav and Tilak Varma can pay for the same proclivities very well. And really, if any batsman has announced his arrival in international cricket, it has been this lad, Tilak Varma. Fantastic running catch, and now 2 sixes on the trot. This time it's picked up by Surya Kumar Yadav and played away down towards deep mid wicket. But there is a fielder out there because it is well past the power play, just for the single. And India move on to 49 for 2 in their chase of 150. 17 is Tilak Varma. Big one is 17. 17-18 is Surya Kumar Yadav. 49 for 2. Sorry, beg your pardon. Yes. Tilak Varma 17, Yadav on 19. Waiting then for the next delivery in this over from Jason Holder. Played away down to mid-wicket, who comes in quickly, prevents any runs being taken as the score remains on 49 for 2 in the middle of the 7th over. India chasing not a very stiff target, 150, but having lost 2 wickets, both the openers back in the hutch. That is Shubman Gill and Ishan Kishan. सूर्य कुमार यादव, उनके साथ में तिलक वर्मा
आपस में हर गेंद के बाद बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और यही फ़ायदा होता है यदि आप फ्रेंचाइजी क्रिकेट में एक दूसरे के साथ खेलें, एक टीम के लिए खेलें, तो वो तालमेल जो शुरुआत से ही आपके साथ में रहता है। 7वें ओवर की 5वीं गेंद, होल्डर कोण बना के बाहर की तरफ जा रही थी गेंद, जिसे हल्के हाथों से खेला। फील्डर मौजूद है कवर्स की दिशा में जो कि गेंद को फील्ड करेंगे। कोई रन मिलेगा नहीं तिलक वर्मा को जो 17 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जेसन होल्डर ने अच्छा मिश्रण किया अपनी गेंदबाजी की रफ्तार में। लंबे कदकाठी के हैं, उछाल से वो छकाने की कोशिश करते हैं, बल्लेबाजों को परेशानी करती है उनकी रफ्तार भी। आमतौर पे 130-135 की रफ्तार में गेंदबाजी करते हैं। उनकी स्लोवर गेंद 110-111 की होती है। फील्ड में परिवर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं तिलक वर्मा के लिए जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। अब मिड विकेट को भी पीछे भेजा गया है। लॉन्ग ऑन की दिशा में भी एक खिलाड़ी मौजूद है क्योंकि ताबड़तोड़ तरीके से शुरुआत की थी इस खिलाड़ी ने अपने स्कोर कार्ड की, तो हो सकता है कि वो दबाव जेसन होल्डर के ऊपर हो। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद है, अभी तक 5 गेंदों में महज 4 रन खर्च किए जेसन होल्डर ने, जिसे अच्छा खासा आंकड़ा माना जा सकता है T20 फॉर्मेट में। ओवर की आखिरी गेंद, एक और शॉट डिलीवरी, कटर मारी थी, थर्ड मैन की दिशा में खेला जरूर है। फील्डर वहां पे मौजूद थे जरूर, लेकिन जब तक वो डाइव लगा के गेंद तक पहुंचते गेंद उनको बीट कर गई। लेकिन डीप में एक और फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट रहना, 2 रन इनफैक्ट मिलेंगे या नहीं। एक ही रन के साथ ओवर की समाप्ति। तो 7 की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 50 रन 2 विकेट के नुकसान पे। Yeah, good delivery. It was the cutter, and he tried to play it onto the onside, got a leading edge, and the ball went away down to third man. And then he actually admonishes himself, as Tilak Varma saying, no, that was a false shot. That's not the type of shot I should have played. But it shows his confidence and his own abilities, and that he sets a very high standard for himself, and that is very, very important. The West Indies 50 came in 5.5 overs. And India's 50 has come in 7 overs. So as insofar as the run rate goes, India behind the Windies, but then the Windies were pegged back by some excellent bowling by Kuldeep Yadav and Hardik Pandya. And it remains to be seen now. Romario Shepherd, he's going to be bowling his in and bowls to Varma. That's wide outside the off stump as he tries to play it away over extra cover. Ball coming so slowly onto the bat that he was through that shot, could have played 2 and took the inside edge and went away down to mid-on rather than extra cover where he was trying to hit the ball. Nevertheless, picks up a single, moves on to 18, and Surya Kumar Yadav, who's on 19, is going to be taking strike to Romario Shepherd. और ये सोच भी अच्छी है क्योंकि उन्होंने देख लिया कि तिलक वर्मा वो लेग साइड में थोड़े ज़्यादा स्ट्रांग है, तो गेंद को जितना ज़्यादा उनसे दूर रखा जा सके एक बेहतर रणनीति। लेकिन अब स्ट्राइक पे आ चुके हैं सूर्य कुमार यादव जो कि 19 रन के स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 गेंदों का सामना किया है, 51 पे 2 भारतीय टीम का स्कोर है। 8वें ओवर की दूसरी गेंद, शेफर्ड गेंदबाजी के लिए ऑफ स्टंप के बहुत ऊपर से गेंद, ज़्यादा ऊपर से गेंद गई नहीं थी, बेल से बहुत करीब थी। भाग्य का साथ मिला सूर्य कुमार यादव, शॉट से तो पूरी तरीके से बीट हुए थे लेकिन वो गेंद विकेट्स पे जाके नहीं टकराई। वो 4th स्टंप की लाइन के ऊपर गेंदबाजी करने में कामयाबी हासिल हुई है शेफर्ड को। 2 गेंदें की है और जिस तरह से वो दोनों गेंदें की है पूरी तरीके से दबाव में लाने की कोशिश होगी सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को। सूर्य कुमार ओवर की तीसरी गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस बार शॉट डिलीवरी है, पुल करने की कोशिश है, मिड विकेट की तरफ गेंद गई जरूर लेकिन टप्पा खाएगी फील्डर से पहले और उसी के चलते सेफ समझेंगे अपने आप को सूर्य कुमार यादव। वरना 1 रन के लिए सुनील मुझे ऐसा लगा था जब गेंद हवा में लहरा रही थी खतरे की घंटी बज सकती थी भारतीय टीम के लिए। It was ringing loud. Something perhaps if they picked up the trajectory slightly earlier they could have done what Tilak Varma did, because eventually it bounced just about a couple of yards in front of the man there at mid-on or long on. But living a dangerous life really right now and is bowling very well, bowling both to his field and to what the wicket is providing, which is lack of pace. That's what he's doing. That's wide outside the off stump, picked up there by Tilak Varma and flared over extra cover. If ever a 6 can be called elegant, that was an elegant inside out extra cover lofted 6 by this man who's hit his 3rd 6 in just 11 deliveries. 58 for 2 then in the middle of the 8th over, and as I said, Tilak Varma announcing himself to the world. Here is a new star that's being born in the international firmament. We've seen 2 6s on the leg side and now 1 over extra cover. Lovely down on one knee and hitting the ball purposefully into the air and sailing over the extra cover boundary for 6.
नैले पे दैला लगाया। फील्ड सेट के अंदर परिवर्तन करके ऑफ साइड में धकेलने की कोशिश की गई थी, तो ऑफ साइड में भी इनसाइड आउट शॉट खेला था। यहाँ थर्ड मैन की दिशा में उन्होंने फील्डर्स को छका दिया है। सिर्फ फेस खोला बल्ले का और उसी के चलते एक और चौका पाया। तिलक वर्मा 28 पे पहुंच चुके हैं। 12 गेंदों का सामना किया है। भारतीय टीम का स्कोर अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 62 2 विकेट के नुकसान पे। पिछली गेंद के ऊपर वो इनसाइड आउट खेल के वो जो शानदार 6 रन क्रिएट किए थे, इस बार थोड़ी सी एज जरूर लगी थी। ड्राइव करने की कोशिश करना चाह रहे थे क्योंकि फील्डर वहां मौजूद नहीं थे, या कह लीजिए कि 2 फील्डर्स को भेद के गेंद चली गई और ये भाग्यशाली चौका तिलक वर्मा के लिए। 28 12 गेंदों का सामना किया। 62 भारतीय टीम। 8वें ओवर की आखिरी गेंद शेफर्ड की इस गेंद को इस बार फिर हल्के हाथों से पंच कर दिया और थर्ड मैन की पॉइंट की दिशा में उसे खेला। डीप पॉइंट पे एक फील्डर मौजूद थे लेकिन एक सिंगल लेने से रोक नहीं पाएंगे। 8 की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 63 2 विकेट के नुकसान पे। Yes, going at almost 8 runs and over. Really picked up the pace in the last couple of overs. And Joseph's over gave 17 runs, 2 sixes, and those 4 overthrows. And now in this particular over, Tilak Varma has taken Shepherd to the cleaners. The one lucky shot, that was the edge that went through the fielders fielding at backward point in short third. But otherwise, that extra cover driven 6 over, lofted 6 over extra cover. So one of the shots of the game, frankly, for me, if you ask me. 63 for 2. So the required run rate 7.25 and 8 wickets in hand, and we have the spinner coming back on again who made the initial breakthrough. Akhil Hussain, 2 overs, 1 wicket for 8, and that wicket of Shubman Gill stumped by Puran. Eventually it was. There was a little bit of confusion about that here in the commentary booth, but nevertheless we got it right in the end. चलिए, तो तिलक वर्मा दोबारा स्ट्राइक पे। अखिल हुसैन जिन्होंने शुरुआत में 2 ओवर किए ज़रूर थे, अब उनको वापस बुलाया गया, लेकिन क्या कोई फिजियो हमें आते हुए नजर आए थे? I think there was some fielding problem, one of the fielders perhaps. What is Tilak Varma putting his bat under his arm, and is he getting his gloves back on or off? Now he's putting them on again. So there's been a bit of a hold-up. We can't really make out what that hold-up was. But nevertheless, the hold-up is now stopped, and it is Akhil Hussain who's going to be taking up cudgels on behalf of the Windies, with India cantering away slightly now in the last couple of overs at 63 for 2. It was a very different pattern to the innings. The West Indies started very fast and then sort of subsided. India started slow and then suddenly took off after the power play. राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ा सा बाहर थी, जिसे हल्के हाथों से कट कर दिया और एक आसान सा सिंगल निकालने में कामयाबी हासिल की है तिलक वर्मा ने। क्या डेब्यू रहा है इनके बल्ले से आए सूर्य कुमार यादव। वहीं दूसरी तरफ वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, फ्लायर स्टार्ट की तरफ शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन उसके बाद में उनकी गाड़ी थोड़ी सी रुक चुकी है। 17 गेंदों का सामना किया, 20 रन उनके बल्ले से आए। लेकिन भारतीय टीम को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि रन रेट को बराबर बना के रखे। वो रिक्वायर्ड रन रेट लगातार कम होती हुई नजर आ रही है। अखिल हुसैन बैक टू बैक लगातार वो राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। एक तरफ लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज वर्मा है, दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव है। ओवर की दूसरी गेंद सूर्य कुमार यादव ने हल्के हाथों से खेला था। एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद थे। एक और डॉट डिलीवरी। 150 का आंकड़ा भारतीय टीम को छूना है। 9 रन अभी तक अखिल हुसैन ने अपने किए गए 14 गेंदों में दिए हैं। ओवर की तीसरी गेंद मिडिल स्टंप के आसपास में गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल करके उसे धकेल दिया है मिड विकेट की दिशा में और एक आसान सा सिंगल प्राप्त कर लेंगे सूर्य कुमार यादव। धीरे धीरे खेल की रफ्तार कम होती हुई नजर आ रही है सुनील। No, there will always be ebbs and flows in the game. I mean, that's bound to be. You suddenly have a complete change of pace from the medium pace that was being bowled, or the quick pace that was being bowled by Joseph. Suddenly you have a spinner who's picked up a wicket, so you know that he has the capability of actually turning that ball and beating you in the air and off the wicket. So I think the Indian batsman will have to play him cautiously as we see some running repairs to the shoelaces of Surya Kumar Yadav. Waiting now is Tilak Varma, as I said, who's announced his arrival on the international stage with 2 sixes. And he's facing up to Hussain for the first time. Left arm over the wicket now to the left-handed batsman as he tries to turn it away into the onside. Gets a leading edge as the ball was straightened rather than turned. As
You can see once again, very lucky that he got that nick. Otherwise, it could well have been a shout for LBW. Ball keeping slightly low as well as he goes forward to that ball that was over-pitched slightly and turns it away down towards forward of square, just past the square leg umpire, and picks up a single. Moves on to 31, and India coming up to the end of the ninth over are 66 for the loss of 2 wickets. The current partnership 38 from just 24 deliveries. The required run rate, what was really required at the beginning of the innings, which is 7.5. India keeping in touch with that as here we go, the last ball of the ninth over. Left arm around the wicket to Yadav, who waits for that ball, tentatively plays it away, not really sure what the ball is going to do, and then plays it away just to the left of the bowler, who picks it up cleanly. And at the end then of the ninth over, India remain on 66 for the loss of 2 wickets. यहाँ से 84 रन की और दरकार है भारतीय टीम को बची हुई 66 गेंदों में, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी आस्क मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से होनी चाहिए यदि विकेट आपके पास बने रहे। और जिस तरीके की बल्लेबाजी तिलक वर्मा और उनके साथी सूर्य कुमार यादव ने की है, ये पार्टनरशिप, ये जोड़ी, ये साझेदारी अब 38 पे पहुंच चुकी है। महज 25 गेंदों का सामना किया है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वही है जो सुनील आपको बता रहे थे कि अब के साथ में रन बनाने की आवश्यकता थी और बहुत ज़्यादा उछाल और चढ़ाव हमने अभी तक देखे नहीं, उतार चढ़ाव हमने देखे नहीं है। बल्लेबाजी में निरंतरता के साथ में रन बनते हुए नजर आ रहे हैं। गेंदबाजी में एक तरफ से आपको स्पिनर नजर आए थे तो दूसरी तरफ से अब होल्डर अगला ओवर करेंगे। 10वां ये ओवर है, इसके बाद में वो ड्रिंक्स ब्रेक का समय आएगा, जिसके चलते वो गेम की जो रफ्तार है उसमें थोड़ा सा खनन होते हुए हमने कई दफ़े देखा है। होल्डर पिछले ओवर में 4 रन खर्च किए थे, उनका सामना करेंगे तिलक वर्मा जो 31 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। भारतीय टीम का स्कोर 66, 2 विकेट के नुकसान पे। जेसन होल्डर ओवर द विकेट, पहली गेंद कटर के साथ में शुरुआत की है। अपने बल्लेबाज को फॉलो करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। वर्मा को उन्होंने फॉलो किया, लेकिन वर्मा ने गेंद को हल्के हाथों से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में धकेल के एक आसान सा सिंगल चुराया और खुद ऑफ स्ट्राइक चले गए। It was the slower cutter, just 112 Ks, and you could see him that he does not want to give pace to the batsman. He knows that Varma will really get after him if he gets the pace. He's seen what he's capable of doing. But Varma also equal to the task, saw that it was slow delivery, batted away very, very softly into the offside and was able to walk through for a single. And that's what you have to do. You've got to be able to outthink the bowler. If he's trying to do something that you cannot get a boundary of, at least pick up that single. And that is what exactly he has been able to do. So it's going to be now, Surya Kumar Yadav has been overtaken by Tilak Varma playing his debut ODI. And here goes Holder, right arm over the wicket and bowls and is going to be picked up at extra cover. Once again, the ball being hit in the air, the slow delivery, and Surya Kumar Yadav inputting. Is picked up by the West Indies fielder. Just tell you in a moment who that was. Hetmeyer. There you are. So at least if he didn't do anything, the bat is able to excellent catching over there, diving away to his left and taking that ball that came slowly off the pitch. Going into the drive was Surya Kumar Yadav and picked up there at short extra cover for 21 of 21 deliveries. और यही भारतीय टीम की कहानी रही है। जैसे ही एक खिलाड़ी सेट होने की कोशिश करता है, दूसरी तरफ से वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव के रूप में भारतीय टीम का ये तीसरा विकेट गिरा था। अद्भुत कैच था, आला दर्जे का कैच था। एक डाइविंग के साथ में वो कैच अपना पूरा किया और जेसन होल्डर के चेहरे के ऊपर जो खुशी थी वो भी देखते ही बन रही थी। सूर्य कुमार यादव 21 के स्कोर पे 21 गेंदों का सामना किया, होल्डर का शिकार बने हैं, अपने आप से थोड़े से नाखुश थे। 9.2 ओवर का खेल खेला जा चुका है। तिलक अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 32 के स्कोर पे वो नाबाद बल्लेबाजी करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के कप्तान अब यहाँ से भारतीय टीम की पारी को आगे बढ़ाने के लिए हमें नजर आएंगे। और क्या कहानी रही है हार्दिक पांड्या की, वो जब बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं आमतौर पे भारतीय टीम मुश्किलात में फंसी होती है। यहाँ दोहरी भूमिका है, एक तो भारतीय टीम थोड़ी सी मुश्किलात में, एक आप भारतीय टीम के कप्तान हैं। Well, that's what a captain's got to do, play a captain's innings. But I think he's been able to see enough of this pitch, enough of the game to realize what is required of him. Drinks being taken early, which is a very good thing because there's always that 2-minute gap between the batsman coming in and going out. So might as well use that time rather than waste it. At the end of 9.2 overs, then 67 for 3. The last man out, Surya Kumar Yadav picked up very nicely a short extra cover, diving away to his left, and Shimron Hetmeyer picking him up off the bowling of Jason
Holder, who was absolutely over the moon. He was able to fox Suryakumar Yadav with a slightly slower, pitched up delivery into the drive. Didn't get hold of it really, and the ball in the air picked up nicely by Hetmyer at extra cover. Third wicket partnership then. 39 of 27 deliveries, 32 of them coming from Tilak Varma, 5 from Suryakumar Yadav and 2 from extra. I think what happened with Suryakumar Yadav is that though he came in and started hitting the ball, suddenly he found that Tilak Varma was overtaking him and didn't quite know what to do. And then eventually when he went after the bowling, he holed out to extra cover. But you have to give it to Hetmyer. It was a good catch, diving away full length to his left and picking it up, I think 6 inches off the ground. So good fielding always. I remember the great Lala Amarnath used to say when he was in commentary back in the 60s and 70s, catches win matches, and that's always been true in any form of the game, certainly the international game. 3 विकेट भारतीय टीम के पतित हो चुके हैं। 10 ओवर का खेल खेला जा चुका है। सूर्यकुमार यादव पिछला विकेट जो पतित हुआ था, हेटमायर ने एक आला दर्जे का कैच पकड़ के उनको बाहर की राह दिखाई थी। और सुनील, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी आवाज़ शायद उन्होंने सुन ली, क्योंकि आपने जैसे ही कहा कि अब तिलक वर्मा ने सूर्यकुमार यादव के स्कोर को पार कर लिया है और उसी को लेकर सूर्यकुमार यादव बल्लेबाजी कर रहे थे। चलिए, well, there you are. If you can hear me, then I'm a great man. I don't think that I am, as Hardik Pandya now, after the drinks break taken early, after 9.2 overs, plays it away quietly towards mid-wicket. He knows that the game actually can be won quite easily by India if they keep their heads and don't go just unnecessarily after the bowling. If you pick up the ones and twos, you'd always get the ball that you can hit for 4 or 6 and pick up the pace. And right now, it's still under 8 runs and over that are required, and that really, in any T20 game with wickets in hand, should be quite possible. और यहाँ से ये चीज़ वेस्ट इंडीज़ की टीम भी समझती है। ओवर की चौथी गेंद पैड्स के ऊपर खेला था, उसे हल्के हाथों से ड्रिफ्ट कर दिया है। बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में वहाँ फील्डर मौजूद है, जब तक फील्ड करेंगे तब तक एक आसान सा रन मिलेगा। अब तिलक वर्मा स्ट्राइक पे है। वेस्ट इंडीज़ को भी पता है यहाँ से कि यदि ये मुकाबला अपने नाम करना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि लगातार विकेट निकालते रहें, क्योंकि विकेट यदि नहीं निकालेंगे तो भारतीय टीम में वो पूरी क्षमता है। कुछ समय पहले जब वो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था, वेस्ट इंडीज़ की टीम का वो एक अनोखा जो सेलिब्रेशन जिसे कहा जाता है, वो एक क्रॉस करते हैं सब खिलाड़ी अपने हाथों को और फिर वो सेलिब्रेट करते हैं, जश्न मनाते हैं। अब उसका कारण क्या है वो शायद वो हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। होल्डर 10वें ओवर की 5वीं गेंद के साथ तिलक वर्मा स्ट्राइक पे 32 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार विड्थ दी थी, ऑफ साइड से बहुत दूर धकेला था, तो तिलक वर्मा ने उसे खेल जरूर दिया था, लेकिन फील्डर की मौजूदगी में सिर्फ एक ही रन मिलेगा। ऐसा लगा था कि यदि वहां फील्डर मौजूद नहीं होते तो शायद गेंद बाउंड्री रोप्स को पार कर जाती, लेकिन जेसन होल्डर का जो प्लान है, जिस रणनीति के साथ वो गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो उनके लिए काम कर रही है। फील्ड के अंदर परिवर्तन भी करे हैं, लेफ्ट और राइट का कोऑर्डिनेशन, दाएं बाएं हाथ का ये जो कोऑर्डिनेशन है वो चेंज करता हुआ नजर आएगा। उन फील्डर्स को मजबूर किया जा रहा है वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से कि उन फील्डर्स को चेंज किया जाए, परिवर्तित किया जाए। Excellent figures for Holder. Coming up to the end of his second over, just 1 for 7. And this one is slightly short of length again. The slower bouncer and had to wait for that ball, did Hardik Pandya, before he was able to play it away just to the edge of the circle. He gave it all he had, but 120 Ks, so 1 for 8 in 2 overs. Excellent bowling by the old fox, Jason Holder, as India then move on to 70 for the loss of 3 wickets, 10 overs, 7 runs and over, and now having to get 8 runs and over, is it? Yes, exactly 8 runs and over. I still haven't forgotten my maths, which I learned many years ago in school. So 10 overs, 80 runs equals 8 runs and over. Yeah, fair, right there. Which is not really, as again, with 7 wickets in hand, that's something you should be able to get relatively comfortably. 70 बना लिए भारतीय टीम ने, 3 विकेट गंवाए हैं, लेकिन यहाँ बचे हुए 10 ओवर में 80 रन बनाने हैं और उनके लिए आपके पास में 7 रन है। भारतीय टीम 7 रन की रफ्तार से रन बना रही है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो 10 ओवर की समाप्ति के बाद रन रेट में बहुत ज़्यादा फासला था नहीं। 69 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, 70 भारतीय टीम ने, और यदि आप रन रेट के लिहाज से देखें तो 6.90 की रन रेट से रन बनाए थे वेस्ट इंडीज़ की टीम ने। शेफर्ड
11वें ओवर की शुरुआत करेंगे। पिछले ओवर के अंदर 13 रन इन्होंने खर्च किए थे। राइट आर्म ओवर द विकेट, दाएं हाथ से गेंदबाजी की है, शॉट रखने की कोशिश की है। फील्डर 30 यार्ड के घेरे में बहुत ज़्यादा एक्टिव है वेस्ट इंडीज़ के, लेकिन उसके बीच में भी भारतीय टीम के खिलाड़ी रन चुराने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो कि स्ट्राइक पे, जिन्होंने 4 गेंदें खेली हैं, 2 रन उनके बल्ले से आए हैं। यहाँ से 80 रन की ये तो दरकार है। ये एक तरीके से कुछ वार्तालाप का कारण भी बनेगी। पोवेल जो वेस्ट इंडीज़ के कप्तान है, वो सीधे शेफर्ड के पास गए, उन्होंने कुछ बातचीत की है शेफर्ड से। वो गेम किस तरीके से यहाँ से आगे बढ़ाना है, वो खेल में क्या क्या परिवर्तन किए जाने हैं, क्या कोई फील्डर को परिवर्तित करना है, वो सारी चर्चाएं जो लगातार चलती है। 11वें ओवर की दूसरी गेंद, शेफर्ड शॉर्ट पिच गेंद थी, पोल कर दिया। कोई फील्डर वहाँ पे मौजूद है? बिल्कुल है, और 2 टप्पों के साथ सीधे उनके हाथ में जाएगी। वो कैमरा का जो एंगल जो हमारे स्क्रीन पे नजर आ रहा था, उससे सीधे ये लगा कि ये सीधे बाउंड्री लाइन के पार जाएगी, लेकिन फिर स्क्रीन के उस एज से पैन होते हुए फील्डर नजर आए और फिर पता चला कि नहीं, आपको चौका मिलेगा नहीं। Let's say the shot looked for but wasn't for because the fielder was in the right position. On a pitch like this, you have your feet in the right position. Very difficult to get boundaries, which is why the singles and twos are always much more important in a game that is a low-scoring game. Shepherd then in his second over, none for 14, 1.2 overs so far, 71 for 3. India and Varma, 33 of 18. This one. Bounce to the keeper as he waited and waited and waited. 119 kilometers, was that it? Or whatever it was an excellent delivery as it dipped on the batsman who tried to counter the slowness by guiding the way down to third man, but missed the ball completely. Off the pitch to their advantage. That's what the Windies bowlers are doing. As here goes Shepherd. And this one moving outside the off stump, knowing the ball was going to be there, and cut away very nicely there by Tilak Varma, using the lack of pace, waiting for that ball and then being able to play it away down towards deep backward point where there's no fielder. The fielder's much straighter at deep cover, and this one getting the cutter absolutely right, waiting for the ball and then cutting it away down to deep backward point for 4. So you अपने लिए जगह बनाई थी, ऑफ स्टंप से बहुत बार गए थे, और ये वो शॉट है जो सूर्य कुमार यादव आमतौर पे खेलते हुए नजर आते हैं। पिक्चर परफेक्ट मुझे शॉट लगा, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो सूर्य कुमार यादव के बल्ले से आया होगा, लेकिन फिर जब वो स्कोर कार्ड देखेंगे तो पता चलेगा कि तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं। हर तरीके के शॉट आज के क्रिकेट में हर तरीके का बल्लेबाज खेलने के लिए तैयार रहता है। 11वें ओवर की 5वीं गेंद, हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल करके उसको मिड विकेट की तरफ खेल दिया, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स की दाद देनी पड़ेगी। 2 रन पूरे करे इन दोनों बल्लेबाजों ने। हार्दिक पांड्या जो आमतौर पे विकेट्स के बीच में तेज माने जाते हैं, उनका साथ निभाते हुए तिलक वर्मा ने भी आज ये साबित किया है कि इस खिलाड़ी में ना सिर्फ बड़े शॉट्स खेलने की बल्कि रन बिटवीन द विकेट की भी क्षमता है। 39 पे पहुंच चुके हैं, 21 गेंदों का सामना किया है। 11वें ओवर की आखिरी गेंद बची हुई है, 77 भारतीय टीम ने बना लिए। तो आंकड़ा भारतीय टीम को प्राप्त करना है। ओवर की आखिरी गेंद, फिर शॉर्ट गेंद थी, पुल कर दिया स्क्वायर लेग की दिशा। शेफर्ड को मिली सफलता। तिलक वर्मा जो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, अब उनको बाहर की राह दिखा दी है। 39 के स्कोर पे उनकी पारी, उनकी डेब्यू पारी हुई समाप्त। Well, there you are, fell into the trap. Once again, the slower ball, waited for it, got it well enough, but the fielder perfectly positioned. Throat. No. All in particular wicket. I think certainly the confidence to the Indian team and to him, 39 of 22, not the way that he would have wanted to get out, certainly not the way that the team would have wanted to get out, but the Windies will take that, and that's why they are a very good T20 team actually, the Windies, because they use the conditions at the end of the day. This is their home ground in Trinidad, Taroba, the Brian Lara Cricket Academy or Stadium, whichever way you'd like to call it. So India lose their 4th wicket at the score of 77. 7 runs and over. We've got to pick up the pace now. And who's going to come into bat? She'll tell you in a moment. It's going to be Sanju Samson. Has a chance to make a name for himself. Hasn't really, I think,
done enough with the talent that he has. I think he has much more talent than the results show. But here is a chance for him to make up. You can see once again over there the rolling the fingers over the seam, therefore not giving the pace off the wicket to Tilak Varma, and this time holding out to deep backward square. Nevertheless, a good innings, but something that he would have wanted to and will learn to be able to carry on. Because when you're in this type of form and you're in this particular position, you should see the game through. That is what makes a great batsman from a good batsman. संजू सैमसन का करियर का बेस्ट 77 रन है. भारतीय टीम का फिलहाल जो स्कोर है वो भी 77 रन है. 12वें ओवर की पहली गेंद ने धकेल दिया स्क्वायर की दिशा में और एक आसान सा सिंगल चुरा के स्ट्राइक पे ले आए संजू सैमसन को. संजू सैमसन के लिए कई बार ये भी कहा जाता है कि वो लीप ईयर के खिलाड़ी है. ऐसा हमारे कॉलर्स जब ट्यून इन प्रोग्राम में कॉल करते थे तो वो ये भी कहते हुए नजर आते थे, क्योंकि हमने कई बार उनको देखा है फेजेस में खेलते हुए भारतीय टीम के लिए. वो निरंतरता के साथ में उनको मौके मिले नहीं है. Yes, well, I mean, whenever you get your chance, then you've got to make the most of it, as Kuldeep Yadav does. As he says, every time I get player of the match, I'm dropped in the next. Yeah, that happened in Bangladesh, if you remember. जी. And India almost lost the second test match after that. Nevertheless, 78 for 4 then, the top of the 12th over. 72 from 53, that's what's required. But 6 wickets in hand. The next ball, as he tried to turn it onto the onside, Sanju Samson, lucky that he got a nick and it went away towards backward point. Otherwise, it was bang on the stumps. He would well have taken them, or at least his pads. Once again, playing across the line to the very first delivery that was pitched on the stumps. And that's what he's got to try and then go for the big shot. Once again, very, very lucky that he got a nick on that. There was Sanju Samson. So still on note, as here goes Joseph now. Bowling to Samson, walks across the crease, and this time cuts nicely, but stopped very well there. Point, straight to point, well stopped. And that will frustrate him even more, because it is a very good shot, but for no runs. पुरन जो फिलहाल विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने लगातार चर्चाएं की अपने गेंदबाजों के साथ. साथ ही साथ पवेल जो कि टीम के कप्तान भी है, उन्होंने भी बार बार रुक करके अपने गेंदबाजों के पास आके बात भी की. और जोसेफ को शायद ये ओवर देने का कारण ये भी है क्योंकि उन्होंने पिछले 2 ओवर में 30 रन दिए थे. तब बल्लेबाजी तिलक वर्मा कर रहे थे. अब जैसे ही तिलक वर्मा का विकेट गिरा है, अल्जारो जोसेफ गया. 12वें ओवर की चौथी गेंद जोसेफ ब्लॉक हॉल में उसे किया, लेकिन कलाइयों का इस्तेमाल करके शॉट की दिशा में वहां जो फील्डर मौजूद है उनके पास में धकेला संजू सैमसन. 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं. कार है 50 गेंदें यहां से फेंकी जानी बाकी है वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों के द्वारा. तो फिर गणित वही बैठती है कि जो ज्यादा गहरा मुश्किलात का सबब है, तो वहीं वो रन रेट भी भारतीय टीम चाहेगी नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ती हुई उछाल मारती हुई नजर आए. फील्ड में परिवर्तन किया जा रहा है. मिड विकेट की दिशा में फील्डर को पीछे डीप मिड विकेट के तौर पे भेजा गया है संजू सैमसन के लिए, जिन्होंने अभी तक अपना डिलीवरी थी. टप्पा खाने के बाद गुड लाइन डिलीवरी किसी अंदर आई, अपना खाता खोला संजू सैमसन ने. 1 के निजी स्कोर पे आसान सा एक बहुत अच्छा सा ओवर गया, खर्च किया अपने के चलते. पांड्या मिलेंगे, कोई फील्डर मौजूद नहीं है. 30 यार्ड का घेरा जैसे ही भेद दिया, वो गेंद के ऊपर बाउंड्री लिखी थी. हार्दिक पांड्या 8 के स्कोर पे पहुंच चुके हैं. भारतीय टीम का स्कोर 83, 4 विकेट के नुकसान पे 12 ओवर की समाप्ति के बाद. Yes, that was a lovely shot, lofted extra cover drive, and went down the wicket to that particular one and then hit it over extra cover. Knew exactly what he was trying to do there. Hardik Pandya knows he's got to pick up the pace. You need a couple of boundaries now because it's part. And move on to 83 after 12.
And the required run rate, will tell you in a second, 8.38. So still under control, under double figures, and still 6 wickets in the hutch. You've got Akshar Patel. We know he can hit the ball long and hard. So there is some back. We love this pair to try and finish it off. Certainly Samson has to make the most of this opportunity being given to him. There are a lot of people waiting in the wings. Whether somebody stumbles and they can take his position. So the Indian worm was going well, and then suddenly 2 wickets fell, and India now struggling just a shade. Akil Hussain, his last 1 for 11 before this time on pads, plays it away. Was it going to be a leg bye? No, it's off the base. It is indeed a bye. As this bye brings Hardik Pandya on strike. 8 of 7, and Sanju Samson 1 of 5, and that's not a stat that will please him. Slip in place, which is really looking on behalf. एक साधारण सा कमेंटेटर्स कर्स हुआ, जैसे आपने स्लिप इन प्लेस का कहा, अब स्लिप को हटा दिया गया है। बल्लेबाजी करते हुए हार्दिक पांड्या नजर आ रहे हैं, जिन्होंने वो स्वीप खेला और उसके चलते उनको वो 4 रन मिलेंगे। स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद थे जरूर, लेकिन जब तक वो गेंद तक पहुंचते तब तक वो गेंद बाउंड्री से बाहर पहुंच गई। So he had a slip when Sanju Samson was there, but not a slip for. And that's why you have that slip in place. Next ball was swept off the middle stump, but very well swept on length, and was able to beat the batsman, the fielder, at deep backward square. That one turned viciously, absolutely viciously, as it came in with the drift and then spun away, and with lovely bounce, and beat the forward defensive stroke of Hardik Pandya completely, absolutely beat him all ends up. So there's a lot of spin in this wicket. If you use it properly, if you get the revs on the ball, if you get the dip on the ball, you'll always get that type of spin off this wicket. Now I'm waiting to see the one that comes in with the arm. He's bowled all the ones that spin away. Let's see if we get one with come in with the arm. No, once again the ball spins away, but straight to the man at short extra, and there is no run. So 2.4 overs, 1 for 15. And here he is now. He opened the attack, got rid of Shubman Gill, and this one is slightly short of length and chopped away very nicely down towards deep point, just for the single, and that will bring Sanju Samson on strike to face the last delivery of Akil Hussain's spell. तारीफ करनी पड़ेगी, साथ ही साथ पोवल के तरीके से उन्होंने परिवर्तन किया, मजबूर किया है गेंद की रफ्तार को भांपने में, क्योंकि आप आदत नहीं होती है एक ही तरीके की रफ्तार। ओवर के आखिरी तक फील्ड किया जाएगा, एक आसान सा सिंगल दोनों बल्लेबाज निकाल लेंगे। तो 13 की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 90, 4 विकेट के नुकसान पे। हार्दिक बल्लेबाजी कर रहे हैं 13 रन के स्कोर पे, 11 गेंदों का उन्होंने 2 के स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती है इस जोड़ी के सामने वो ये है कि इस पार्टनरशिप को, इस साझेदारी को जितना लंबा ले जाया जा सके वो भारतीय लिहाज से बढ़िया है, क्योंकि अभी भी 7 ओवर का खेल और खेला जाना बाकी है, और उसके अंदर तख्ता पलट करते हुए हमने देखा है विशेषकर वेस्ट इंडीज की टीम को, उनके गेंदबाजों के तरकश में 4 ओवर अकील हुसैन के पूरे हो चुके हैं, जिसमें उन्होंने 17 रन खर्च किए, 1 विकेट चटका है। इकोनॉमी 4.2 और अलग अलग आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज, ट्रिनिडाद में मुकाबला हो रहा है। खूबसूरत वो आइलैंड्स, 22 कॉन्टिनेंट, 22 आइलैंड से अलग अलग ये टीम, all different countries, and that's the interesting thing about West Indies cricket. That's short and that's been hooked away, but just falls short of the man at deep mid wicket. Just again, no pace on the ball, not getting his timing right. Very lucky there. Sanju Samson gets a single for his efforts. But I think one of the things that you've got to think about is not just the composition of the teams is very different. India had 3 spinners, the Windies have just got 1. To be one of the keys. अब इसे तो वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की 15 dots.
Yes, World Test champion. We'll talk about that. I was there at the Oval watching it, and I can tell you we all felt completely, totally, absolutely bamboozled. There were a lot of people who'd come from everywhere, from America, from Dubai, Indian supporters, and they all kept saying, how come we're not playing Ashwin, who is the top-ranked bowler in the world, the number one bowler, you're not bowling him, with so many left-handers in the Australian team. और जैसे आपने कहा ना कि वेस्ट इंडीज़ की टीम निर्भरता दिखा रही है अपने मीडियम पेसर्स के ऊपर, तो वैसे ही मुझे वो याद आया कि शायद भारतीय टीम भी निर्भरता दिखा देती है अपने सबसे अव्वल दर्जे के स्पिनर के ऊपर, तो आज कहानी कुछ अलग होती है। लेकिन फिलहाल सूरत हाल T20 फॉर्मेट का है, भारत बनाम वेस्ट इंडीज़ का है, दूसरी पारी चल रही है भारतीय टीम के लिए। ये 14वां ओवर है, 14वें ओवर की तीसरी गेंद जो कि ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर डाली गई थी शेफर्ड के द्वारा। 116 किलोमीटर की रफ्तार थी उस गेंद में। हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी कर रहे थे और उसे आसानी से जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, और बहुत ज़्यादा आक्रामक होने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मिश्रण को भी समझिए, बचे हुए समय में ये रन बनाए जा सकते हैं यदि भारतीय टीम के पास विकेट रहे। इस परिस्थिति पे वेस्ट इंडीज़ का स्कोर 95 था 3 विकेट के नुकसान पे, तो भारत ने 1 विकेट अतिरिक्त गंवा दिया है और स्कोर में भी 4 रन कम है। 91 पर बल्लेबाजी करें, डाउन द लेग साइड शेफर्ड की वो गेंद थी, क्या बाहरी किनारा लगाया क्योंकि निकोलस पूरन तो अपील कर रहे थे लेकिन अंपायर ने बाजुएं खोली है, वाइड का इशारा दिया है। ये रोमांचक है। एक रिव्यू बचा है आपके पास, यदि लगता है निकपुरन को कि कोई किनारा off giving the white, that's what he So India will take those wides as the required run rate creeping up to 9. The next ball is pitched up, but once again, just sticking in the surface as he drives Hardik Pandya. The ball goes in the air, but goes away to long off, picks up a single. Runs not easy to come by, as we say, right through the course of this match. It's a slow pitch, and it's going to be really a battle of attrition more than a battle of the big shots. 2 गेंदें और बची इस ओवर में, 14वां ओवर गतिमान। 10 में रन भारतीय टीम का स्कोर है, 4 विकेट गंवा चुके हैं। सैमसन बल्लेबाजी कर रहे हैं लेकिन आज उस टच में वो नज़र नहीं आया जिस टच में हम आम तौर पे उनको देखने के आदी है। ओवर की 5वीं गेंद थी, इस बार उसे फिर धकेला है मिड विकेट की दिशा में, लगातार यही दिशा के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। ज़्यादातर जो स्कोरिंग एरिया संजू सैमसन का वो यही है, एक सिंगल के साथ में संतुष्ट रहना होगा। 150 का आंकड़ा भारतीय टीम को छूना है, समय अभी भी बचा है। 6 ओवर 1 गेंदे अभी भी यहाँ से शेष है। हार्दिक पांड्या 14 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 14 गेंदों का ही सामना किया है, फिलहाल स्ट्राइक पे आए हैं पोवेल। उनके लिए एक अलग तरीके का टास्क रहा, एक अलग चैलेंज रहा है कि फील्डिंग के अंदर भी वो लगातार अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए नजर आए और फिर जब जब उनको मौका मिलता है वो गेंदबाजों में आके उनसे बात भी करते हैं। ओवर की आखिरी गेंद थी, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश थी जरूर, बैकवर्ड पॉइंट पे अद्भुत एफर्ट था लेकिन कैच पकड़ने में कामयाबी मिली नहीं और गेंद सीधे सीमा रेखा के पार चली गई। हार्दिक पांड्या को भाग्य के सहारे से मिलेगा ये चौका, 18 के स्कोर पे पहुंच जाएंगे। 15 गेंदों का सामना किया, 14 की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 98, 4 विकेट के नुकसान पे। Yes, once again getting the outside edge as he wanted to drive the ball, got the outside edge and flew away between beg your pardon, backward point and short third. And a very, very good attempt by Brandon King going away to his left to pick up the ball. And but nevertheless 4 good runs for India, at least 4 runs for India, whether good or bad really can't say with that type of shot with this type of pitch. 98 for 4 then, 6 overs to go, and India the required rate 8.67, the amount of runs required 52, just out of reach of diving Brandon King at backward point. Nevertheless 4 runs, India will take that. India still haven't reached the 100 mark and just the 6 overs to go. Nevertheless, so the game set up well here, I would say, in India's favour, just because the fact that they've got comes up with. Remember his, oh my goodness me, that will definitely be, I think to my mind, a no ball for height, because it went past his nose, literally, that ball, that was from left arm over. So it's going to be a no ball, you're going to get a free hit. And is this going to be the turning point, Ayush? हो सकता है ये वो रन हो सकते हैं जब तख्ता पलट किया जा सके, और अब सच जो असल मायने में T20 क्रिकेट जिसे कहा जा सकता है उसकी बारी आ चुकी है। आखिरी के 6 ओवर का खेल खेला जाना बाकी है। भारतीय टीम के सामने वो जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे हर बीतती गेंद के साथ में बढ़ते हुए लगभग 9 आस
करें सैमसन, और फिलहाल समय उस फ्री हिट का, क्योंकि मैकॉय ने पिछली बार वो गेंद है, इस बार ऑफ साइड की तरफ खेला है, फुल लेंथ डिलीवरी थी, उसे थर्ड मैन की तरफ गाइड किया जरूर, फील्डर वहां मौजूद, जब तक वो गेंद को फील्ड करेंगे तब तक एक आसान सा सिंगल निकाल लेंगे संजू सैमसन। हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे। आज के इस मुकाबले में यदि मैं गलत नहीं हूं सुनील, तो चाहे भारतीय टीम की बल्लेबाजी रही हो चाहे वेस्ट इंडीज की, जब फ्री हिट का मौका आया बाउंड्री नहीं लगी है। Yes, they've just got singles actually. I remember it was Yashasvi Singh who bowled that no ball. One of them, I think Mukesh Kumar. Can't remember. So 100 for 4 in 14.2 overs of the Windies. 100 for 4 in 14.1 overs is India. So can't get closer than that, can it? 50 of 35 deliveries. That's slightly short of length and turned away very nicely down towards deep backward square. But once again, the fielding is spot on. The fielder runs around about 5 yards to his right, picks up, throws it in. And there's just a single on offer. So singles coming, fours, boundaries, twos, even twos. Difficult to find on this particular pitch. Not being able to find those gaps and not being able to pick up the ones and twos, at least the twos and threes. I haven't seen any three on this wicket so far, not that I can recall. So it just shows that the fielding has been spot on, or it's a very small ground. Either way, whichever way it is, it's not happening insofar as the batting team is concerned. And this time, once again, that's the ugly hoik played away down towards deep backward square. Once again, good fielding there. Keeps the scoring down to 1. And a nice, did you know, Robin Uthappa is the first player to score 50 in T20 internationals for India. Well, there you are, Robin Uthappa. I think he was part of the World Cup winning team in 2007. The only T20 World Cup India's ever won. Which is so ironic, isn't it? That was even before the IPL. Here goes Ved McCoy. That's down the leg side and played away. Tried to play it away and does get, I think, his pad onto it. Let's see whether it's a bat or pad. Certainly, to my mind, it's gone away very quickly, very fine. It will be 4 runs, and it is, in fact, has been given his leg buys. Let's wait and see from this replay. To my mind, it went off his thigh pad. We haven't seen the umpire signal so far, but it is 4 runs nevertheless because it went fine down to the boundary. I think it is 4 leg buys, or whatever it is. It's India now 106 for 4. Yes, it is indeed 4 leg buys because he's still on 19. And this time, a slower ball that he tries to pull. He could have played 2 shots to that. By the time he finished up, he came so slowly off the pitch and hit him in his midriff. But they were able to scramble through for yet another leg by as India move on then to 107 for the loss of 4 wickets coming up to the end of the 15th over. 15वें ओवर की आखिरी गेंद डाली जानी अभी बाकी है। 107 भारतीय टीम ने बना लिए हैं। हार्दिक 19 पे, सैमसन जो फिलहाल स्ट्राइक पे हैं, 6 रन उनके बल्ले से आए। 11 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। मकॉय अच्छा खासा ओवर गया उनके लिए, लेकिन वो अतिरिक्त रन जो उन्होंने दिए हैं वो थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकते हैं। ओवर की आखिरी गेंद थी, स्लॉक स्विप, स्लॉक शॉट स्ट्रेट अवे, सीधे खेला है उसे, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं। 6 रन मिलेंगे। संजू सैमसन ने एक आतिशी शॉट खेला है। इस मुकाबले का ये 11वां 6 रन है। संजू सैमसन जो आमतौर पे बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, आज के इस मुकाबले में बड़े शांत नजर आए। हम सभी इंतजार कर रहे थे कि कब उनके बल्ले से वो आतिशी शॉट आए, तो इंतजार अब समाप्त हुआ है। ओवर की आखिरी गेंद पे उन्होंने वो स्लॉक शॉट खेला और लॉन्ग ऑन की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं था। अगर होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता सुनील, जितना फासला उस गेंद ने तय किया था शायद काम चल जाता उनका। अब यहां से भारतीय टीम को बचे हुए 5 ओवर में यानी कि 30 गेंदों में 37 रनों की दरकार है। 113 भारतीय टीम ने बना लिए, विकेट पतित हो चुके हैं। हार्दिक 19 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 18 गेंदों का सामना किया। सैमसन 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदों का सामना किया। मैकॉय जिन्होंने अपने 2 ओवर में महज 8 रन खर्च करके एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया है। It was an intelligent shot. He actually moved outside the off stump, knew that he would be followed, held his position and kept his body shape, and that was what actually gave him the leverage to get it over long on for 6. So we know that he's quite capable of this type of hitting. That's why he's in the team and at this type of position, which is number 6. So 37 of 30, and Holder, who's been the pick of the bowlers along with Akil Hussain, 148 rather of his 2 overs so far. And now it remains to be seen whether he can stem the rot. It was a very good over for India, the previous one. Got a 6 and a boundary as
We wait now. 113 for 4. 37 of 30. That's what's required. You can see over there. Bowled completely through the gate. There goes Hardik Pandya. And it was the off cutter. Went right across his stumps. Tried to play it on the onside. Went through bat and pad. And there goes the celebration of the Windies as India lose their captain. And now once again the balance swings in favour of the West Indies. तू डाल में पात ये मुकाबला तो उसके तुरंत बाद गेंदबाज विकेट लेके वही जश्न मना रहे हैं जिसकी आवश्यकता भी है और ये मुकाबला और ज्यादा रोमांचक बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जाएगा। हार्दिक पांड्या फिलहाल जाते हुए नजर आ रहे हैं हमें पवेलियन में, जिन्होंने 19 रन बनाए, 2 चौके उनके बल्ले से निकले जरूर थे और अब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे अक्षर पटेल, जिनमें बल्लेबाजी करने का अच्छा खासा दमकम है। बड़े हिट्स लगाने के लिए ये खिलाड़ी भी जाना जाता है। संजू सैमसन जो ऑलरेडी 12 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 12 गेंदों का सामना करने के बाद होल्डर एक अच्छा दिन रहा है उनके लिए। 2 ओवर अभी तक जो उन्होंने किए हैं और उसमें 8 रन देके 2 विकेट मिलना, ये एक बहुत Well, actually, I saw Hardik Pandya practicing the shot he should have played, which is play straight rather than play across the line there, right there. And that's exactly it. When you make a mistake, you actually pay the price for it. That's what he did. And now, you know, when you come down to the stage of saying, oh, Akshar Patel can hit the ball and all, there's something wrong. Because you shouldn't be depending on him in a T20 game to get you over the line. Bilkul. You know, and that is, I think, one of the biggest problems that this team has faced, that the top order is not being able to see them through. It's not a big score. 150 you should be able to get. I mean, you're all top-level players. You play for the IPL, all the big teams. You're not able to do this. Then I'm afraid that you've really got to start rethinking your strategies and your game. पिछली साझेदारी जो कि 36 रन की थी, 26 गेंदों में सैमसन ने 12 जोड़े थे, हार्दिक के बल्ले से 16 आए थे और 8 रन का योगदान तो एक्स्ट्रास का था उस पिछली साझेदारी में। थैंक यू शर्मा। उन आंकड़ों के लिए होल्डर गेंदबाजी कर रहे हैं। 16वें ओवर की दूसरी गेंद रन अप पे बरकरार, अंपायर को उन्होंने क्रॉस किया, पट की भी गेंद थी, शॉर्ट पे डिलीवरी थी, एंगल के साथ बाहर की तरफ जा रही थी अक्षर पटेल से सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो पहली गेंद डॉट रही है अक्षर के इस मुकाबले की। That was because he tried to hit the ball across the line for a ball that was going across him on the off stump. I mean, you were asking for trouble. He could easily have played that ball, guided it way down to third man, picked up a single, got himself off the mark, got India that, I think, but he tried to hit the ball that is on the 7th stump down towards mid-wicket. I mean, really, you've got to think about this. You have to really think about your basic cricketing intelligence. Once again, the slow delivery, the slow cutter played away, and oh, what fielding over there. Straight on the stumps, direct hit. Has Sanju Samson made it? It's certainly going up. What's your guess? I think he's just about made it, but great fielding there. On the move from extra cover, and straight onto the stump, Sanju Samson. Was he late in taking off? We'll see in a second. But great fielding, absolutely. That's what makes the difference in any game. One hand picked up, perhaps it's just short of the crease. Very, very difficult. He was stretching, but not enough. I think he's gone. I think what I can see over here is that he's gone. Samson is out, run out, direct hit, gone, absolutely. Brilliant fielding there from Kyle Myers, who didn't shine with the bat, but that throw will really make his team proud of him. He'll be proud of himself. Slow off the blocks there with Sanju Samson, and India lose their 6th wicket then. Great fielding, absolutely. Direct hits, always the biggest problem. हालांकि औपचारिक तौर पे वो निर्णय आना भी बाकी है, लेकिन रिप्ले में जो हमने देखा उस दृश्य से साफ पता चल रहा था कि संजू सैमसन को वापस जाना होगा। वो भी इंतजार नहीं कर रहे थे उस निर्णय का। तो चलिए, औपचारिक निर्णय भी आ चुका है। संजू सैमसन के विकेट का पतन हुआ है, वो रन आउट हुए। मायर के उस अद्भुत थ्रो के चलते स्ट्राइक रेट 100 की रहेगी। 12 गेंदों का सामना किया, 12 रन बना के वो वापस गए। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं कुलदीप। इसका मतलब यह है कि मुश्किलात का सबब भारतीय टीम के लिए आ चुका है। Now if you're depending on Kuldeep Yadav and Akshar Patel to get you over the line, well then, as I said, you really have a big thing coming. You really do. I mean, India lost that ODI in the second ODI to a team that hasn't even made it to the World Cup finals. Right? You have to rethink your strategies and especially the top order to see the team through. That's not been happening enough. It's happened in test matches also. First 5 wickets just don't put up the runs, and then you're depending on Ashwin and Jadeja and all the people down the order to get you those runs. There's a big problem here somewhere.
29 मैचेस में सिर्फ 43 रन बनाए कुलदीप यादव ने। यदि उनके बल्लेबाजी के आंकड़ों की बात की जाए तो दूसरी तरफ अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी बल्लेबाजी की जरूर है, लेकिन क्या भारतीय टीम की नैया पार लगा सकते हैं। ओवर की चौथी गेंद, क्या एज की अपील की गई है, पुरन ने गेंद को हवा में धकेला, अपील जरूर की लेकिन अंपायर की कोई दिलचस्पी नहीं। कुलदीप जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, उनको बीट करती हुई गेंद गई, आशंकाओं के गलियारे से कुछ सवाल पूछती हुई गई थी और आज थोड़े एक्शन में नजर आए हैं। जब जब मौका मिला है विकेट कीपर साहब को, उन्होंने गेंद को हवा में फेंका जरूर है और फिर अपील की है, लेकिन कभी भी रिव्यू की मांग नहीं की। इससे साफ पता चल रहा है कि वो सिर्फ एम्पायर के साथ में वो आंख मिचोली का खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय टीम को 37 की दरकार, 26 गेंदों की और यहाँ पे मौके 26 गेंदें बची है इस इनिंग में। कुलदीप बल्लेबाजी कर रहे हैं, 16वें ओवर की 5वीं गेंद। ओवर द विकेट एलबीडब्ल्यू की अपील, एक तेज तर्रार अपील की गई है जिसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें होगी वेस्ट इंडीज की टीम को, लेकिन रिव्यू की मांग अभी भी नहीं आई है। डीआरएस का टाइमर लगातार चल रहा है। I think it was because he's bowling right arm over to the left-handed batsman. Always a chance of the ball pitching outside the leg stump. So Powell not going for it. No need to. But frankly, to my mind, it looked much closer on the replay. Well, or maybe it was a bit of an inside edge. I think that's really what was there. But whatever it was. जब फर्स्ट इनिंग में आपने कहा था कि इट इज क्लोज, तो वो गेंद ऑफ स्टंप को भी मिस करके गई थी, जिसपे डीआरएस नहीं लिया था। वो एक अलग कहानी है। चलिए, जोक्स अपार्ट, और वो माहौल कम्युनिटी बॉक्स में भी बना रहे तो बहुत अच्छा रहता है। कुलदीप फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, खाता खोला नहीं है, तो खाता तो अक्षर का भी नहीं खुला है, लेकिन 16वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। भारतीय टीम के लिए चीजें थोड़ी सी बदलती जाएगी, क्योंकि 16 ओवर की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 113, 6 विकेट के नुकसान पे। थोड़ी सी नहीं, बहुत बदलती जाएंगी। 3 overs, 1 maiden. I think the only maiden of the match so far. 8 runs and 2 wickets. Fantastic. And a run out as well, which was really due to his good bowling, as well as great fielding there from Kyle Myers at short extra. Really good. I mean, the Windies have been really brilliant and have played to their strengths on this particular pitch. और महज 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, हुसैन, मैकॉय, जोसेफ, होल्डर, शेफर्ड, और उसके बाद भी भारतीय टीम को पूरी तरीके से दबाव में लेकर आ चुके हैं। यहाँ से ये मुकाबला भारतीय टीम यदि निकाल के ले आती है, अक्षर कुलदीप की जोड़ी निकाल के ले आती है, इसके बाद भी कोई और खिलाड़ी निकाल के ले आता है, तो मान लीजिए कि चमत्कार है तो नमस्कार है, क्योंकि यहाँ से 37 रन, 24 गेंदें, पिछुल्ले क्रम के वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अल्जारी जोसेफ जिस तरीके की गेंदबाजी की है, 11 से ऊपर रन हर ओवर में खर्च किए हैं, 35 रन इन्होंने दिए किए गए 3 ओवर में। वो अब गेंदबाजी करेंगे अक्षर पटेल को। 17वें ओवर की शुरुआत होने वाली है। अल्जारो जोसेफ गेंद के साथ दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। बॉडी लाइन के ऊपर गेंद को किया था, जिसको हल्के हाथों से धकेला ऑन साइड में, लेकिन सिर्फ 1 रन मिलेगा। बूंद बूंद करके गागर भर सकता है, लेकिन क्या ये सागर भी भरेगा या नहीं, ये एक सवाल है। और इशारा कर दिया सुनील ने, बड़ा मुश्किल है। Well, you need a Rinku Singh type of innings. You need those 5 sixes in that over to get you over the line. Let me tell you, I don't think so. I think really now the game is completely swung in the favour of the West Indies. I mean, Kuldeep Yadav, good lad, but he's not the guy who's going to get you the 4s and the 6s. Yes, Akshar Patel can, but I don't think they're going to give him that pace or indeed the line that he likes to hit through. And so really, unless the Windies do something really silly, I think they're really home and dry in this particular game. 114'6", 36 from 23 deliveries. As this time is moves away from the stumps, tries to hit the ball over mid-wicket, misses the ball completely. The ball misses the stumps as well. It sails into the hands of Nicholas Puran as the keeper. And the Windies know they've got it all sewn up now. I think that they've got it just absolutely sewn up over here. They're very lucky, just over the top of middle stump. Kuldeep Yadav. So lucky over there. The required run rate now 9.82, just a tad under 10. And once that starts happening and you've got your tail in, and India has a long tail in this particular game. This time is driven nicely, goes straight to the man at sweeper cover, picks up a single, and the required run rate ticks over to 10 per over, 4 wickets in hand. And those 4 wickets are Kuldeep Yadav, you've got Mukesh Kumar, you've got Arshdeep Singh, and you've got Yuzvendra Chahal. I don't think they will strike any fear into the West Indies team.
अल्जारो जोसेफ के लिए ये जो ओवर आया उनके आंकड़ों को कम से कम थोड़ा सा बेहतर जरूर कर देगा। पिछले 3 गेंदों में मैच 2 रन खर्च किए, उससे पहले 3 ओवर के अंदर 35 रन दे चुके थे। युजवेंद्र चहल वो पैड पहन के तैयार है, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट भी उनके थी। अक्षर पटेल अगली गेंद का सामना करेंगे। 17वें ओवर की चौथी गेंद, एम्पायर को क्रॉस किया, पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच डिलीवरी थी जो कि डाउन द लेग साइड थी, उसको हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे। उतना ज़्यादा कन्वेंशनल वो शॉट था नहीं, लेकिन फिर भी जब तक बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंचती, 1 रन निकाला नहीं है। निकाल लिया इनफैक्ट। अक्षर पटेल ने स्ट्राइक रोटेट करके कुलदीप यादव को अब स्ट्राइक पे मौका दिया, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना करके महज 1 रन बनाया। 20 गेंदे 34 रन की दरकार भारतीय टीम को। जोसेफ गेंदबाजी कर रहे हैं, जिन्होंने 3.4 ओवर में 38 रन खर्च किए हैं। तो 116 का जो स्कोर भारतीय टीम ने बनाया है, उसमें कितना और इजाफा कर सकते हैं कुलदीप और अक्षर, ये देखना होगा। ओवर की 5वीं गेंद, स्लिप कोई नहीं लगा रखी। जोसेफ लगातार शॉर्ट पे डिलीवरीज कर रहे हैं, अच्छी रफ्तार से गेंद कर रहे हैं। एक और शॉट डिलीवरी थी, पुल करने की कोशिश थी, टॉप एज जरूर लगा, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाके रुक जाएगी। 30 यार्ड का घेरा भी पार नहीं कर पाएगी। कुलदीप और उनके साथ में अक्षर सिर्फ 1-1 रन करके अपने छोर बदलते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन वो स्कोर कार्ड में उतना बड़ा फासला नहीं क्रिएट कर पा रहे जिसके चलते भारतीय टीम जीत के पायदान को पार कर जाए। आखिरी गेंद बची है इस ओवर की। उसके बाद भी जोसेफ बात कर रहे हैं पोवेल के साथ, वो चर्चाएं चल रही है कप्तान और गेंदबाज की कि किस तरीके से गेंदबाजी की जाए। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो स्पेक्टेटर्स के तौर पे, दर्शकों के तौर पे आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम को सपोर्ट करने के लिए। 19 में 33 ये भारतीय टीम को आवश्यकता है। ओवर की आखिरी गेंद, जोसेफ अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। गुडलैंड डिलीवरी थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गई, हल्के हाथों से सिर्फ बैट का फेस खोला और गाइड कर दिया उसे 1 रन के लिए। ओवर की समाप्ति, 17 के बाद भारतीय टीम का स्कोर 118, 6 विकेट के नुकसान पे। So, how many runs to go? 32 of 3 overs. And Kuldeep Yadav and Akshar Patel manfully trying to steer the ship towards shore, but unfortunately seeming that they go hit the rocks rather than the shore, the way things are right now. 32 of 3 overs. And you have your tail at the crease, virtually at the tail at the crease. And everybody, well, most people getting a start. Suryakumar Yadav 21, Tilak Varma 39, bright 39, good 39, but not enough to carry India off the line. Hardik Pandya 19 of 19, Suryakumar 21 of 21, Sanju Samson 12 of 12, not being able to break the shackles that the Windies have imposed so well on them, using the slowness of the pitch, as I said many times before, to their advantage. Here goes Holder, once again the off cutter, tries to hit the ball into orbit, does Akshar Patel, gets the bottom edge of the bat, the ball trickles away to Puran behind the stumps. 117 Ks, that's all he's doing, just bowling the off cutters, just not allowing the batsmen to get any pace whatsoever, and they can't just make the pace off by themselves off this particular pitch. And therefore, frankly, as I said, it seems to be all over bar the shouting. 32 from 17. Here goes Holder. This time gets the ball that he can hit. The ball hits away and goes round to deep mid wicket, but just for the single. And I think, Ayush, if you can pick up a couple of boundaries, maybe we can get somewhere in this, but I don't think that we're going to do that right now. अब 16 गेंदें बची है। यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ पे जाने का वीज़ा लगने से पहले मुझे लगता है कि ये मुकाबला समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके की वो आपकी मैं उम्मीद पे खड़े होने की कोशिश ज़रूर करता, लेकिन चलिए, कुलदीप अक्षर फिलहाल क्रीज के ऊपर है। दोनों ने मिला के 5 रन बनाए और 31 बनाने हैं। 16 गेंदों का सामना करना है। होल्डर गेंदबाजी करे, लेकिन तिलक वर्मा के रियाज से ये मुकाबला बहुत अच्छा गया। डेब्यूटेंट होने के बाद आपने उतने रन बनाए जितने पूरी टीम में सबसे हाईएस्ट के तौर पे क्लेम किए जाएंगे। अगली गेंद फुल टॉस डिलीवरी थी, उसे डाउन द ग्राउंड खेल दिया है। जब तक फील्डर दौड़ के आते लॉन्ग ऑफ की दिशा से गेंद को फील्ड करते, एक आसान सा सिंगल निकाला। अक्षर पटेल 4 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं तो कुलदीप अब 2 पे पहुंचेंगे। हालांकि दोनों ने 7-7 गेंदों का सामना किया है, लेकिन दोनों के मिला के रन भी अभी तक 7 नहीं हुए। 6 रन बने आखिरी के ओवर में। I don't think you should blame them. No, you cannot blame them. They're not supposed to be scoring the runs. They're supposed to be taking the wickets. देखिए, मैं सिर्फ आंकड़े साझा कर रहा हूँ, मैं किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहा। 30 चाहिए, 15 गेंदें बची है, यानी कि 2 का पहाड़ा पड़ना पड़ेगा भारतीय टीम को गेंदों के लिहाज से, यदि ये मुकाबला अभी भी अपने नाम करना है तो। ओवर की चौथी गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी, इसे खेल दिया था अच्छी तरीके से, वो पुल शॉट, और उसी के चलते वो कट सा करके निकाला। एक अलग तरीके का शॉट था, क्योंकि वो
बल्लेबाज अब अपने तरकश से ऐसे तीर निकालेंगे जब प्रॉपर बल्लेबाजों ने वो शॉट्स इतने सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं किए तो गेंदबाज है। अक्षर को 2 रन जरूर मिलेंगे। अक्षर अब पहुंच जाएंगे 6 पे। 8 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। Well, the Windies T20 team actually beat South Africa in South Africa when they were there. They're a very good team. That's what he said right in the beginning of this game, that they're really, really good at this T20 game. This one being picked up from outside the off, some high, hard. Where's it gone? It's gone straight down the ground over the long on boundary. 6 runs. So that's what he can do if he has to get India, what he has to do to get India over the line. And this is off the most economical bowler, which is Jason Holder. So 22 of 13, but a good hit there. Just slight more pace on the ball, and 87 meters straight as a die over the boundary at the straight field for 6. So 22 of 13. Another couple of lusty lows like this, you never know what might happen. अभी भी किया जा सकता है, ये आंकड़े बदले जा सकते हैं। 13 गेंदों में 22 रन चाहिए। 18वें ओवर की आखिरी गेंद, जेसन होल्डर दाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, पुल करने की कोशिश की गई है, फील्डर वहां पर मौजूद है मिड विकेट की दिशा में, और एक आसान सा रन आराम से निकाल लेंगे अक्षर पटेल। अच्छी चीज भारतीय लिहाज से ये है कि वो स्ट्राइक पे रहेंगे। ओवर की समाप्ति 18 के बाद 129, 6 विकेट के नुकसान पे भारतीय टीम का स्कोर है। लेकिन अक्षर का बल्ला यदि बोले तो 12 में 21 बनाए जा सकते हैं। ये वो मिरर इमेज है जो स्कोर कार्ड चाहिए, गेंदें जितनी बची है। Well, it could be a tight game. It could be a super over. You never know. Anything is possible. It's possible. जेसन होल्डर जिन्होंने अपने 4 ओवर समाप्त कर लिए, अलजारी जोसेफ के भी 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। सबसे इकोनॉमिकल रहे थे। एक मेडिन ओवर भी जेसन होल्डर ने निकाला था, 19 रन खर्च किए, 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और इकोनॉमी 4.75 की। लेकिन क्या ये मुकाबला अभी भी भारतीय टीम अपने लिहाज से अपने नाम कर सकती है? 18 ओवर की समाप्ति के बाद वेस्टइंडीज़ का स्कोर 134 था, तो भारतीय टीम 5 रन पीछे है। बहुत ज़्यादा बड़ा वो फासला उन आंकड़ों में है नहीं। मैकॉय को लाया गया है गेंदबाजी के लिए, जो कि अपना आखिरी ओवर लेकर आएंगे। 3 ओवर में 10 डॉट बॉल, 17 रन दिए, 1 विकेट चटकाया, इकोनॉमी 6 से नीचे की। क्या दबाव बढ़ाया जा सकता है अक्षर पटेल पे, या फिर अक्षर पटेल वो स्विंग्स निकाल के लाएंगे अपने बल्ले से जिनके चलते वो बड़े I don't think they're going to give him any pace whatsoever. I think that's going to be the ploy right now. The only time that he was able to hit that 6, Jason Holder gave him just a little bit of pace to be able to allow him to time his shot. But I think they're having a chat about the slow over rate and the fact that at least that's what seems to be the case between the umpire and the captain. अब अगर ऐसी बात है तो स्लो ओवर रेट के चलते फिर और बातचीत करके रफ्तार और कम की जा रही है इस गेम की। गेंदबाज से बात करने के लिए गए कप्तान पोवेल साहब, और शायद फील्ड में कुछ परिवर्तन किया जा रहा है। See something about that, because then you're not allowed 5 outside the circle. You've got to bring 1 in within the circle. You're just 4. Just waiting to see if that's actually the case. But 21 of 12, yeah, it's possible. It's certainly possible. No question about that. Especially if there is a fielder less on the outfield. Let's see what happens there. So I can see 4 within the ring on the offside and 1, yes. So I think it is really a question of slow over rates there. The next ball is picked up there by Akshar Patel. Where is it going? Is it going down the throat of long on? Yes, indeed it is. Atmire takes that catch, and I would say now the last flicker of the candle now going off for India's McCoy. That slow delivery down the throat of long on, and Akshar Patel departs for 13, and India then subside to 129 for the loss of 7 wickets. Once again, you can see over there, I said the slow delivery and getting the bottom of the bat down the throat of the man at long on. और फील्डिंग की पोजीशन कोई भी हो, कैच जब आए आप हेटमायर को पाएंगे। तीसरा कैच है आज के दिन का, और जैसे गेंद हवा में गई थी, कैच कंप्लीट हुआ, मुझे बस जहन ने कह दिया कि ये तो हिटमायर ही हो सकते हैं आज के दिन। तो जब कैचेस पकड़े जा रहे हैं, हिटमायर वहाँ नजर आ रहे हैं। अर्शदीप बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। अक्षर की पारी समाप्त हो चुकी है। कुलदीप 2 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 7 गेंदों का सामना किया, 129 पे 7 भारतीय टीम का स्कोर है। बची हुई यहाँ से 11 गेंदों के अंदर भारत को 21 रन चाहिए। मकॉय गेंदबाजी कर रहे हैं, तेज तर्रार गेंदबाज है। तो अर्शदीप जो कि मीडियम पेसर है, बल्लेबाजी का इतना ज़्यादा तजुर्बा उनको है नहीं, उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है।
और ये कहना भी गलत नहीं है कि अब यहाँ से मुकाबला अपने पक्ष में करना भारतीय टीम के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। 27 मैचेस में 6 रन बनाए हैं अर्शदीप ने, स्ट्राइक रेट 60 का है। सर्वाधिक जो रन उन्होंने बनाए हैं उतने कुलदीप यादव ने अभी बना लिए, वो 2 रन है। Well, you have to have the opportunities, but we didn't have opportunities. Here's his chance. Gives himself room on the leg side, tries to hit the ball into orbit. The ball is slower, just bounced over the stumps. And a dot ball then to Obed McCoy. 2 for 17 in 3.2 overs. Because the pitch was very slow and they wanted to use the quite, and this time picked up off his pads and hit away down towards deep fine leg. 4 runs then to Arshdeep Singh as it went angled down the leg side and was able to get enough of an angle using the pace and the line of the ball to get it past the man at short fine. Very nicely glanced, I must say. Yes, beautiful shot there. उससे बड़ी बात सुनील ये भी है कि वो T20 क्रिकेट में अपने सबसे बड़े स्कोर पे पहुंच चुके हैं। 4 रन का स्कोर उन्होंने बना लिया, पहले वो 2 के ऊपर थे। और मैं सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब हकीकत में आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। अर्शदीप 4 पे पहुंच चुके हैं, अभी तक का उनका सबसे बड़ा जो स्कोर था वो 2 रन था। तो मैंने कहा था आपको मौका मिलना चाहिए। वो आ चुके हैं 4 के स्कोर के ऊपर। मैकॉय अगली गेंद, चौका मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा, कोई फील्डर मौजूद नहीं था लॉन्ग ऑफ की दिशा पे। और उसी के चलते अर्शदीप अपने हाईएस्ट स्कोर को ही नहीं, अपने टोटल को भी नहीं, सब कुछ पार करते हुए 8 रन पे पहुंच चुके हैं। 3 गेंदों का सामना किया है। अब अक्षर पटेल सोच रहे होंगे और बाकी के भारतीय बल्लेबाज भी सोच रहे होंगे कि अर्शदीप इस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं तो थोड़ा सा जहन को खुद भी रोक के खेलते तो हो सकता है कि आंकड़े बदल जाते इस मुकाबले के। Well, there you are, completely befuddling all of us, I think. Saying, well, you thought I couldn't bat, here I am. Maybe I should have pushed up the order. 2 very good shots, one very nice glance and one very good shot over extra cover. That's where he meant it to go. There's no fielder out in the deep on the offside. That fielder, remember, there's one less. This one's down the leg side, lets it go, gets the wide. So now 12 of 8. Is there to be a miraculous turn, a twist in the tail in this one-day international? We've seen it so often that happens in this format of the game, that it turns in the last over, last ball. Anything is possible. Certainly the Windies were running away with the game before this little cameo here from Arshdeep Singh. I don't think they expected it as much as we expected it either. What's going to happen now? अभी तो अर्शदीप का भी नहीं पता, उन्होंने भी ये सोचा होगा, नहीं सोचा होगा, फ्लिक कर दिया उसे ऑन साइड में बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर जब तक पहुंचेंगे एक आसान सा सिंगल कंप्लीट करते हुए अर्शदीप नजर आएंगे। 9 पे पहुंच चुके हैं, 4 गेंदों का सामना किया, 200 से ऊपर स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं अर्शदीप। Confidently, I think he's been very confident about his shot so far. अभी भी कुछ भी हो सकता है सुनील, 7 गेंदों में 11 रन चाहिए, 2 बड़े शॉट और काम तमाम किया जा सकता है। Or some luck, you know, a nick that goes down to third man, anything is possible. 3 विकेट भारतीय टीम के पास बचे हैं। 139 के स्कोर पे भारतीय टीम है इस समय। कुलदीप बल्लेबाजी कर रहे हैं। 19वें ओवर की आखिरी गेंद, फ्लिक किया कॉन्फिडेंटली, कलाइयों के इस्तेमाल से बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ हल्के से पुश किया वहां पर कुलदीप ने और उसी के चलते उनको भी सिंगल मिलेगा। स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आए। 19 की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 140, 7 विकेट के नुकसान पे। How many runs did the Windies get in the last over that they played? Sharma, if you can tell us. चलिए जब तक आंकड़े ये बयां करें कि आखिरी ओवर में कितने रन बनाए थे भारत को। They got 9 runs in the last over. Well, there you are. That's what India needs to tie the game. Right, and that was courtesy also. I think there was a no ball in that over from Mukesh Kumar. So, well, 140 for 7, and that's exactly what the Windies had at that point of time. 140 for 6 it was, but nevertheless, 140, and they scored 9 runs. So is it going to be a tight game and a super over? Anything is possible. And Romario Shepherd, who's given away 28 runs in his 3 overs, but that was, I think, he's been brought in now, and you can see there's a bit of a
chat between Powell and Holder, the ex-captain, all saying, well, listen, we didn't expect this state of affairs, right? Suddenly those runs coming from these two guys, 10 runs in that last over. And 10 runs, anything is possible. Nick, the squirt, the lemon cut, the no ball, anything. Wides, 4 wides. और शायद उस निक को बचाने के लिए कुलदीप यादव के लिए बैकवर्ड पॉइंट पे भी एक खिलाड़ी रखा कुलदीप यादव तो दूसरी तरफ जवाब लेकर आए शेफर्ड। अंतिम ओवर की पहली गेंद सीधे जड़ों में करी, कोई जवाब नहीं कुलदीप यादव के पास। और अब सांसों में सांसें आई होगी वेस्ट इंडीज की टीम के। ऑफ स्टंप, मिडिल स्टंप बाहर किया और उसके बाद वो जश्न मनाते हुए नजर आए। चेहरे के ऊपर हालांकि ज्यादा एक्सप्रेशन थे नहीं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें पता है कि कुलदीप यादव का विकेट जाना एटलीस्ट आंकड़ों में और दबाव बढ़ाएगा भारतीय टीम के लिहाज से। 140 पे 8 भारत का स्कोर। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए युजवेंद्र चहल, जो कि परिस्थिति कैसी भी हो चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रखते हैं। He's got no option, I think. But it was a very intelligent bowling right arm round the wicket, coming from wide of the crease and angling the ball in to Kuldeep Yadav. And again, you've got to think about the creative intelligence. He knows that Arshdeep Singh can hit the ball. He's not so capable of hitting the ball. Maybe just push the ball away, try and pick up 1, maybe 2. And is there a change in the... नहीं मुकेश खड़े थे। पहले मुकेश अंदर आए, फिर चहल अंदर आए और फिर कंफ्यूजन जब पूरा सॉल्व किया गया तो पता चला कि चहल बल्लेबाजी करेंगे। सीनियरिटी का उनको फायदा मिल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। Well, I think they're all going to have a chat. The umpires are having a chat with them. They're having a chat with each other. And the Indian team now fidgeting over there in the dressing room or in the dugout, call it what you will, to see whether they can get 10 from 5. इतनी देर तक मैं आंकड़े देख रहा था अर्शदीप के। उन्होंने 6 रन बनाए थे, लेकिन मैचेस 20 के आसपास खेले थे। यहाँ 75 मैचेस खेलने वाले युजवेंद्र चहल का जो T20 में टोटल स्कोर है वो 6 रन का आंकड़ा है। और उससे पहले हमने मुकेश को बाहर आते देखा। हो सकता है तिलक वर्मा, क्योंकि अपना डेब्यू मैच खेल रहे थे, उन्होंने पूरे भारतीय टीम में सबसे ज्यादा स्कोर कर लिया था। तो हो सकता है कि इस उम्मीद के साथ वो भी आए हों कि इन 5 गेंदों में 10 रन बनाए जा सकते थे, लेकिन युजवेंद्र चहल वो वापस आए हैं, स्ट्राइक पे हैं। 5 गेंदे शेफर्ड के पास। पहली गेंद में तरकश से जो तीर निकाला था वो स्पॉट ऑन निशाने पे जाके लगा। कुलदीप यादव को उन्होंने शिकार बनाया। 140 भारतीय टीम ने बनाया जरूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय ले रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम। चर्चाएं की जा रही है किस तरीके की गेंदबाजी की जाए, फील्ड सेट में कहाँ कहाँ खिलाड़ी लगाए जाए, क्योंकि सिर्फ 4 खिलाड़ी अब 30 यार्ड के घेरे के बाहर है। I think it's going to be the quick short ball. And it was the slow ball actually outside the off stump. The cutter, he got his bat to it and the ball dropped in front of him and they ran for that single, which is absolutely the right thing to do, because if what we've seen, the evidence of Arshdeep Singh, he can hit the ball and that's what you need from him. Those 2 boundaries have come very handy now that he got in the last over. And of course he's a left-handed batsman. That'll bring its own changes, because it was Chahal was the right-handed batsman, so anything is possible, quite honestly. But frankly, if you really do look at the way things are, as I said, unless there's a huge stroke of luck, really the Windies should be able to squeak home in this particular game. मुझे जो समझ में आया वो ये है कि पिछले 2 ओवर में जितनी ज़्यादा रणनीतियाँ वेस्ट इंडीज़ की टीम ने बनाई है, उतनी तो तब भी नहीं बनाई होगी जब टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर भारतीय टीम का बल्लेबाजी कर रहा था। आखिरी की 4 गेंदें बची है। ओवर की तीसरी गेंद करने के लिए शेफर्ड तैयार। अर्शदीप स्ट्राइक पे 9 रन बना चुके हैं। 4 गेंदों का इन्होंने सामना किया है। 2 बड़े स्ट्रोक्स इन्होंने ऑलरेडी लगाए। जड़ों के अंदर गेंद को किया था, वो चौथे 5वें स्टंप की लाइन पे किया था, लेकिन फिर भी अपना बैट लगाया, पॉइंट की दिशा में गेंद को धकेल लिया और 2 रन कंप्लीट किए अर्शदीप ने। इसका मतलब इस मुकाबले में अभी भी जान फूंक के रखी है। 3 गेंदों में 7 रन बनाने हैं। अर्शदीप 5 में 11 बना चुके हैं। ये कारनामा करके दिखा सकते हैं। 3 गेंदों का खेल बाकी है। 143 भारतीय टीम का स्कोर। हालांकि 2 विकेट चटकने वेस्ट इंडीज को यदि ये मुकाबला अपने नाम करना है या फिर अर्शदीप को शांत रखना है। चहल उन्होंने 1 में 1 बनाया। क्या चल रहा होगा जहन में शेफर्ड के? Well, I'll tell you what Arshdeep be thinking about. He's thinking, I wish I hadn't bowled those wides. He bowled a lot of wides. And that's going to be the difference here. आखिरी ओवर में 4 वाइड डाली थी, यानी 3 में 3 चाहिए होते हैं। ये सही रहेगी। बहुत वाइड गेंद की ज़रूर थी, लेकिन उस लाइन के जो वाइड की लाइन होती है उसके अंदर थी,
और उसी के चलते अब आंकड़ों में सिर्फ 2 गेंदें बची है। 2 गेंदें 7 रन, बड़ी हिट के अलावा और कुछ नहीं बचा सकता भारतीय टीम को यहां से। Just within that indicative line, but a very good ball. It was more than a yorker. It was a very low full toss, but just within that red line that demarcates wide from no wide. 7 from 2. And this one goes right across his crease and plays the way down towards deep mid wicket. And they try to go through for 2. They can't. He runs back, gets run out. And at the end of the day, I think you're just going to have Mukesh. पहला जो अपने नाम किया वो 4 रनों से जीत के साथ था। आखिरी ओवर Hardik Pandya was bowled by a beautiful off cutter from Jason Holder, and then the very next ball, virtually, it was Sanju Samson who was run out. I think that really turned the tide in favour of the Windies. So, the news to all our listeners that the West Indies have won the first T20 International at the Brian Lara Stadium by 4 runs, and Ayush will give you the scorecard, and then we'll have the post-match show. वेस्ट इंडीज की टीम ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। वेस्ट इंडीज ने 149 रन का टारगेट बनाया था 6 विकेट के नुकसान पर। भारतीय टीम के सामने एक चुनौती पेश की थी 150 के आंकड़े को पार करने की। भारतीय टीम की जब बल्लेबाजी आई तो ईशान किशन, शुभमन गिल बतौर ओपनर आए थे। ईशान किशन